Hi everyone, welcome to UGC NET Textbook. This is Dakshita Singh, your guide for English literature, and here we are with yet another very important session. And आज के सेशन में हम करने वाले हैं a lot of questions. I can't even number कि हम कितने questions करने वाले हैं आज की क्लास में. These questions are going to be your PYQs, and मैं PYQs लेकर आई हूँ of many of our past year papers. तो अराउंड मैं कह सकती हूँ 7 to 8 साइकिल्स मैं इस पर्टिकुलर क्लास में कवर करने वाली हूँ. जब तक हमारी क्षमता होगी, हमारा जब तक स्टैमिना होगा, हम लोग पढ़ेंगे साथ में. बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट यू पीपल नीड टू टेक सम रेस्ट, यू पीपल नीड टू स्लीप ऑन टाइम एंड हैव योर डिनर ऑन टाइम. तो मैं सेशन को अराउंड 9 o'clock तक देखूंगी कि वी विल ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग टिल 9. एंड उसके बाद हैव योर डिनर गाइस एंड देन जस्ट गो टू स्लीप, ओके, बिकॉज यू नीड योर स्लीप फॉर योर एग्जाम. प्लीज प्लीज कोई भी स्लीप डिप्राइव होके मत जाना अपने सेशन में. आज हम लोग को अपनी नींद भी पूरी करनी है. मैं भी घर जाके अपनी नींद पूरी करूंगी एंड आई सी यू इन द सी यू एट द सेंटर टुमारो. यू पीपल ऑल्सो टेक योर स्लीप, ओके, एंड आपकी स्लीप ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे से. चलो, सो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसकी जो पीडीएफ है अलॉन्ग विद डिटेल सोल्यूशन मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी. तो उसकी टेंशन मत लेना. कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी यहाँ पे अभी आपको बस देखना है, आंसर करना है, पढ़ना है. दैट इज ऑल. दिस इज द टेलीग्राम लिंक. बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन्ड है, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो. ये क्यूआर कोड है, ये आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ पे आपको डिटेल्ड पीडीएफ मिल जाएगी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन. सो 2025 के 2 साइकिल्स है हमारे पास, विच इज योर जैन का पेपर जो था एंड जून का पेपर जो था. सो 2025 के मैं 2 पेपर्स अभी कवर कराऊंगी. इस वाले सेशन, इस पर्टिकुलर सेशन को हम इससे स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन गाइस. यस, रुको एक सेकेंड में थोड़ा बड़ा कर लूं अपनी स्क्रीन. यस, पैनिक क्यों हो रहा है? पैनिक नहीं करना. अभी शांति से आप लोग मेरे सेशन में बैठो, सुनो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, एंड उसके बाद आराम से लास्ट में थोड़ी सी मैं टेक टॉक दूंगी. लास्ट में वील हैव अ कॉन्वर्सेशन, ओके, सो डोंट वरी. लास्ट में वील जस्ट टॉक फॉर अ while so that you people can come to you can get a little calm and composed. I know you people are panicking, but it's not gonna help guys, so let's not even think about it. अभी 8-9 बजे तक मत सोचो. Do not even think about your examination tomorrow. Just focus on the session. Just be in the moment. Carpe diem, guys. Seize the moment, okay? Seize the moment. From the statements given below, what is true about the Gothic novel? It appeared in the 14th century American literature. ये सारे PYQs हैं, तो उसी पर्सपेक्टिव से मैं आपका रिस्पॉन्स देखना चाहती हूँ. और जो आंसर्स नहीं आते होंगे, दैट इज ओके, दैट इज ऑल राइट. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सेशन को इतना अटेंटिवली सुनो और देखो कि यहाँ से याद कर लेना उस चीज को. So you're saying D will be the correct answer, B and E will be the correct answer. It often uses a medieval form of architecture, absolutely right. It aims at evoking chilling terror by exploiting mystery and a variety of horrors, absolutely right. And Castle of Otranto is considered to be our first Gothic novel, which is by Horace Walpole. Can you tell me the year also, guys? Can you tell me the year of Castle of Otranto? कैसल ऑफ अट्रांटो का ईयर मुझे बता दो. एंड ये किसका वर्क है? होरेस वॉलपोल, हु वाज द सन ऑफ रॉबर्ट वॉलपोल. रॉबर्ट वॉलपोल वाज द वन जो पहले हमारे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, एंड ही वाज द वन बिहाइंड द लाइसेंसिंग एक्ट इन 1737. ठीक है, ऐसे ऐसे हम कनेक्ट कर लेंगे सारी चीजों को. 1764. ठीक है, perfect. Which among the following is the last novel of George Eliot? Middlemarch, Daniel Deronda, Silas Mariner or Mill on the Floss? Is the sound a little low, guys? मुझे बता दो, मैं सर को इन्फॉर्म कर दूं. साउंड अगर लो है तो बता दो. D will be the correct answer. Daniel Deronda, absolutely right, guys. Very good, great start, हाँ. चलो. Success is counted sweetest by those who never succeed. To comprehend a nectar requires sorest need. Who has composed the above lines? साउंड ठीक है, ओके. रुको, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बढ़वा लेती हूँ. हम्म
Okay, the correct answer, success is counted sweet, is this particular line is by Emily Dickinson, guys. So C will be the correct answer. Perfect, very good. Emily Dickinson was known for her dashes in her poetry, for her unconventional style of writing. Please remember this, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है on the writing style of Emily Dickinson. The author of the Politics of Translation and translator of Mashweta Devi's Sandhyani is होमी भाभा, झुम्पा लहरी, गायत्री स्पीवक और तेजस्विनी निरंजना. Correct answer will be C. Spivak was the translator of the work, The Politics of Translation. Sorry, the author of The Politics of Translation and the translator of Mahashweta Devi's Sandhyani. From which poem are the following lines extracted? Once more the storm is howling, and half hid under his cradle hood and coverlid, my child sleeps on, there is no obstacle but Gregory's Wood and One Bare Hill. The correct answer is very, very good. A prayer for my daughter. Absolutely right. There is nothing outside the text is a statement by. There is nothing outside the text is a statement by Shoklovsky, Derrida, Roland Barthes, or Ferdinand de Saussure. Saussure was associated with structuralism, but he used to talk about things which were not associated with text itself. So Derrida will be the correct answer. Okay. Chalo, next question. Identify the poet who has composed the following lines. Ganga was sunken, Ganga was sunken, and the limp leaves waited for rain, while the black clouds gathered far distant over Himavant. The jungle crouched, hummed in silence. Now, please remember, guys, मेरा aim है इस सेशन को लेकर कि मैं आपको जितने ज्यादा क्वेश्चंस आपकी नजर से घुमवा सकती हूँ, जितने क्वेश्चंस हम स्किम कर सकते हैं, we'll try to skim as many questions as we can. So हम लोग थोड़ा स्पीड में करेंगे ये चीज, ओके? बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें कवर करनी है. इट्स मोर लाइक वो जो एग्जाम से 5 मिनट पहले हम फटाफट पेजेस पलट के देखते हैं ना, वो मान के चलो इस सेशन को. ओके, द करेक्ट आंसर विल बी इलियड, गाइस. वेस्टलैंड से ली गई ये लाइन है, गंगा वाज संकन, एंड दिस वाज टेकन फ्रॉम द 5th पार्ट ऑफ टीएस इलियड्स वेस्टलैंड. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द 5 पार्ट्स ऑफ द वेस्टलैंड? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द 5 पार्ट्स ऑफ वेस्टलैंड? द बरियल ऑफ द डेड, गेम ऑफ चेस. मुझे मुझे नाम बताओ. फायर सरमन, 2 बचे हैं बस. अब मैंने बाकी बता दिए. आई नीड 2 मोर. गेम ऑफ चेस, बरियल ऑफ द डेड, फायर सरमन, 2 मोर. व्हाट द थंडर सेड, एंड हाँ, रैपिड फायर की तरह ही है, रैपिड फायर की तरह ही है. And one more, because this is a very important piece of information, so I don't want to skip this information. Need you people to name it, guys. एक नाम बच रहा है. Death by Water, absolutely. Shakespeare's Much Ado About Nothing is a tragicomedy, romantic comedy, pastoral, or historical play. It's obviously not a historical play. It's a romantic comedy, guys. Tragicomedy, मुझे कोई एक अगर tragicomedy बता सकते हो तो वो भी बताना. Okay, so choose the correct answer from the options given below. We have these 4 Indian authors and the text. आपको मैच करना है. यहाँ पे आपको जो नाम दिख रहे हैं वो कलेक्शंस है, वो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस है. सो वी हैव मनोहर मलगोंकर, नाहल, बॉन्ड एंड जोशी. जोशी का वर्क है सर्वाइवर, सो डी का सेकंड हो जाएगा एंड दैट गिव्स अस द आंसर. सो ए का थर्ड है रंबल टंबल. वी हैव बी का फर्स्ट व्हिच इज द वियर्ड डांसेस. रस्किन बॉन्ड इज नेबर्स वाइफ एंड अरुण जोशी इज रंबल टंबल. दिस इज important, guys. Please remember this. The incorrect work cited entries according to MLA Handbook 9th edition are. बताओ. The Merchant of Venice. ठीक है. ओके. नाउ यहाँ पे आपको बताना है एमएलए हैंडबुक के जो भी साइटेशंस है इसमें इनकरेक्ट कौन से हैं. इनकरेक्ट वर्क्स. ओके, इनकरेक्ट वर्क्स बताने हैं. इनकरेक्ट ऑप्शन. सो वी हैव जेकब्स एलन, ऑक्सफोर्ड. ओके, रिडल जूली. दिस वन इज इनकरेक्ट, गाइस. Jane Austen, Cambridge, 1997. This one is incorrect. The Perils, American. Okay. Volume. Which one? A? A, B and C आप लोग कह रहे हो. A, B and C are the incorrect ones.
No, the incorrect ones are B, C, D, guys. B, C, D. B incorrect है because London is not required. The name of the place where the publishing houses is not required. C is incorrect because of your the Perils American Review volume. B seems to be correct. American Review volume number 2, 2007. रुको. And D. यहाँ पे देखते हैं. शायद से मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फो ऐड कर रखी है. एंड और डी रिडल जूली द जॉर्ज रिव्यू ये तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है. बी सी डी आई थिंक दिस क्वेश्चन हैज सम सॉर्ट ऑफ एरर बट बी और डी तो डेफिनेटली आपके इनकरेक्ट साइटेशंस है. चलो, अरेंज द प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन. वी ऑलरेडी हैव द नेम टेम्पेस्ट ओवर है तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि टेम्पेस्ट लास्ट में ही आता है. सो ए विल बी द करेक्ट आंसर. यस. So B, E, D, C, A will be the correct sequence of this particular question. Next, which of the following statements are correct about litotes? Litotes अगर आपको याद हो, double negative हम उसे कहते हैं, double negation. Double negation. Yes. So it contains an understatement for emphasis. It is not opposite of hyperbole. It is used with laconic intentions. Laconic का मतलब होता है the use of lesser words. Please remember the meaning of this word, lesser words. It is used with ironic intentions. C and D are correct. And B, it is not the opposite. नहीं, B नहीं होगा. Or A, it contains an understatement for emphasis. That is correct. So A, C and D. D will be the correct answer. Okay. Which of the following is not an autobiography? Which of the following is not an autobiography? हाइपरबोल का ऑपोजिट होता है. एग्जैक्टली. सो पैट्रिक वाइट ए लाइफ इज नॉट एन ऑटोबायोग्राफी. ये वर्क है आपका नेल्सन मंडेला का, ये है आपका गांधी का और ये है आपका शरण कुमार लिम्बले का. ओके. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए. Who amongst the following was not a member of the Bloomsbury group? Who amongst the following was not a member of the Bloomsbury group? Virginia Woolf, Foster, Lytton Strachey and W.B. Yeats. मैंने आपको बहुत बार अपने सेशंस में ये बात बोली थी कि ग्रुप्स जो हैं आपके, जो स्कूल ऑफ पोएट्स हैं, उनके मेंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है. तो आपको मेंबर्स डेफिनेटली याद रखने हैं. ओके. वी हैव दीज नेम्स रिलेटेड टू योर इको क्रिटिसिज्म. आपको इन नेम्स को, इन ऑथर्स को उनके टेक्स्ट के साथ मैच करना है. मैंने अपने लास्ट जो सेशंस लिए हैं उनमें ये पढ़ा रखा है. बहुत सारे क्वेश्चंस आज जो आप देखोगे वो सब मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी. यस. So we have Paul Ulrich, Lawrence Buell. Okay. So Neville should, आपको याद होगा मैंने बताया था on the beach. So C का second and that gives us the answer, guys. A का fourth हो जाएगा the population bomb. We have B first, the environmental imagination, and this has been asked more than once. We have Neville shoot on the beach and Rachel Carson, Silent Spring. ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ आपको. Which of the following statements are correct? Om Prakash Valmiki's Jhutan is a novel. No, it's not a novel, it's an autobiography. Jhutan represents the Dalit Valmiki community in critical light. दलित कम्युनिटी को क्रिटिकल लाइट में क्यों रिप्रेजेंट करेंगे? Enumerates the difficulty of being a Dalit in independent India. C. Jhutan was translated into English by Arun Prabha मुखर्जी, not Das. ये गलती करके आए थे स्टूडेंट जैन वाले पेपर में. So C and Jhutan critiques the upper caste. And the question is asking you the correct ones. Okay. Jhutan critiques the upper caste. Yes, it does. The correct answer will be BCE. Represents the Valmiki community. In, अच्छा, represents the Valmiki community in a critical night का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो अपर कास्ट थे उनको क्रिटिकल लाइट में नहीं दिखाया था. इनफैक्ट द वेरी ओन कम्युनिटी दैट ही बिलोंग टू वाज आल्सो रिप्रेजेंटेड इन अ critical light. Okay, so C will be the correct answer. BCE. Who has written the Life Divine? Dante, Emerson, Aurobindo or Jayan Mahapatra? Aurobindo was the one who wrote this work, the Life Divine. बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ वर्क है. Okay. When was International Phonetic Alphabet developed and promulgated? मैंने अभी recent अपने language linguistics session में आपको ये question कराया था.
नीड टू ऐड द थंब इम्प्रेशन। आप नहीं, वहीं पे होता है थंब इम्प्रेशन, आपको नहीं ऐड करना, वहीं पे होता है। C will be the correct answer, guys. 1888. I have added some extra information. This was developed and promulgated around 1888. पहला पॉइंट कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था, ये एक पॉइंट याद रखना। एंड पेरिस में फोनेटिक्स टीचर्स एसोसिएशन फाउंड हुआ था इन 1886। उसके बाद IPA एस्टैब्लिश हुआ था इन 1888। ओके, चलो। Arrange the following poems by Yeats in the chronological order of their year of publication. बताओ। It should be option number D, A, D, C, B, E. Why? Because Adam's curse आपका सबसे पहले आएगा 1904, The Wild Swans of Cooley 17, Second Coming 1919, Among School Children 28, and Under Ben Balbin 38. Okay, ये मैंने इन्फो आपके जो एक्स्ट्रा पीडीएफ में दूंगी उस एडिशनल इन्फो में भी एडिड है, और ये पीडीएफ भी आपके पास ही जाएगी। Okay, match the list 1 with list 2. Bodies that matter, a world of difference, a literature of their own, vamps and tramps. Also, ये जो क्रोनो वाले क्वेश्चन होंगे ना, मैं थोड़े सेकंड्स के लिए इस स्लाइड को ऐसे ही रखूंगी ताकि आप एक बार प्रॉपरली रीड करके ट्राई टू रिकॉल कि अच्छा एक सीक्वेंस अपने आप भी बोल देना कि हाँ ये सीक्वेंस था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्रोनो वाले क्वेश्चंस में आई विल कीप इट फॉर अ बिट लॉन्गर। चलो, एडमिट कार्ड पे थंब इम्प्रेशन घर से करके जाना है। स्टूडेंट्स हैव मेंशन ओवर एयर। एडमिट कार्ड पे थंब इम्प्रेशन घर से करके जाना। चलो, वहां पे सिर्फ साइन होगा। Okay, so Bodies That Matter by Butler, 1993 is the year of Bodies That Matter, and Gender Trouble का year क्या है वो मुझे बताना आप। मैं बता देती हूँ, 1990 is the year. So A का second हो जाएगा, B का first हो जाएगा, and all the instructions are mentioned on the admit card, guys. एक बार read तो करो उनको, उसमें clearly लिखा होता है क्या गैजेट, क्या चीजें अलाउड हैं, क्या नहीं अलाउड है, क्या लेके जाना है, क्या कर कर जाना है, किस टाइम पे पहुंचना है, कितनी देर पहले की रिपोर्टिंग है, सब कुछ उस पर मेंशन है। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली। लिटरेचर ऑफ देयर ओन, एलेन शोवाल्टर, वैम्स एंड ट्रैम्प्स, केमिली पैग्लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव एडेड द ईयर ओवर हियर, एक बारी इन्हें देख लो, एक बारी इन्हें देख लो। Just look at them, guys. Look at them for a few seconds, then I'll move on to the next question. Okay, chalo. Next question. Which of the following novelists did not employ stream of consciousness technique? वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, डोरोथी रिचर्डसन, ग्राहम ग्रीन। किसने एम्प्लॉय नहीं करी है? डी, ग्राहम ग्रीन ने नहीं करी है। चलो, which of the following statements are true about modernism? Modernism marked the break with formal conventions. Old ways of thought underwent cultural shift. Decline of liberal humanism. Modernism revived classical scholarship. Modernism promoted logocentric ways of thought. It was the opposite. प्रमोट तो नहीं करा था उन्होंने लोगोसेंट्रिक को, इनफैक्ट यहाँ से हमें थोड़ा रिबेलियन दिखने लग गया था टुवर्ड्स दैट। सो ए, बी एंड सी विल बी द आंसर, क्योंकि हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। ओके, स्पेंसर, सिडनी, वॉट एंड सरे, एंड ये वर्क्स हैं, सारे इजी और फेमस वर्क्स हैं, इन्हें मैच करो मेरे लिए। सो वी हैव सिडनी, सिडनी द डिफेंस ऑफ पोइसी और द अपॉलॉजी ऑफ पोइट्री। सो बी का फोर्थ हो जाएगा, एंड दिस वर्क वाज रिटन इन रिस्पॉन्स टू स्टीफन गुसॉन स्कूल ऑफ अब्यूज। सो बी फोर्थ, एंड this leaves us with two options. We have what, whose list to hunt. So C का first, and that gives us the answer. Okay. A का third हो जाएगा The Fairy Queen, and Henry Howard, Earl of Surrey. So Cruel Prison, How could be tied. What was the one who bought your Petrarchan sonnet? Petrarchan sonnet को यहाँ पे कौन लेकर आया था? आपके ब्रिटेन में कौन लेकर आया था? It was what? And Surrey was the one जिन्होंने English sonnet create किया था। ठीक है, इस पेट्राकन सोनेट को इंग्लिश सोनेट आपके सारे ने बनाया था। प्लीज रिमेंबर, सो वॉट एंड सारे आर क्रेडिटेड फॉर ब्रिंगिंग द सोनेट फॉर्म इन ब्रिटेन मेजरली।
Which among the following novels is not written by Mary Shelley? अच्छा, another question, guys. Um, थॉमस वर्थ एंड अर्ल ऑफ सरे, इन दोनों के वर्क्स आपके रिचर्ड्स मिसलेनी में पब्लिश हुए थे. व्हाट वाज द ईयर ऑफ रिचर्ड्स मिसलेनी? माय क्वेश्चन इज, अर्ल ऑफ सरे एंड वर्थ के वर्क्स रिचर्ड्स मिसलेनी में पब्लिश हुए थे पोस्ट्यूमसली, दोनों के वर्क्स. व्हाट वाज द ईयर ऑफ रिचर्ड्स मिसलेनी? Okay. Which among the following novels is not written by Mary Shelley? The Lost Woman is not a work by her. Okay. Last Man, Frankenstein and Faulkner are the works by her. Lost Woman का कोई आपको एक authorship नहीं मिलेगी as such. There are different people who have written works with this name. So it's not important for you to know. Yes, 1557 was the year. Perfect. Very good. Okay. The Golden Light, the Lotus, Indian Dancers, the Harp of India, and we have to match them. Also, मेरा एक क्वेश्चन है, आपको इनको मेरे को क्रोनो में अरेंज करके भी देना है. ठीक है, मैं मार्क कर रही हूँ इन्हें 1 2 3 4. फर्स्ट सॉल्व दिस एंड देन क्रोनो में मुझे ये अरेंज करके दोगे इन 4 राइटर्स को, क्योंकि आपका एक क्रोनो का क्वेश्चन एग्जाम में आपके आया था जिसमें ये चारों नाम थे और एक और नाम था एक्स्ट्रा. I think Michael Madhusudan Dutt was there. Okay. So you have to arrange them for me. So Golden Light, Lotus, Dancers, Harp of India. Harp of India is by HLV de Rosio. So D ka third ho jayega. That gives us the answer no, but it leaves us with two options. The Lotus is a very famous work by Toru Dutt, which is very interesting point, guys. Lotus में आपको मिलेगा Greek mythology के allusions हैं. Okay. Greek mythology के आपको allusions मिलेंगे. इस पेन से मैं लिख नहीं पा रही. ग्रीक माइथोलॉजी के रेफरेंस है. ऑल्सो पिट्रार्कन सोनेट, पिट्रार्कन सोनेट में आपका ये लिखा गया है. ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स. ओके, सो लोटस हो गया, गोल्डन एंड दैट गिव्स अस बी का फर्स्ट एंड यस डी. ठीक है, अच्छा ओके, अरेंज कर दिया आपने. 3 1 2 4 मेरे पास मेजोरिटी का आंसर आया. 3 1 2 एंड 4. ओके, नाउ माइकल मधुसूदन दत्त कहाँ पे ऐड होंगे इनमें? 3 1 2 यही बोला था ना आपने, 3 1 2 4. हाँ, इसमें माइकल मधुसूदन दत्त को आप कहाँ ऐड करोगे? इनको कहाँ ऐड करोगे? एमएमडी को. माइकल मधुसूदन दत्त कहाँ ऐड होंगे? 5 मान लो उनको, 5. वो कहाँ ऐड हो जाएंगे ये मुझे बताओ. दिस इज 5 गाइस. वेयर विल वी ऐड हिम? हेनरी, टोरू और तो सरोजनी. माइकल मधुसूदन दत्त का ऐड होंगे. अगर 3 1 2 4 के साथ हम जा रहे हैं तो 5 का ऐड होएगा. सबसे पहले तो औरबिंदो पहले आएंगे, नायडू बाद में आएंगी. सो 3 एंड माइकल मधुसूदन दत्त आपके डेरोजियो के बाद आएंगे. तो 3 5 1 4 2 विल बी द फाइनल सीक्वेंस गाइस. ठीक है, चलो नेक्स्ट. Which of the following is a dramatic monologue? The Canonization, Tintern Abbey, Andrew Del Sarto, or The Flea? 3 5 1. पहले औरबिंदो फिर नायडू. Okay. Which of the following is a dramatic monologue? The Canonization, Tintern Abbey, and Andrew Del Sarto, or The Flea? Dramatic monologue है आपका C, and आपके B. Tintern Abbey is Canonization and Flea are lyric poems, and Tintern Abbey is written in blank verse. Okay, chalo. Which of the following options are true about the epistemological dimension of research? Which of the following are true about the epistemological dimensions of research? Scientific realism, the search for truth, critical theory, certain and indubitable knowledge, or mechanism of social control? Andrew Del Sarto by Browning. Perfect, perfect, Nikita. C, B. The correct answer will be option number B, guys. B and D. The research for truth and certain and indubitable knowledge. Okay. So B and D will be the correct answer.
Okay, match these for me. Valmiki's work Jhutin, we just talked about this. So B का fourth हो जाएगा and that gives us the answer. A का third है cast out. We have Bama and these are your Dalit writers. Okay, we have Bama. Bama का हो जाएगा C का first. Karuku and Urmila Pawar, Weave of My Life. These are very important works. इन्हें याद रखना. O sir, content you, I follow him to swerve my turn upon him. We cannot all be masters, not all masters can be truly followed. The following lines were spoken by which of the following characters? It was Iago, guys, who said this, and Iago said this in the work Othello. Okay, so Othello will be the answer. Sorry, Iago will be the answer. एंटोनोमेशिया, एंटाइफ्रेजिस, अपोक्रिफा एंड आर्टियोलॉजी. मैंने अपोक्रिफा आपको रीसेंट क्लास में ही पढ़ाया था. अपोक्रिफा होता है राइटिंग्स और स्टेटमेंट्स ऑफ डाउटफुल और स्परियस ऑथरशिप. सो सी का फर्स्ट एंड दैट लीव्स अस विद ऑप्शन ए एज द आंसर. ए का सेकंड होगा अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच सम डिफाइनिंग वर्ड ऑफ फ्रेज इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अ पर्सन और प्रॉपर नेम. फॉर इंस्टेंस अगर मानो कि मैं रिप्लेस कर दूं शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन से, दैट वुड बी एंटोनोमेशिया. ठीक है. देन वी हैव एंटाई फ्रेजेस. एंटाई फ्रेजेस हो जाएगा आपका बी का फोर्थ. आयरॉनिक और ह्यूमरस यूज ऑफ वर्ड्स इन सेंसेस ऑपोजिट टू द जनरली एक्सेप्टेड मीनिंग. जो फ्रेज है उसका एंटाई फ्रेज बेसिकली. एंड आर्टोलॉजी हो जाएगा आपका नैरेटिव ऑफ मिराकुलस डीड्स ऑफ गॉड और हीरो. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस, ये रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में. ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन इज अ वर्क बाय निराज सी चौधरी. सो दिस इज A का fourth. My son's father is a work by Don Morris. So A का fourth, does that give us the answer? Yes. All through the Indian Gandhian era is by A.S. Iyengar, and My God Young, My God Died Young is by Sasti Brata. Okay, एक बार देख लो, थोड़ा सा एक बार अपने विजुअल मेमोरी पे फोकस करो and then I'll show you the next question. ठीक है. The grammar translation method in English language teaching stresses on. Guys, please have faith in your visual memory and your audio memory. आप आज के सेशन में जो भी देख रहे हो, जो भी सुन रहे हो, ट्रस्ट मी, आपको कल वो याद रहेगा. एंड ट्रस्ट योर सेल्फ कि वो याद रहेगा. बस अटेंटिवली करो. ठीक है, अटेंटिवली सेशन को अटेंड करो. Yes. The grammar translation method in ELT stresses on fluency, accuracy, appropriateness, or listening skill. The correct answer is accuracy. It stresses on accuracy. Grammar translation में हम लोग directly एक चीज को translate करते हैं. Okay? So accuracy पे focus होता है. Which of the following statements are true about A.K. Ramanujan? He is a poet of the 60s. That is true. His poetry draws his sustenance from his awareness of Hindu heritage. He has poor sense of rhythm. Okay. His verse poorly utilizes akam constructed technique. What is akam? Akam and puram. ये दो terms आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये एक बारी एग्जाम में आ गई है तो फिर से आ सकती है. अकम का मतलब होता है जब आप फोकस करते हो ऑन द आइडिया ऑफ पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस. एंड पुरम होता है फोकसिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक लाइफ. सो उनके वर्क में आपको मिलेगा उन्होंने अकम टेक्निक को यूज करा है. सो द क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि कौन से ट्रू है. द करेक्ट आंसर विल बी ए, बी एंड ई. ए, बी एंड ई विल बी करेक्ट. ठीक है. अकम एंड पुरम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है. Akam होता है it's a classical Tamil Sangam poetry style. Akam literally means interior or inner world, private personal experiences, especially love, relationships, emotions, inner conflicts. And especially आपको मिलेगा रामानुजन की poetry में the idea of um, unsettling feeling, his relationship with his dad, obituary. अगर आपने एक वर्क पढ़ा हो उनका ऑबिटुअरी, कभी टाइम मिले तो ये वर्क पढ़ना, ये पोम पढ़ना उनकी, उससे आपको पता पड़ेगा. यहाँ पे उन्होंने बात करी है अबाउट द बर्डन दैट हिज फादर लेफ्ट ऑन हिम, द responsibilities that he left, and he didn't exactly have a very healthy relationship with his father, which through the poetry we feel that must have been the case. Identify the correct statement on about lingua and parole below. बताओ.
सारे ही PYQs हैं. Identify the correct statement on about lingua and parole below. This happened in January, guys, which is technically December 2025 का पेपर. ठीक है, 2024 का पेपर, बट हुआ जैन में था, तो इसलिए मैंने इसे 2025 में ऐड कर दिया है. ठीक है. यस. जून का पेपर भी है इसमें. जून का पेपर इसके बाद आएगा. पहले ये सॉल्व करो, इसके बाद जून वाला पेपर है. Lingua is the abstract language system, the grammar of a language. Be patient, guys. Be patient. Focus on the questions. Okay. A and B will be the answer. Lingua is the abstract language system. That is true. It is more like a grammar system. जो आपका abstract language system होता है पूरा. And parole is the utterance. जो individual utterances होती हैं. So parole is a language actually produced by its user following the lingua. क्योंकि हम वो system use करके वो utterances करते हैं. Who is the author of English in India? It's present and future, published in 1964. नंदिनी, मेरा मतलब ये था कि देखो, बिल्कुल किताबें बंद कर दोगे तो वैसे भी टेंशन होती रहेगी कि मुझे कुछ याद नहीं है. इसलिए मैंने कहा था अपनी बुक्स, अपने नोट्स बंद कर देना. इसको सिर्फ सुन लो, इसको बस देखो बैठ के, नोट्स मत बनाओ इसके. ठीक है. जस्ट सिट एंड वॉच एंड आंसर, दैट इज ऑल. ओके. Yes, the correct answer will be option number C, VK Gokak. Absolutely right. Chalo. An ideal research paper should include a statement that establishes the problem or controversial issue that the paper intends to examine, background information to establish past theories and current ideas on the topic, summarizing and paraphrasing, no, glorification of the writer itself, no. C and D को eliminate कर देंगे तो A, B and E will be the answer. So D will be the answer. Okay. The famous short poem Elegy on the Death of a Mad Dog appears in which of the following 18th century novels? It appears in The Vicar of Wakefield by Oliver Goldsmith. ठीक है. So C will be the correct answer. Which among the following does not fall in the category of a revenge tragedy? ठीक है. Just a minute, guys. Anjali, the June batch is going to start on 12th of January. 12th of Jan. And the first class 13th of January को होगी. ये आपकी orientation class वाला दिन है. This is actually the day my birthday, guys. So I'm starting the batch on my birthday. So a special start to our June batch. Okay. Which among the following does not fall in the category? Cymbeline is not a work which falls under the category of revenge tragedy. Okay. Spanish tragedy किसका है? Thomas Kitt का है. Okay. Nala and Damayanti, Jayadev, the viziers of Basora, the flute of Krishna. बताओ. Match them. Sri Aurobindo, Vasudev Rao, P.A. Krishnaswamy and Haridranath. Thank you, Tushar. Okay, so Viziers of Basora will be Sri Aurobindo, C का first, and that gives us the answer. A का second हो जाएगा वासुदेव राव. Please इन questions को अच्छे से देखो, अपने दिमाग में बिठा लो इन्हें, please, okay? So B का fourth हरिद्रनाथ and Flute of Krishna will be P.A. Krishnaswamy. Okay, चलो. Identify the correct statements. An epistle is a literary genre in the form of a letter. That is correct. Epigra is an inscription on funeral monument. No. That is epitaph. Epitaph होता है वो. Epigram is a short pithy poem, wittily expressed. Epitaph is a formal statement in the beginning of a literary work. No. This is epigram. This is epigram. Okay. Epyllion is a short poem. This is correct. So A, C, and E are correct. E. Sorry. C. C will be the answer.
Which of the statements given below are true? The Center for CCCS was established in Berkeley in 1960. No. CCCS आज ही मैंने ग्रुप पे कंफर्म किया है, फाइनल वाली कंफर्मेशन मैंने दी है गाइस कि it's UK. Okay, it's UK. This is my final answer. I'll not change it now. And 1964 was the year, so this is obviously incorrect. Jürgen Habermas traces the rise of the public sphere to the rise of print culture. That is true. We have B as correct, which तो हम C eliminate कर सकते हैं. Rest आप बताओ. What do you think should be the answer? B, C and D आप कह रहे हो. So Jürgen Habermas ठीक है. Paul Gilroy introduced the concept of Black Atlantic, correct. And Adorno praises the alien nature of avant-garde modernist art such as the eternal music of. Okay. Chutnification was a term. किसका term था? Chutnification was a term by Rushdie. Okay, it was Rushdie. So the correct answer will be, as you said, B. Chronologically arrange the following works according to the year of publication. आपको इन works को chronology में arrange करना है. बताओ. गोविंद, आप जो नीचे नंबर है ना, इंक्वायरी कॉल ऑन, उधर कॉल करके भी बात कर सकते हो जो आपको इशू आ रहा है. टोटल क्वेश्चन कितने हैं साक्षी? आई कांट से. देयर आर टू मेनी. आई डिडंट काउंट देम. देयर आर टू मेनी. ओके, so the correct answer will be this. I need you people to look at the answer. I need you people to look at the answer. Okay, ये ears को एक बारी देखो, इसको अपने दिमाग में छापो please. The Twice Born fiction by Mukherjee, very important work, 1971. M.K. Nayak, History of Indian English Literature, repeat होता है. Mask of Conquest repeat होता है. After Amnesia, G.N. Dewey, and we have Harish Trivedi, Colonial Transactions, 1993, which is also the year of Bodies That Matter. Okay, chalo, bye Butler. Identify the statements which are correct. The term hanure. Oh, okay. अब एक पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये जो hanure यहाँ पे लिखा हुआ है, that is also called flaneur, guys. Okay, so these are the same words. ये दोनों same हैं. Is often associated with the poetry of Baudelaire. Baudelaire was the one जिन्होंने flaneur का concept दिया था, and Benjamin was the one. Benjamin was the one जिन्होंने इस वर्क को फर्दर एक्सपैंड किया था. The term habitus is associated with bourgeois, that is correct. A and B are correct. And इन्होंने हमसे correct ही पूछा था. Foucault is associated with the concept of modernity, no. Fanon is associated with the imagined community, no. Thick description is associated with Clifford Mintz. Okay. Identify the correct statements which are correct. E भी correct होगा guys. E भी correct होगा. Question में fault है. E भी correct है. Yes, E भी correct है because thick description is by Clifford. Okay, girds, men's नहीं, girds. My bad guys, my bad. ये तो वही वाली बात हो गई. अभा प्रभास, अरुण प्रभास मुखर्जी वाली बात हो गई है तो. ठीक है, चलो. So A and B will be the answer. Alright, what was flaneur? Flaneur एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में भी पूछा गया है. Flaneur was this about this modern man who is a wanderer, who is window shopping basically, who is both an outsider as well as an insider of the society, or you can say is neither an insider neither nor an outsider of the society, and he is looking at everything as a commodity in a very alienated sense. Okay, yes. चलो क्लास अराउंड देखते हैं साक्षी, जब तक हमसे हो पाएगी तब तक. ओके, बट नॉट बियॉन्ड 9 guys, not beyond 9, because I understand you people need to take some rest, so not beyond 9. Okay, Bakhtin, Foucault, Barthes, Freud. We have text can neither be readerly nor can either be readerly or writerly. That was Barthes. Barthes ने readerly and writerly text की बात करी थी. So C का second हो जाएगा. That give us the answer, easy peasy. A का third, dialogue as the intrinsic feature of language. Obviously dialogue की बात हो रही है तो Bakhtin ने की होगी. फ्रॉइड ड्रीम्स एंड अनकॉन्शियस से हो जाएंगे, एंड फूको आर्कियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन साइंसेस से मैच हो जाएंगे. यू कैन सी लिटरेरी थ्योरी क्वेश्चंस आर नॉट दैट डिफिकल्ट, एंड अगर आप बाकी भी देखोगे ना, कमिंग क्वेश्चंस भी देखोगे, सारे क्वेश्चंस मुश्किल नहीं आते हैं.
हैंडफुल ऑफ क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, या फिर क्वेश्चन उस टाइम पे मुश्किल लगता है जब आपने अटेम्प्ट किया था, बट लेटर ऑन फिर इट सीम्स टू बी नॉट दैट डिफिकल्ट. ठीक है. चलो. माई डेज विद गांधी अमंग द ग्रेट, लाइफ ऑफ अरबिंदो, रविंद्रनाथ टैगोर. अगर हमने उससे पहले खत्म कर लिया ना, 9 से पहले, तो शायद तो मैं 8 तक ही खत्म कर दूंगी. ठीक है, डोंट वरी. जब जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, आई विल एंड द सेशन देयर इटसेल्फ. और अगर नहीं हो पाए जितने क्वेश्चंस मैं लाई हूँ, तो 9 पे खत्म कर देंगे, उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे. ठीक है, जल्दी हो गया तो उससे बढ़िया क्या है. ओके, माई डेज विद गांधी. ऑलराइट, बताओ. डी. D. Okay. The correct answer will be option number D. Absolutely right, guys. So, A का second, एक बार थोड़ा सा देख लो इसको. N.K. नायक, N.K. बासु. We have B का first, that is D.K. Roy, Life of Sri Aurobindo. अभी मैंने आपको recent अपनी क्लासेस में बताया था कि कृपलानी is known for writing your biographies. So, रविंद्रनाथ टैगोर की biography कृपलानी ने लिखी थी, and Aurobindo A.B. पुरानी. Okay. Who is the best known figure amongst the following for articulating the concept of negritude? It was Aimé Césaire who was the one who gave us the concept of negritude, and it was a French movement. Okay, and he is a French writer. Functional communicative approach in English language teaching is in opposition to the, and Franz Fanon was not a big fan of negritude. ये point याद रखना. उनके हिसाब से ये जो rebellion था, ये negritude था, उनके हिसाब से violent resistance would be the one which can help us achieve what we are aiming for. But अगर आप embracement में ध्यान दोगे, essentialist लगा था उन्हें काफी ज्यादा ये movement. ये point याद रखना, एग्जाम में पूछा है आपसे. Functional communicative approach in ELT is in opposition to the. Functional communicative approach आपका structural approach के opposition में होता है. So D will be the answer. Very, very good. Okay. Identify the one who was not a new critic. Alan Tate, Robert Penn Warren, Cleon Brooks, or Claude Louis Strauss. Who was not a new critic? Tate, Warren, Brooks, or Strauss? Strauss was a structuralist, guys. He was a structuralist. So D will be the answer. Okay. Can you tell me any concept given by Strauss? Any concept given by Strauss? Strauss का कोई concept कुछ भी मुझे अगर बता सकते हो तो मुझे बताओ. Which of the following is an elegy on John Donne's wife who died in 1617? Death be not proud, you has made me, Holy Sonnet 17, at the round earth's imagined corners. The correct answer is Holy Sonnet 17. Absolutely correct. Myth and kinship. Absolutely. He did the study of kinship. Correct. ठीक है. Which of the following poems uses terza rima? Which of the following? Bricolage, bricolier. Very, very good. Bricolage and bricolier. ठीक है. परफेक्ट. किनशिप का आइडिया, ब्रिकोलेज, ब्रिकोलियर, इंजीनियर, ये सब उन्हीं ने बात करी थी. ऑल राइट. विच आर द फॉलोइंग पोम्स यूजेस टर्जा रीमा? कीट्स ओ टू नाइटिंगेल, शेलीज ओ टू द वेस्ट विंड, विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉल्ट्री रीपर, और एल्फ्रेड टेनिसन्स यूलेसियस. टर्जा रीमा में आपका वर्क है ओ टू द वेस्ट विंड बाय शेली. ओके, सो बी वेरी वेरी गुड सौम्या, वेरी गुड. आई एम नॉट एबल टू टेक ऑल द नेम्स गाइस, सो प्लीज आप ऐसा मत सोचना कि मैं पर्पसली नहीं ले रही हूँ. Very good. All of you are performing well. What is practical criticism? The close analysis of literary text in such a way as to bring out their political meaning. No, political meaning तो बिल्कुल भी नहीं निकालता है आपका practical criticism. Movement which wish to make literary criticism more relevant. No, the close analysis of poems without taking account of any external information. That is practical criticism for you. And I. Richards is the one who is credited for starting the whole thing. Okay, न्यू क्रिटिक्स में भी आप उन्हें उनका नाम मिलता है बिकॉज उसकी भी फाउंडेशन कहीं ना कहीं आई रिचर्ड्स ने स्टैब्लिश की है. ओके, द चाइल्डहुड ऑफ जीसस. मैंने अभी रीसेंट सेशन में ही आपको ये वर्क पूछा था कि किसका वर्क है. चाइल्डहुड ऑफ जीसस. द गो बिटवीन, ब्राइट शेड रिविजिटेड, द कैचर इन द रे. सो डी का फोर्थ है, डी का फोर्थ, एंड दैट गिव्स अस द आंसर. ए का थर्ड हो जाएगा बाय कोजी. ठीक है. वी हैव बी का फर्स्ट, गो बिटवीन बाय एल.पी. हार्टली, ब्राइट शेड विजिटेड बाय वॉक, एंड जे.डी. सलिंगर. आई नीड यू पीपल टू टेक अ फ्यू सेकेंड्स एंड लुक एट द टेबल. एक बारी देख लो, दिमाग में बिठा लो, क्विक रिविजन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. डन. चलो.
Next. Arrange the following in the chronological order of their years of publication. आंसर फिर मैं थोड़ी देर के लिए आपको years भी दिखा दूंगी ताकि आप उसको याद कर लो. Yes. Okay. The correct answer will be option number B. Very good. These are the years, guys. एक बारी देख लो इन्हें. And किसके works है ये भी मैंने mention कर रखा है. An Appetite for Poetry by Bloom, Western Canon by Bloom, 94, 89. अच्छा D. यहाँ पे देखो मैंने मेंशन कर रखी है सारी इन्फो कौन से किसके वर्क्स हैं. वी हैव हैरल्ड ब्लूम डिकंस्ट्रक्शन एंड क्रिटिसिज्म बाय पॉल डेमान डेरेडा हार्टमैन मिलर. वी हैव मल्टीकल्चरलिज्म रूट्स एंड रियलिटीज बाय ब्लूम. दिस इज नॉट इन क्रोनोलॉजी ओके बट यहाँ पे सारी एक्स्ट्रा इन्फो है अबाउट द वर्क्स एंड देयर ईयर्स. चलो नेक्स्ट. Arrange the following novels by Lawrence in chronological order of their year of publication. We have Women in Love, The White Peacock, Sons and Lovers, The Rainbow, and The Trespasser. बताओ. ऑल्सो एक और चीज मैं क्लियर कर दूं. इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू रिमेम्बर द ईयर्स ऑलवेज. प्लीज ये चीज याद रखना. ये जो मिथ है अराउंड क्रोनोलॉजी क्वेश्चन कि आपको ईयर पता ही पता होना चाहिए, इट्स नॉट नेसेसरी. अगर आपको बेसिक आइडिया भी है ऑफ द सीक्वेंस इटसेल्फ एंड नॉट द ईयर्स तो भी आप अरेंज कर सकते हो. एंड विच वर्क बिलोंग्स टू विच एरा, दैट इज ऑल. Okay, so C will be the correct answer. I have got C as a response by some of the students. These are the years, guys. यहाँ मैंने mention कर रखे हैं. White Peacock 11, Trespasser 12, Sons and Lovers 13, Rainbow 15, and Women in Love 20. And you will find that Women in Love is a sequel. It's a sequel to Rainbow. Okay. उर्सुला आपको इसमें कैरेक्टर मिलेगी. आइडेंटिफाई ऑल द ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल राइटर्स आउट ऑफ द फॉलोइंग. मैंने अभी रिसेंटली अपने यूरोपियन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर वाले सेशन में आप लोगों को बताया था अबाउट द एबोरिजिनल राइटर्स. इट वाज ऑडगेरो नोनुकल. कैथ वॉकर भी है इनका नाम. कुछ क्वेश्चंस में कैथ वॉकर के नाम से आपको मिलेंगी एज एन ऑप्शन. सो सी विल बी द आंसर. Kim Scott was there and Kevin Gilbert. So A, C and D. A, C and D. C will be the answer. ये अभी हमने recently पढ़ा था. Okay? चलो. Identify the correct options from the following statements. Lady Chatterley's lovers last में आएगा. Very very good. हाँ. Okay, ego criticism has often explained the human and non-human webs of interrelation. In ego criticism, human accountability to the environment is part of the text's ethical orientation. Ego criticism foregrounds the notion of an interplay between environment and the body. There is only one wave of ego criticism. Okay, so D and E गलत हो जाएगा. Why? एक तो पहली चीज, it's not just only in one wave. And ego criticism has tackled the issue because ecofeminism is a thing. We have talked about ecofeminism. Okay, so A, B, and C will be the correct answer. Which of the following works of Narayan were published after independence? Dark Room, English Teacher, The Financial Expert, Swami and Friends, and The Guide. गाइड का हमारा प्रोटैगनिस्ट कौन है? राजू है. स्वामी एंड फ्रेंड्स में स्वामी है. इंग्लिश टीचर, डार्क रूम एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट. इन तीनों के मुझे बताओ. 56 का ए. ओके. सी, सी एंड ई. द फाइनेंशियल एक्सपर्ट एंड द गाइड. एब्सोल्युटली राइट. उससे पहले जो वर्क्स है ना वैसे भी आपके अर्ली वर्क्स में फॉल करते हैं. इसमें आपकी एक अर्ली ट्रिलॉजी आती है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड इंग्लिश टीचर. सो 1935 से स्टार्ट होते हैं वर्क्स. दिस इज द फर्स्ट वर्क गाइस. डार्क रूम आपको मिलेगा 38, द गाइड 58, 52 एंड दिस इज 45. ओके. यस, ठीक है. चलो. कृष्णा वॉज देयर इन इंग्लिश टीचर. डार्क रूम एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट के भी मुझे नाम बताओ, कैरेक्टर्स के, प्रोटैगनिस्ट के स्पेसिफिकली. गाइड तो राजू हो गया, करेक्ट. चलो. Who said the introduction of foreigners does not necessarily destroy the nation, they merge in it.
दिस वाज सेड बाय एम.के. गांधी। ये भी मैंने आपको रिसेंटली कराया था। मार गया फाइनेंशियल एक्सपर्ट में आ जाएगा। मार गया फाइनेंशियल एक्सपर्ट में आ जाएगा, करेक्ट। इसके बेटे का नाम बता सकते हो मुझे? मार गया का बेटा था which was a spoiled brat, guys. He was a spoiled brat. He was the reason behind his father not being able to get rich. Yes. अगर वही बता सकते हो बताओ। एंड एक वर्क रह गया है, डार्क रूम। डार्क रूम की प्रोटैगनिस्ट आपने मुझे नहीं बताई है। इट्स अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द पोएम जजुरी? जजुरी इज बाय कोलाटकर। ये हम लोगों ने बहुत बारी पढ़ लिया है। सो जजुरी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके ओके, अरेंज द ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डील्स विद द थीम ऑफ अपार्थीड? Apartheid is racial segregation, but that is being legally practiced in the society. Racial segregation, systemic violence आप कह सकते हो, but legally practice हो रहा है through the system itself. सावित्री, सावित्री, पवित्रा नहीं, सावित्री. Yes. C. B, C, and E. July's People, Cry the Beloved Country, and My Son's Story. Correct. Absolutely right. Whose works are whose? Purple Hibiscus by Chimamanda Ngozi Adichie. July's People by Nadine Gordimer. We have Cry the Beloved Country, Alan Paton. We have Mimic Men, V.S. Naipaul, and My Son's Story by Gordimer. Please remember the writers as well. And ये जो bracket में है, ये इनके year है. इन works के years हैं. Arrange the following works of literature chronologically based on their year of publication. It should be option number D. ये यहाँ पे मैंने info mention कर रखी है, एक बार इसको देख लो आप लोग. So Burnham Wood by Eleanor Catton, 2023. Swinging Bridge, Rama by Espinet. Family Matters by Mistry, English Patient by Ondage, and Lives of Girls and Women's, Alice Munro, and that is 1971. ठीक है, चलो. Next. Which of the following text has been written by Tagore? Tiger Claw, Chandalika, A Touch of Brightness, Image Breakers. Which of the following text has been written? B is the work which has been written by Rabindranath Tagore. Chandalika is a play by Tagore. Touch of Brightness is by Tendulkar. We have Image Breakers by Das, and we have Tiger Claw by Karnad. Okay, ये भी देख लो, ये भी सारे important works हैं. Good evening, Anjali. Good evening. Which of the following is not matched correctly? Ira Day, Margaret Chatterjee, ताप्ती मुखर्जी एंड तिलोत्तम रंजन. यहाँ पे उनके साथ उनके वर्क्स लिखे हुए हैं. कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयर नहीं है? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू. ताप्ती मुखर्जी का वर्क ये नहीं है, द गोल्डन रोड टू Sameer Khand. The correct answer will be this particular work is attributed to two different writers, famously associated with a poem by James Elroy and a historical book by Wilfred Blunt. Okay, so ये मैंने extra info add कर दी है. Which of the following are correct according to the MLA Handbook 9th edition? 1 inch margin on all the sides is compulsory. जो आपका research paper होता है, this is the paper, this is the A4 size sheet, guys, and there is a 1 inch margin from all the sides. Okay. ओके, सो डबल इंटेंशन होता है जब आप कोटेशन करते हो और बहुत बड़ा कोटेशन है, तो आप डबल इंटेंड करते हो इसको नेक्स्ट लाइन में. सो ए इज करेक्ट. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर रिटन इन बोल्ड लेटर्स, नो. स्लैश इज यूज्ड बिटवीन टू नाउन्स पेयर्ड एज ऑपोजिट. हैंगिंग इंडेंट इन द वर्क cited entry is half inches. Subordinating conjunctions are not written in bold letters in the title of the research paper. What do you think is the answer? The correct answer is A, C, and D. Okay, Henry Miller, Steinbeck, James Jones, and James Baldwin. You have to match the works. We have Steinbeck. Steinbeck का work है The Grapes of Wrath. Very famous work. Dust Bowl के बारे में उन्होंने, Dust Bowl का backdrop आपको मिलता है उनके works में. ठीक है? So B का first हो जाएगा, and that gives us the answer. A का third हो जाएगा Tropic of Cancer. मैं mark कर देती हूँ. Henry Miller third. We have C का fourth, फ्रॉम हेयर टू एटर्निटी, एंड बैल्डविन का हो जाएगा नो नेम इन द स्ट्रीट्स. ठीक है, यस.
Arrange the following in chronological order of their year of publication. I swear to God, guys, नेशन एंड नरेशन मुझे जितनी बार दिख गया है आपके पेपर, आपके पीपीटी बनाते हुए, जितनी बार मुझे ये वर्क दिखाए क्रोनो में, आई कांट इवन नंबर इट द नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, सो प्लीज 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 टेक दिस वर्क वेरी सीरियसली, टेक दिस वर्क वेरी सीरियसली. दीज टू आर वेरी फ्रीक्वेंटली पुट इन योर क्रोनो क्वेश्चंस. आप सब लोग ये डाउट क्यों पूछ रहे हो? आप घर से ही करके जाओ, घर से ही करके जाओ. उसमें आपके एडमिट कार्ड में सारी डिटेल्स हैं, उसको पढ़ो. उसमें एक प्रॉपर पेज होता है जिसपे सारी डिटेल्स होती हैं, उसको रीड करो. Okay, so this is the information regarding the chrono question. A is the correct answer. Discourse on colonialism 1950, that is Amy Césaire, the one who's associated with negritude, guys. Anthropology and the colonial encounter 73. Orientalism 78 by Said. We have dialogic imagination by Bhaktin 81 and nation narration by Bhabha 1990 is the year. Who is the critic associated with the term blue humanities? It is B. Stephen Hertz. Stephen Hertz is the one who's associated with the term blue humanities. In which year was Raja Rao's Kanthapura published? In which year was Raja Rao's Kanthapura published? 38, 60, 65 or 47? Okay, yes. The correct answer will be option number A, 1938. Kanthapura was published in 1938 and it's a work by Raja Rao. Arrange the following works in chronological order of their year of publication. As I told you, Orientalism, guys. Orientalism. अभी आपने देखा था 1978 is the year for Orientalism. Black Skin, White Mask is a work by Franz Fanon. Please remember this as well. बहुत important point है ये. Mask of Conquest, The Rest of the Earth. Can the Subaltern Speak? Can the Subaltern Speak is a work by Spivak. This is by Gauri Vishwanathan. ये भी बहुत बार repeat होता है. Rest of the Earth is by Franz Fanon. दोनों वर्क इनके हैं और ये दो ही वर्क्स ज्यादातर आपके एग्जाम में आते हैं बाय हिम. ओके, 52, 61, 78, 88, 89 विल बी द सीक्वेंस ऑफ द वर्क्स. एक बारी देख लो इसको सो दैट आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक बार देख लो, नजर से घुमा लो इसको. ठीक है, चलो. In which of the texts the following lines occur? Of all the causes which conspire to blind man's erring judgment and misguide the mind, what the key head with strongest bias rules is pride, the never failing vice of fools. An essay on criticism, The Rape of the Lock, an essay on man, epistle to Dr. Arbuthnot. The correct answer will be option number A, an essay on criticism. Whose work is this? These works are by Alexander Pope. Pope के works हैं सारे. What does deductive method of reasoning refer to? What does deductive method of reasoning refer to? On completion of every 2 hours, we'll take a break, okay? On completion of every 2 hours, हम break लेंगे. We are 1 hour down, guys. 1 hour completed and पता भी नहीं पड़ा. Okay. What does deductive method of reasoning refers to? Deductive होता है जब आप move करते हो from general to particular, and when you move from particular to general, it is inductive, guys. This is the most scoring information ever. Please make sure that you do not confuse these two. Okay? Yes. The line thou still unravished bride of quietness presents which of the following rhetorical figures? No, it's not stuck. It's not stuck, Vidushi. You are Dakshita, right? Your name is Dakshita. आपने अपने यूजर नेम में विदुषी क्यों लिखा है? Thou still unravished bride of quietness presents which of the following? It is apostrophe, guys, because we are directly addressing someone over here. Langston Hughes' poem I Too Sing America is a response to which of the following poets? It's a response to Walt Whitman's work. I hear America singing. I hear America singing. ठीक है?
एंड इनकी सबसे इम्पोर्टेंट कलेक्शन थी लीव्स ऑफ ग्रास। इनको हम क्या कहते थे? फादर ऑफ वीवर्स। Arrange the following in the chronological order of the year of publication. Guys, can you name those two works by Whitman, which were dedicated to Abraham Lincoln? One was Captain, Oh Captain, My Captain. What was the name of the other work? दो वर्क्स थे विटमिन के which were dedicated to Abraham Lincoln. One was Oh Captain, My Captain. What was the name of the other one? ओके, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। टाइगर, सॉलिटरी रीपर, अडोनिस, राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। द करेक्ट सीक्वेंस विल बी टाइगर सबसे पहले आएगा क्योंकि ब्लेक सबसे पहले आते हैं। जब हम लोग अपने रोमांटिक एरा पढ़ते हैं और अपने राइटर्स को पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले ब्लेक का डिस्कशन होता है बिकॉज ब्लेक क्रोनोलॉजी में सबसे ऊपर आते हैं। फिर राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर आएगा, सैमुअल टेलर कॉलरिज। सॉलिटरी रीपर बाय वर्ड्सवर्थ 1807। Why? I'll explain. This particular work was not a part of your lyrical ballet. It was not a part of your lyrical ballet. This was a part of our lyrical ballet. And ये तो पहले एडिशन का ही पार्ट था, तो ये तो ऑब्वियस हो जाएगा कि ये इससे पहले आएगा। ओ टू ऑटम, जॉन कीट्स, क्योंकि ये तो सेकंड जनरेशन राइटर है, ये भी सेकंड जनरेशन राइटर है। और अडोनिस उन्होंने कीट्स की डेथ के लिए लिखा था। इट वॉज एन एलिजी रिटन फॉर कीट्स। तो इसका मतलब है कीट्स की तो डेथ हो चुकी थी जब तक अडोनिस लिखा गया था। तो लॉजिक हमने लगाया, सारे के सारे वर्क्स में ईयर अगर नहीं भी पता था, बेसिक लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एंड ओ टू ऑटम का ईयर 1819 है, ये हमें पता है बिकॉज इट वाज हिज एनस मिराबिलिस, इट वाज द ईयर व्हेन ही वाज फ्लरिशिंग। सो इजी पीजी क्वेश्चन गाइस, लॉजिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, सो आई होप आपको ये याद है लिरिकल बैले में कौन से वर्क्स इंक्लूडेड हैं। बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो यू कैन टेल which work was published first, which was later. Okay. Arrange the following in chronological order of their year of publication: Fraser's Magazine, The Spectator, The Westminster Review, The Quarterly Review, and Edinburgh Review. हम्म ओके, आप लोगों ने आंसर दिया है लाइलैक ब्लूम। अच्छा ओके, सिर्फ कीवर्ड याद है, चलो कोई बात नहीं, दैट विल डू गाइस। Arrange the following in chronological order of the year of publication. The correct answer will be C, guys. The first one which will come over here is The Spectator by Steele and Addison, 1711. We have Edinburgh Review 1802 by Jeffrey. Jeffrey was the one जिन्होंने लेक पोएट्स को कॉइन किया था in 1817 in the same review. याद है ये कितनी बार हम पढ़ चुके हैं अभी recently, 17 and लेक पोएट्स. Quarterly Review, William Gifford 1809. Westminster by Jeremy Bentham 1824, and Fraser's in 1830 by Fraser and William Maginn. Okay, identify the statements which are true for psychoanalytic criticism. Hmm. When lilacs last in the dooryard bloomed. Very good, Chavi. Kudos to you. Okay, that's the complete title, guys. The premises and procedures were established by Freud. Freud posited that artists are like neurotic patients. Freud posited that psychoanalysis can be used to account for many developments and practices in the history of civilization. A repressed wish does not become a fantasy. This is the exact opposite of what Freud said. Freud का मानना था कि जो भी हमारी repressed wishes है, हमारे dreams are actually a way to fulfill our wishes. Okay. फ्रॉइड proposed, and हमारे ड्रीम्स हमारी फैंटेसीज ही पूरी करती हैं according to Freud. Freud proposed that literature and other parts manifest the repressed subconscious and unconscious drives of the artist. The correct answer will be A, C, and E. So A is correct, C is okay. हो गया फिक्स गाइस, हो गया फिक्स. All right. So this question, John Updike will be the answer. Okay. Which of the following is not a character in William Congreve's The Way of the World?
Which of the following is not a character in William Congreve's The Way of the World? Fennel, Mirabelle, Waitwell, or Peachum. Peachum is not a character, guys. D will be the answer. Peachum is actually a character in two different works. एक आपको मिलेगा Beggar's Opera by John Gay and एक आपको मिलेगा The Three Penny Opera by Bertolt Brecht. Bertolt Brecht was associated with epic theater. ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना. पीचम आपका दो डिफरेंट वर्क्स का कैरेक्टर है. ओके, ऑलराइट. Arrange the following works of Bacon in the chronological order of their year of publication. Yes, correct. Arrange the following works of Francis Bacon in the chronological order of their year of publication. The correct answer will be A, C, E, B, D. And सबसे पहले आपका Advancement of Learning work आएगा 1605. Novum Organum will come in second 1620. 22 History of Henry the seventh. The Augmentus Scientiarum and the New Atlantis 27. एक बार आप देख लो, इसको याद कर लो, then I'll move on to the next question. ठीक है, इसको देख लो, याद कर लो, then I'll show you the next question. Arrange the following steps of decision making in the research process. Arrange the following steps of decision making in the research process. The correct answer will be, सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले आप फॉर्मुलेट करते हो द रिसर्च प्रॉब्लम. सो ओके, सो चॉइस ऑफ द रिसर्च टॉपिक, सबसे पहले रिसर्च टॉपिक यूज सेलेक्ट किया, फिर रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड करी, फिर उसके बाद हम लोगों ने कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन करा, देन वी कलेक्ट द डेटा एंड देन वी इंटरप्रेट द कलेक्टेड डेटा. The first folio of Shakespeare's play appeared in 1623. 23 will be the answer. The Okay, match the authors with the text. Kamla Markandia, Shivakami, Anita Desai, or Raj Lakshmi Devi. We have Anita Desai, Cry the Peacock. So C का fourth हो जाएगा, and that gave us the answer. A का third होगा Possession by Markandia. This is this. B का first, and this is the Enchanted Fruit by Lakshmi Devi. ये भी मैंने आपको अभी रीसेंट सेशन में इंडियन पे जो मैंने सेशन दिया था उसमें इंचैंटेड फ्रूट मैंने आपसे पूछा था. आइडेंटिफाई द वंस व्हिच आर मैच्ड करेक्टली. Barbara Christian, the race for theory, Alfred Crosby, Unhiding the Hidden, Paul Carter, Naming Place, Graham Hugan, Ecological Imperialism, and we have Thomas B. Macaulay, Minutes on Indian Education. The correct answer will be A, C, and E, because we already know that this is matched correctly. तो A, C और D में आपको पहचानना था. ठीक है? Yes. Arrange the following text in chronological order of their publication. And these are works by मुल्क राज आनंद. मुल्क राज आनंद के ऊपर chronology है. ओके, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी गाइस. यहाँ पे मैंने वर्क्स आपके मेंशन कर दिए हैं 36, 37, 39, 45 एंड 51. एक बार आप देख लो, इसको थोड़ा सा याद कर लो. सेवन समर्स इज अ वर्क विच वॉज एक्चुअली अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क. इसके अंदर उन्होंने इंक्लूड करे थे फर्दर वर्क्स, एंड द मॉर्निंग फेस वॉज द वर्क विच वन साहित्य अकेडमी. तो ये एक पॉइंट आप याद रखना. ठीक है. Yes. Choose the correct sequence of the following works of Neruda in chronological order. ये नेरूडा की कलेक्शंस हैं मेजरली, ये सारी कलेक्शंस हैं. Okay. The correct answer will be option number D. Again, I have mentioned the years. This is a tricky question, guys. Not gonna lie.
I wouldn't have known the answer to this question if I would have had this in my paper. बिकॉज नरूडा के वर्क्स की जो ईयर भी है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, वो भी आपको काफी ऑथेंटिक नहीं मिलती है साइट्स पे. Who among the following illustrated the works of Gray and Robert Blair? पर्सी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे एग्जाम में पूछा गया है, तो हम लोग उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो एनटीए का आंसर है उसके हिसाब से वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दैट, अनफॉर्चुनेटली सो. The who among the following illustrated the works of Gray and Robert Blair? It was William Blake, guys. B will be the correct answer. Arrange the following works in chronological sequence of their year of publication. We have Matthew Arnold's Culture and Anarchy, Thomas Brown's Anatomy of Melancholy. Easy है, why? Because different era से writers हैं, different era से writers हैं. Easy chronology question because we have writers from different eras. Okay, I've got the answer. D will be the correct answer. This is the sequence, guys. Anatomy of Melancholy. We know that this work is from the 17th century by Brown. We have Leviathan, another 17th century work, Thomas Hobbes. Defense of Poetry by Shelley, 1821. And यहाँ पे mentioned है कि ये सिडनी वाला वर्क नहीं है. अगर सिडनी का वर्क होता तो सबसे पहले ये आता, फिर Anatomy of Melancholy आता. Culture and Anarchy, 1869 by Arnold, and Studies in the History of Renaissance by Pater, 1873. Who among the following is credited with ending the system of patronage with his letter to Lord Chesterfield? Samuel Johnson wrote the letter to Lord Chesterfield because this was a man who used to be a patron to people, to writers like Johnson. And जब जॉनसन अपनी डिक्शनरी पे काम कर रहे थे, when he actually needed financial support and sponsorship, he took I would say the uh, credit of Johnson's work, but at the same time he didn't show as much support, so he wrote this work. This was an invective. This is a harsh attack on someone. Okay, chalo. Defamiliarization, uncanny actor network theory, and homo caesar. अच्छा, I'll tell you something. तो मैंने एक चीज नोटिस करी एंड ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है ना, ये आपके पेपर में आई थी जैन वाले पेपर में, ठीक है, क्योंकि अभी हम जैन वाला पेपर ही कंप्लीट कर रहे हैं, बस ऑलमोस्ट देयर गाइस. ये जैन वाले पेपर में आई थी एंड इसी का क्वेश्चन आया था जून वाले पेपर में भी. सो माय थ्योरी इज गाइस कि इन लोगों ने रीसेंट पेपर से ही रिपीट करके नेक्स्ट साइकिल में ही क्वेश्चन दे दिया, which shows this session is very important, क्योंकि इस सेशन में हम लोग कर रहे हैं सब कुछ. there's a huge possibility कि रिपीट हो सकता है जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उससे. ओके, तो ये प्लीज ध्यान से, इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार इसको देखो, इसको पूरी अटेंशन से सेशन को देखो. ओके, यस, चलो. सो आपने मुझे आंसर दे दिया है. डिफेमिलाइजेशन इज बाय शॉकलोविस्की. ए का थर्ड हो जाएगा. वी हैव अनकैनी. अनकैनी इज बाय फ्रॉइड, जिसको हम अनहेमलिच भी कहते हैं. Unhomely is a word for it. So एक okay, I'll explain what is unheimlich, unhomely. इसका मतलब होता है कि जब कोई एक ऐसी फीलिंग है जो हमने सप्रेस कर रखी है, मे बी कोई इमोशन है, कोई थॉट है, एंड सडनली यू फील इट. नाउ this feels familiar, but at the same time it's unfamiliar. So that is this uncanny concept by Freud. Okay, so uncanny B fourth, C का second हो जाएगा. Bruno Latour and Homo caesar, Grigo Agamben. Arrange the following works in the chronological order of their year of publication. Yes, arrange them. No, the video is not stuck. It's not stuck. Okay, the correct answer will be option number B. I personally hate chronology questions. I hate it, guys. But okay, so I'll leave this question here for a few seconds. आप एक बारी देख लो इन वर्क्स को, इनका ईयर देख लो. ये सारे के सारे आपके मिसलेनियस राइटर्स, आप कह सकते हो इंडियन राइटर्स हैं. ये इनके कुछ फिक्स वर्क्स होते हैं जो रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में. अब अगर यहाँ पे ये क्रोनो में आया है तो ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है.
ठीक है, ये यहाँ पे क्रोनो में आया है तो ये मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं नेक्स्ट। ओके, read the following statements carefully and choose the correct ones. Read them and answer. Yes. Okay. Patrick White, Christina Stead, and Robertson Davis are the famous Australian novelists. The notion of civilized barbarity. Okay. I guess, guys, the June paper has started. जून का पेपर स्टार्ट हो गया है आपका। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन देखते ही ट्रॉमा सा वापस आ जाता है। आई रिमेम्बर दिस क्वेश्चन, आई रिमेम्बर द एनालिसिस व्हेन आई डिड इट। Okay, so BCE will be the answer. The notion of civilized barbarity was anticipated in Reader Haggard's 1887 novel. We have C novels like Lieutenant Women, Midnight Children, Waterland, deconstruct traditional notions of history and subjectivity, which is okay. This statement is easy to decipher. And E, the trauma of the mid-century years accounts for the prevalence of dystopian elements in novels like Clockwork Orange, Lanark, and The Handmaid's Tale. And this is also true क्योंकि हम Handmaid's Tale से तो at least familiar हैं by Margaret Atwood. Okay. Chalo. Pidgin Creole, idiolect and register. And I remember telling my students Pidgin and Creole, lingua and parole. ये चार repeat हो ही रहे हैं almost every cycle में. Okay, so इस cycle में हो सकता है guys lingua and parole आ जाए. लैंग्वा एंड परोल आ जाए क्योंकि लास्ट साइकिल में पिजन एंड क्रियोल आया था. Okay, so Pidgin and Creole, the language special to an individual. The correct answer will be option number D. So A का third है a contact language which draws on elements from two or more languages. We have B fourth, term relating to people, languages, especially in the erstwhile colonial tropics and subtropics. Idiolect will be C का the language special to individual and dialect मैंने जो आपको बताया था dialect होता है आपकी कोई एक लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के जो डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं वो वेरिएंट्स डिपेंड करते हैं ऑन द लोकेशन ऑन द सोशल कॉन्टेक्स्ट उस बेसिस पे आपकी लैंग्वेज के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स बन जाते हैं ठीक है एंड रजिस्टर हो जाएगा लैंग्वेज डिफाइन अकॉर्डिंगली टू सोशल यूज ओके सॉरी yes who has designed the panopticon and used the term as a new mode of obtaining power of mind over mind तो panopticon का आइडिया बेंथम का था panopticism was by Michel Foucault. Arrange the following books in chronological order. Guri, Kaur, please stop spreading all these info which is not true. Please stop talking about things which are not true. अभी बच्चे एग्जाम पे के ऑलरेडी बहुत टेंस है प्लीज आप ये सब मत बोलो अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन क्रोनो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको सीधा आंसर सी इज द आंसर गाइज इनके एग्जैक्ट ईयर्स मुझे नहीं मिले सो आई हैवंट एडेड दैट सो मैंने सीधा आंसर ही ऐड कर दिया है The notion of author constitutes the privileged moment of individualization in the history of ideas, knowledge, literature, philosophy, and the sciences. Identify the critical essay in which the given line occurs. This line occurs in the work What is an Author? And this particular work is by Michel Foucault. Okay, so please remember this. Michel Foucault ने यहाँ पे argue करा था that author is a historical construct. जैसे Foucault ने बोला था homosexuality is a historical construct, वैसे उन्होंने यहाँ पे भी ये बात कही थी. Okay. All right. Silas Marner, Sybil, Frankenstein, and Oliver Twist. And आपके जो जून वाला पेपर था ना उसका ब्रिटिश लिटरेचर wasn't that difficult in my opinion, honestly. Some obscure writers were there, yes, but जो ब्रिटिश के क्वेश्चंस आए थे जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस थे वो इजी थे and there were a lot of match the following questions. Okay, so Frankenstein, Modern Prometheus, C का first and that gives us the answer. A का fourth हो जाएगा The Two Nations, B का third हो जाएगा which is sorry सी का फर्स्ट हो जाएगा अच्छा ए का फोर्थ द वीवर ऑफ Ravello and Oliver Twist the Parish Boys Progress. Can you tell me whose work is Sybil, guys? Can you tell me whose work is Sybil?
सिबिल किसका वर्क है ये मुझे बताओ। हम्म। यस, सिबिल किसका वर्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको मैच करना है। He turned his back on the 2 decades of hypocrisy. The Welsh traditions of the power of spoken word are present in his poetry. He is identified as a representative middle bro voice of the present, adjusting to the past. His poetry plays with and against romantic tradition in poetry. अगर आपको याद होगा, the correct answer will be D का थर्ड होगा, as I told you guys. अगर आपको याद होगा, फिलिप लर्किन के बारे में हमने पढ़ा था। ही बिलोंग टू द मूवमेंट पोएट्स, डू यू नो, ही बिलोंग टू द मूवमेंट पोएट्स। एंड मूवमेंट पोएट्स मैंने आपको बताया था वर द वंस जो कि रोमांटिसिज्म की एक्सेस को अगेंस्ट भी थे, बट उसके उसको कहीं ना कहीं एम्फोसाइज एम्फोसाइज नहीं, बट इमोशनल एक्सेस के अगेंस्ट थे, रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट नहीं थे, इमोशनल एक्सेस के अगेंस्ट थे। सो ये वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा इन्हीं के साथ मैच कर रहा है, क्योंकि रोमांटिक ट्रेडिशन से एसोसिएटेड अगर कोई था, उसके विद इन अगेंस्ट से एसोसिएटेड कोई था, तो इन चारों में लर्किन का ही नाम आएगा। सो एक भी अगर आपको आंसर यहाँ पे पता था, वहां से भी आप दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते थे। तो सी विल बी द आंसर। यस, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ कि राइटर को जानो, ये जो इंफॉर्मेशन है इनको मगअप आपको फैक्ट्स की तरह नहीं करना होता है। यू एक्चुअली नीड टू नो, कनेक्ट थिंग्स, ओके, ब्रिंग सम लॉजिक बिहाइंड योर आंसर्स। ओके। Cynthia's Rebels, The Maid's Tragedy, Women Beware Women, Shoemaker's Holiday. Easy question है, direct question है. The correct answer is A का second, Cynthia's Rebels is by Ben Jonson. And again, June का question है, okay? The Maid's Tragedy, B का fourth, Beaumont and Fletcher. We have Women Beware Women by Thomas Middleton and Shoemaker's Holiday by Dekker. By Thomas Dekker. Okay? Okay, which of the following rules are correct regarding formatting of date and time in the body of thesis writing according to MLA Handbook 9th edition? अच्छा, एक और चीज गाइस, आपके जो क्वेश्चंस आएंगे ना MLA वाले, वो 9th edition से ही आ रहे हैं। 8th edition इज ओल्ड न्यूज नाउ, तो 8th edition की रिलेटेड इन्फो को आपको नहीं याद रखने की नीड, आप 9th पे फोकस करना। Okay, when using the month, day, year style in prose, a comma must be placed after the year unless another punctuation mark follows it. Use a comma between month and year or between season and year. Decades can be written out or expressed in numerals. Spell out centuries in uppercase letters. Numerals are used for most times of the day. Generally use the 12-hour clock system in prose. A, C and E are correct. ये correct है, ये correct है and ये correct है. ठीक है? Yes. So C will be the answer. Who among the following is considered the father of South African English poetry? It is Thomas Pringle, guys. B is the correct answer. Next. Arrange the following works of story in their chronological order of publication. जॉन स्टोरी के वर्क्स को आपको क्रोनो में अरेंज करना है। मैंने अपने कल्चरल थ्योरी वाले सेशन में आपको स्टोरी के कॉन्सेप्ट्स पे भी क्वेश्चंस कराए थे। उन्होंने पोस्ट मॉडर्न सॉरी पॉपुलर कल्चर के बारे में काफी ज्यादा बात करी है, तो उनकी कॉन्सेप्ट्स को याद रखना, ठीक है। उन्होंने 7 डिस्टिंक्शंस हमें दिए थे ऑफ पॉपुलर कल्चर। यस, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है द ईयर्स, मैंने यहाँ पे एक टेबल ऐड कर दी है। अच्छा, देयर इज अ स्लाइट अपडेट इन दिस, ये स्लाइट अपडेट है। यहाँ पे इनिशियली ना मैंने इस वाले वर्क को नीचे लिख रखा था, यहाँ पे आई रीचेक्ड गाइस, इट इज 1999, सो प्लीज इसको नोट कर लेना, ये एक अपडेट है इन द लिस्ट। कल्चरल थ्योरी वाले सेशन में मैंने जो आपको टेबल प्रोवाइड करी थी, उसमें एक स्लाइट अपडेट है, ओके। दिस इज इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए मैं आपको अलग से बता रही हूँ। इस पर्टिकुलर टेबल को एक बार रिविजिट कर लेना, ओके। दिस इज द अपडेटेड टेबल, ओके। चलो, अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स क्रोनोलॉजिकली। Arrange the following works chronologically. The Heart of Hindustan, Occasional Speeches and Writings, Eastern Religions and Western Thought,
Dhanutpada or the personal Upanishads? The correct answer will be D. A, C, D, E, B will be the answer again. Couldn't exactly find the exact years of all these works, so मैंने सिर्फ आंसर डायरेक्टली ऐड करा है. ये जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली मैंने ये ऐड कर दिया है. But again, guys, I'm not very sure about the years of these works. I am giving you a disclaimer, not very sure about the years, because इनके years आपको authentically ऑनलाइन नहीं प्रोवाइड होते हैं. ठीक है, चलो. The study of how human beings acquire language and how we use language to speak and understand is called. कैसे हम acquire कर रहे हैं और कैसे हम use कर रहे हैं has everything to do with our psyche. So psycholinguistics will be the answer. Okay, has everything to do with our psyche. In how many volumes George Eliot's Middlemarch was first published? 8 separate volumes were there. Okay, चलो. Arrange the following statements in chronological order. Okay, यहाँ पे अरेंज करना है. अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, राइटर्स वर्कशॉप इज बाय हु इज एसोसिएटेड, पी लाल इज एसोसिएटेड, एंड पी लाल आपके एक ऐसे राइटर है जो बहुत लेट आएंगे क्रोनो में. ठीक है, तो पी लाल से एसोसिएटेड अगर कोई पब्लिशिंग हाउस है तो वो ऑब्वियसली बाद में आएगा. तो सी आर मैंडी बिकेम एडिटर ऑफ द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया. This is all the hint that I could give to you people. D और A में कंफ्यूजन चल रही है. द करेक्ट आंसर विल बी बी गाइस. DBAC. सबसे पहले CR मैंडी became the editor of the Illustrated Weekly because this is a very early periodical journal you'll find. फिर आएगा आपका B, the Illustrated Weekly of India sponsored a short story. फिर उसके बाद आएगा आपका A, नसीम इजिकल, एंड देन योर C, विच आई टोल्ड यू कि ये आपके बहुत लेटर ऑन आते हैं, पी लाल. तो राइटर्स वर्कशॉप बाद में आएगा, ये मैंने आपको पहले ही हिंट दी थी. Which of the following works is written by Joseph Conrad? Amongst the 4 works, A will be the answer. The Tales of Unrest is a work by Joseph Conrad. Arrange the following novels in chronological order as per their year of publication. Just half an hour more, guys, then we'll take a break, okay? तो हम लेंगे 5 minutes का break लेंगे. 5 minutes break तब होगा, but half an hour more. Yes. The correct answer will be option number D. Two Leaves and a Bird, 37, Mulkraj Anand. So Many Hungers, 47, Bhavani Bhattacharya. Waiting for the Mahatma, this is a very important work, 55 by R.K. Narayan. We have The Serpent and the Rope by Raja Rao, 1960, and A Bend in the Ganges, 64, Manohar Malgonkar. ये सारे ही इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं. मैंने आपको इंडियन वाले सेशन में बहुत बारी ऐसे वर्क्स इधर उधर कराए हैं, एंड मैं ईयर हमेशा मेंशन करती हूँ अपनी पीडीएफ्स में. यस, बताओ. जस्ट 5 minutes. मेरी सोचो. 5 minutes is a lot, okay? 5 minutes, because in 5 minutes I can go and get my coffee. So इसलिए 5 minutes. Okay. Match the works, guys. Louis Reynolds Care, Dorothy Livesey, Gwen and Carol Bolt. The correct answer will be option number A. A का second है Guest of Honor. Now, the catch is, guys, जब भी ऐसे कोई नए नाम हमें दिखे, नए वर्क्स हमें दिखे, our responsibility is to try to remember it. No pressure. नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है. सो ट्राई टू रिमेम्बर दिस. मैं यहाँ पे ये इन्फो 2 सेकंड के लिए छोड़ देती हूँ, इसको याद रखो. ठीक है, चलो. Alright, thinking about women, the female eunuch, the dialect of sex and the feminine mystique. Easy question है ये. मैरी एलमिन के बारे में मैंने आपको फेमिनिज्म वाला जो हमारा सेशन था
लिटरेरी थ्योरी वाले सेशन में फेमिनिज्म के क्वेश्चन से मैंने मैरी एलमन पे आपसे क्वेश्चन पूछा था. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. ए का सेकंड हो जाएगा थिंकिंग अबाउट वुमेन, मैरी एलमन. वी हैव बी का फोर्थ जर्मेन क्रेर. द डायलेक्ट ऑफ सेक्स इज बाय शुलेमित फायरस्टन एंड फेमिनिन मिस्टेक इज बाय बेटी फ्रिडन. ओके, चलो ये सारे की वर्क्स हैं. Identify the correct chronological order as per the publication years of the following works. अच्छा, अब इसमें ना इजी पार्ट मैं बताती हूँ. अभी हमने पीछे बेकन का क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो. बेकन के क्वेश्चन में हमने एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग किया था एंड प्लान ऑफ अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. दिस इज सैमुअल जॉनसन्स डिक्शनरी गाइस. तो जॉनसन की डिक्शनरी कब आई थी? 1755 में आई थी. इससे ज्यादा मैं हिंट नहीं दे सकती. अब आगे खुद से करो. डी, BACD आप कह रहे हो. द करेक्ट आंसर विल बी BACD. एब्सोल्युटली राइट. सो जॉनसन 1747 में उन्होंने प्लान दिया था अपनी डिक्शनरी का प्लान. अगर आपको याद हो 1746 में उन्होंने कंपाइलेशन स्टार्ट करी थी. प्लान उन्होंने 47 में दिया. एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1605 बाय बेकन सबसे पहले आएगा. दिस इज बाय शाफ्ट्सबेरी. दिस इज बाय फ्रांसिस हचिंसन. ये लेसन नोन वर्क्स हैं बट नाउ यू नो द क्रोनो. अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ क्रिटिसिज्म chronologically. Hmm. Should be option number. The correct answer will be. Okay, हो गया fix, हो गया fix, हो गया fix, हो गया fix, guys. Look at the table. Okay, the correct answer is D. And ये table एक बार आप देख लो. Yes, हम सब buffer में suffer कर रहे हैं. I completely agree with you. बहुत दिनों से हम buffer में suffer कर रहे हैं. Okay, so read the following statements carefully and find out the correct ones. Geoffrey Chaucer wrote the Canterbury Tales, Troilus and Cresside, Legend of Good Women. Correct. Milton wrote the Mask of Comus, Astrophil and Stella नहीं. पैराडाइज लॉस्ट लिखा है बट एस्ट्रोफिल इन स्टेला उनका वर्क नहीं है. किसका वर्क है? सिडनी का है, स्पेंसर का है? ये मुझे बताओगे. सिडनी और स्पेंसर किसका वर्क है? एस.टी. कॉलरिज, द राइम ऑफ एंशिएंट मैनर, क्रिस्टोबल एंड कर्स ऑफ कियामा. करेक्ट. टू जेंटलमैन ऑन अ रेप ऑफ लुक्रीसी, ट्रोइलस एंड क्रिसिडा. यस. नंसियार, रिवर द लॉक, एपिस्टल. ओके, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा आपका. क्रिस्टोबल एंड द कर्स ऑफ कियामा. द करेक्ट आंसर विल बी A, D एंड E बिकॉज दिस इज रॉन्ग. द कर्स ऑफ कियामा इज नॉट अ वर्क बाय हिम. Yes, Sydney का work है Astrophil and Stella. Identify the subtitle of Oliver Goldsmith's semi-autobiographical poem, The Traveller, a prospect of society, the citizen of the world, the fashionable lover, or an ancient epic poem. The correct answer is a prospect of society. मैं आप लोगों को ये questions अपने session में भी कराती थी. Complete title बताओ work का. ये complete title आपके बहुत बारी exam में आता है. Okay, चलो. I need to go and buy myself a pair of specs. मैं कल जाके कल शाम को जाके I'll buy a pair of specs guys because it's very difficult for me to read your comments also. मुझे बार-बार आगे आना पड़ रहा है read करने के लिए. And I feel my eyesight is deteriorating with every passing day. If the glide is distinct enough to be heard, the vowel plus glide will be treated as. We are exposed to so much light and our screen time is insane. My laptop screen time is, I guess, in a day I look at the laptop for good 8 hours. सी अ सीक्वेंस ऑफ टू वाउल्स. ठीक है, परफेक्ट. इसलिए मैंने मोनोथॉर्म का क्वेश्चन ऐड करा था अपने सेशन में लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स में. ओके, फॉर Arnold, culture is the ability to know what is best, the ability to know what is worst, the mental and spiritual application of what is best, the pursuit of what is best, the pursuit of what is worst. The correct answer is A, C, and D. Okay, A, C, and sorry, D. Yes. Arrange the following works of feminism in chronological order.
Yes. Okay. Arrange the following works of feminism in chronological order: The Female Imagination, The Mad Woman in the Attic, A Literature of Their Own, Women's Oppression Today, and a Revolution in Poetic Language. The correct answer will be C. EACBD. यहाँ पे मैंने अरेंज करके आपको दे दिया है. Revolution in Poetic Language by Christopher 74. Female Imagination by Patricia Mayer Spacks 75. Literature of Their Own, Showalter 77. Mad Woman in the Attic by Gilbert and Goober 79. And Women's Oppression 1980. Choose the statements given by Virginia Woolf about women. She's born stupid, can do nothing but stupidity. Obviously, not something which Virginia Woolf would ever say. She dominates the lives of kings and conquerors in fiction. She pervades poetry from cover to cover. She's all but absent from history. She criticized Shakespeare for being harsh and rude to his female characters. In real life, she could hardly read, could scarcely spell, and was the property of her husband. So B, C, and E will be the answer. Okay. बिकॉज बहुत ऑब्वियस है कि ए तो आपका आंसर नहीं होगा एंड शेक्सपियर वाली स्टेटमेंट ऑल्सो सीम्स अ बिट ऑड. यस. हु डिस्क्राइब राजा राम मोहन रॉय एज द इनॉग्रेटर ऑफ द मॉडर्न एज इन इंडिया? रविंद्रनाथ टैगोर, वेंकटा बोरिया, महात्मा गांधी और ज्योतिबाई फूले. बताओ. इट इज टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर. एब्सोल्युटली राइट. According to 1991 census, languages are considered scheduled languages. Languages are considered scheduled languages. How many languages? 18 will be the correct answer. Read the following statements carefully and choose the correct ones. Yes. Just a few more minutes, guys. We'll take a break then. 20 minutes more. We'll take a break. Mikhail Bakhtin traces the roots of the novel back into the imperial Rome and ancient Hellenistic romances. Henry James considered the novel as the epic of a prosaic modern world. Dodie locates novel's birthplace in the cultures of the ancient Mediterranean. Lewis defines novel as one bright book of life, and Lucas calls the novel the epic of a world abandoned by God. The correct answer is A, C, and E. Okay. Territorialization is a term given by. इसके साथ deterritorialization and reterritorialization भी इन्होंने ही दी है, which is by Deleuze and Guattari. Okay, so D will be the answer. ये तीनों terms इनकी है. Who developed the concept of rhizome भी इन्होंने ही दिया था. Rhizome का concept भी इन्होंने ही दिया था. Schizoanalysis यहीं पे आता है. Who developed the concept of the cultural circuit, which is important to the study of the interactions of culture and memory in oral history method? The correct answer will be Graham, Dawson, and A.I. Thompson. Okay, so D will be the answer. Who among the following Mughal rulers carried out an experiment for newborn babies to be raised in silence only to find that the children produced no speech at all? The correct answer will be Akbar. वैसे टेक्निकली देखा जाए ना तो दिस विल फॉल इन लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स गाइस. ये क्वेश्चन टेक्निकली अगर हमें कहीं पे रखना हो किसी यूनिट में तो लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स में फॉल करेगा बिकॉज ऑफ द आइडिया ऑफ एन एक्सपेरिमेंट विच वाज रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड स्पीच. ठीक है, तो ये आइडियली मतलब अगर रखा जाए तो फिर ये उस यूनिट का क्वेश्चन होगा. यस. मतलब आई फील दैट वाज अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट. ओके. यहाँ पे एब्रीविएशन से आपको उन्हें मैच करना है एंड CIT विच इज साइटेशन का आपका साइन होता है. सो इन द प्लेस साइटेड, सो C का फर्स्ट, सॉरी C का सेकंड एंड आपका आंसर आ गया. A का फोर्थ हो जाएगा एंड द फॉलोइंग. ETAL की फुल फॉर्म क्या है ये मुझे बताना. IDEM हो जाएगा आपका B का फर्स्ट द सेम एंड पैसिम हो जाएगा एवरीवेयर. ETAL stands for what? ETAL stands for what? Do tell me. ETAL stands for what? And others. Okay. You use it when you cite a writer more than two writers basically. दो से ज्यादा होते हैं.
सॉरी 3 से ज्यादा होते हैं तब आप ETL यूज करते हो। चूज द करेक्ट मैच ऑफ प्ले एंड प्ले राइट। हाली, रविंद्रनाथ टैगोर, टाइगर क्लॉ, लखन देव, फ्लूट ऑफ कृष्णा, कृष्ण स्वामी, नालिनी एंड हैवदना। हैवदना इज बाय कर्नाड एंड इन्होंने हमसे पूछा है करेक्ट मैच। सो ई तो डेफिनेटली करेक्ट है, तो ये दोनों हट जाएंगे। आपको BC और AD में से डिसाइड करना है। द करेक्ट आंसर विल बी BC। सो दीज आर करेक्ट। अब एक और चीज गाइस, वन मोर थिंग, another moment of silence, because do you remember we just solved this question back in our Jan paper? Match the following. याद है? Yes or no मुझे बताओ। याद है? ये जैन के पेपर में मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आया था, ये कृष्ण स्वामी का वर्क। यस, एक्टर नेटवर्क थ्योरी, कृष्ण स्वामी का वर्क, दोनों रिपीट हुए हैं। मैंने ये बात बोली है कि चीजें रिपीट होती हैं। बहुत सारी ऐसी इन्फो रिपीट हो सकती है इस सेशन से, इसलिए मैं कह रही हूँ लास्ट तक बैठे रहना, सुन लेना। नहीं देख सकते तो सुन लेना, बट रिपीट होती है। ओके, सो इसलिए मैं आपको टाइम दे रही हूँ क्रोनो क्वेश्चंस में कि आप याद कर लो देख के उसको। ओके, सो BCE विल बी द आंसर। चलो, चूज द करेक्ट इवेंट्स। 2 क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं सो फार, इमेजिन। यस। Oh, you people, you people must be traveling also, na? Many of you must be traveling, guys. So while traveling, you are watching this video while traveling. That's commendable. All the best, everyone, guys. All the best. Have a safe journey. Choose the correct events corresponding with their year. मैंने बहुत ज्यादा ही बारी पढ़ा दिया है ये, मैंने बहुत बार पढ़ा दिया है ये। इंग्लिश इन इंडिया क्वेश्चन गाइस, इंग्लिश इन इंडिया का सेशन, इफ यू रिमेम्बर। यस। Chalo. Also, whosoever is watching this video and they have their center in sector 62 Noida, Eon Digital, यहाँ पे जिस जिसका सेंटर है ना, please guys, if you can reach out to me on Telegram, do that. ओके, एंड कमेंट ड्रॉप कर सकते हो तो कमेंट भी ड्रॉप कर देना। ऑल्दो कमेंट के थ्रू मैं रीच आउट नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास आपका डिटेल नहीं होगा, तो आप मुझे टेलीग्राम पे रीच आउट कर देना। आई विल सी यू टुमारो। ओके, आई एम कमिंग टू दिस सेंटर। तो कल मुझे प्लीज मुझे आज प्लीज एक मैसेज ड्रॉप कर देना। जस्ट टेक अ फ्यू सेकेंड्स, प्लीज डू दैट। Okay, so BCE will be the correct answer, guys. 1956 was the year for the Official Language Commission report to be submitted, and uh, which one is incorrect? The National Policy on Education was 1968. ठीक है, चलो। Arrange the following commissions, committees, and events which were important in the context of English in India. I told you people, English in India. Up, guys, I have a feeling. That's my gut feeling. Might be wrong. I hope it's not wrong. But I have a feeling that English in India will be there in your exam tomorrow as well. मुझे एक बार प्लीज टेलीग्राम पे आप अपना नंबर ड्रॉप कर देना। वंस आई बी देयर एंड मुझे पता होगा कि whom to look for. How else will I find you? I haven't seen your face, na? Okay. Arrange the following commissions, committees, and events which were important in the context of history of English in India in chronology. Okay, the correct answer will be All India English Conference, All India Language Conference 48, Official Language Act 68, Kothari Commission 64, 66. Sorry, 63 है इसका year. Sorry. Koka Committee 66 and your Acharya Ramamurthy Commission 1990. Okay. Okay. One day I wrote her name upon the sand, but came the waves. Okay, okay. Another important point, guys. The curfew tolls the knell of parting day. I told you people, this is a very important line and आपके एग्जाम में एक बार नहीं आई है, multiple times आई है. So C will be Thomas Gray's work, elegy written on a country churchyard. So C का first हो जाएगा, which leaves us with two options, A and B. अब आप बताओ.
Yes, Gaurav. Plan of Action 1992. POA was 1992. Yes. Remember how we picked the daffodils? Nobody else remembers, but I remember. Under the Greenwood tree, under the Greenwood tree, guys, who used to talk about the Greenwood tree? It was in William Shakespeare's works where Greenwood tree has been mentioned. Okay, तो इसमें mention है आपके as you like it में mention है. Yes, exactly. Under the Greenwood song, it is again okay. So I'll after our exam happens and जो लोग जून का पेपर जो एम कर रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए ना ये सेशंस लाऊंगी. आई यूज टू डू these story telling sessions on YouTube, and where I used to tell the stories of Shakespeare's plays, and I'll include other writers also. But they were very interesting sessions. Like I used to enjoy them a lot. उसमें मैंने ग्रीनवुड वाला भी पॉइंट मेंशन किया था एज यू लाइक इट में. दिस ग्रीनवुड सॉन्ग हैपेंस. यस. तो ये छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स होती है जो हेल्प कर देती है एग्जाम में. Which of the following works is not written by Cowper? Scenes from Provincial Life, from Married Life, The Field Marshal's Memoirs, and Memoirs of a New Man. C will be the answer. C. Okay. Okay. Thick Description by Clifford Geertz. So ये हो जाएगा A का fourth. And again, guys. Okay. मोमेंट ऑफ साइलेंस बिकॉज डू यू रिमेम्बर अभी हमने जब जैन का पेपर सॉल्व किया तो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में थिक डिस्क्रिप्शन मेंशन था जिसमें मैंने गलती से इसको करेक्ट बोल दिया था क्योंकि क्लिफर्ड गेंट्स करके कुछ नाम लिखा हुआ था. इट वाज इन गर्ल्स, इट वाज गेंट्स समथिंग. सो दिस वाज आल्सो देयर इन योर जैन पेपर, although that statement was incorrect क्योंकि it was by Clifford Geertz, but this was there. Exactly. So another sign, guys, that how important a session is. Okay, vehicle and tenor. Um, okay, fixed, guys, fixed. Okay, restored. All right. So, which are the following? Arrange the following core elements. ये मैंने आपको आंसर बता दिया है. A है इसका आंसर. The correct answer to this. Hmm. Okay. The correct answer will be option number D. C B D E A. Okay. हो कैसा? CBDEA will be the correct uh, arrangement. ठीक है. All right. Poverty and the un-British rule in India. The Slave Girl of Agra. Love Songs and Elegies, and Gora. Gora is a very famous work by Rabindranath Tagore. So D का third हो जाएगा. And इसी से आंसर आ गया आपके क्वेश्चन का. But guys, now that we have seen proofs कि info repeat हो रही है, we can't take chances. तो हम लोग बाकी सारी info को याद कर लेते हैं. So poverty and un-British rule in India will be second, Dadabhai Naroji. The Slave Girl of Agra will be Ramesh Chandra Dutt. Love Songs and Elegies will be Manmohan Ghosh, and this is Tagore. ये हमें पहले से आता है. I know आपको भी आता है. But ये तीनों works, just in case if you are not aware, please take a few seconds and इसको याद कर लो. ठीक है, अभी के अभी याद कर लो, इसको procrastinate मत करो. ठीक है, देख लिया, अच्छे से देख लिया. Shall I move on to the next question? ठीक है. The term remainder has been first used by. Cool. Georgia Agamben, Guy Debord, Jacques Derrida, or J. Habermas. The correct answer will be Derrida. Derrida was the one who used the term remainder for the first time. Yes. C. Arrange the following works of criticism chronologically. Gender Trouble, Feminism and Subversion, um, uh,
History of gay literature, history of sexuality, new lesbian, bodies that matter. Guys, another moment of silence. Why? Bodies that matter. This is the work which we saw in the Jan paper. Didn't we? We did, right? 1993. And gender trouble was also a work which we saw in the Jan paper. 1990. मैंने कहा था रिपीट हो रही हैं, काफी सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। ये फ्रीक्वेंटली रिपीट होने वाले वर्क्स हैं एंड लिटरली आपके कॉन्जिक्यूटिव साइकिल्स में रिपीट हुए हैं। ओके चलो, सो द करेक्ट आंसर विल बी CBADE। ओके, and these are the years for all the works, ये मैंने ऐड कर दिए हैं। So Gender Trouble 1990, Bodies That Matter 93, New Lesbian Criticism by Sally Munt 92, History of Gay Literature by Brian 1988 and History of Sexuality by Foucault 1976। यहाँ पे मैं 2 सेकंड के लिए स्लाइड को रख रही हूँ, आप इसको याद कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। She is a canonical writer, yes, but the whole point is two works of hers repeated in consecutive cycles is obviously a sign. It is a sign. You need to realize that it's important for us to not overlook any information from the June cycle or from any of our recent cycles. इस सेशन में एटलीस्ट वी हैव टू कवर कि हम रीसेंट अपनी 4-5 साइकिल्स को कंप्लीटली कवर अच्छे से करके जाए। ओके, चलो। The term trace, which refers to the trace of the other, has been borrowed by Laka from Levinus. Borrowed from Levinus. Okay? Sure. Arrange the following statements chronologically in order of their appearance in Aristotle's Poetics. The plot is the end at which tragedy aims. Regarding the plot, a whole is what has a beginning, middle, and end. एक बार read करो and answer. Answer करो. B. Alright, the correct answer will be option number D, guys. सबसे पहले A आएगा. The plot is the end at which tragedy aims. Regarding the plot, a whole is what has beginning, middle, and end. The plot of the tragedy should have a unity, then E and then D. The function of the poet is to narrate events such as might occur in accordance with the laws of probability or necessity. The character in question must occupy a mean between these extremes. He must be a man who is not preeminently virtuous, just. एक बारी ना इन स्टेटमेंट्स को अच्छे से देख लो कि किस किस बारे में यहाँ पे पूछा गया है एंड इसलिए मैंने अपने सेशन में आप लोगों को क्वेश्चंस कराए थे। अच्छा, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की ना मुझे याद दिलाना प्लीज, प्लीज रिमाइंड मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप गाइस दैट आई हैव टू शेयर अ लिटरेरी क्रिटिसिज्म फाइल विद यू, जिसमें मैंने आपके ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर के भी क्वेश्चंस ऐड कर रखे हैं, क्योंकि हमारा सेशन उस दिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से सिर्फ आधा हो पाया था ना। आई विल ऐड दैट एज वेल, ठीक है? प्लीज एक बारी उसको हाफ एन आवर देके स्किम कर लेना, ठीक है? स्किम कर लेना, ओनली इफ यू फील लाइक इट, इट्स नो प्रेशर। ओके, क्योंकि ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर से भी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म से भी क्वेश्चन है एंड ये भी आपके जैन के पेपर तक नहीं आ रहा था, 2-3 साइकिल से ये भी आया है इस बारी जून वाले पेपर में। यस, ओके। हु मेड द फॉलोइंग रिमार्क? हु मेड द फॉलोइंग रिमार्क? The Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of wonderful structure. It was William Jones who gave this remark. The Reda's archive figure, a Freudian impression, is related to archival method, biographical, visual, or creative. It is archival method. Who said the Shakespeare was the Homer or father of our dramatic poets? Johnson was the Virgil, the pattern of elaborate writing. बताओ.
B. Dryden. Absolutely right. Okay, Lord Curzon used the report of Indian Universities Commission of 1902. I told you people 1902 मैंने आपको बताया था. Hmm. 19 decentralized school education, give representation to Indians in policy, withdraw Indian Universities Act of 1904. नहीं. 1904 को विड्रॉ कैसे करेंगे? 1902 में ये बात कैसे होगी कि 1904 के कमीशन को विड्रॉ के एक्ट को विड्रॉ कर लो? डी सेंट्रलाइज स्कूल एजुकेशन अंडर अ डायरेक्टर जनरल ऑफ education. Which of the schools of criticism has strongly opposed formalism in both its European and American varieties? Rejecting the view that there is a sharp and definable division between ordinary language and literary language. Marxism, reader response, speech act, new historicism, post-colonialism. Colonialism and Marxism were not the ones exactly जो बात करते थे about language itself. So B, C and D will be the answer. Easy question है. Okay, choose the correct statements. English literature was first offered as a subject of study at King's College. English was first offered as a subject of study in England, only in 28, in the University of Oxford and Cambridge. Though taught as a medium of instruction and a subject of study in India since 1850s, Oxford and Cambridge did not allow the new subject of literature to be taught till the end of the 19th century. In 1931, English replaced the study of classics. Um, till the end of the 19th century, literature meant only the study of great books in classical languages. The correct answer is A, C, and E. Okay. So ये correct है, ये correct है, and ये correct है. Which bibliography is concerned with a close analysis of individual copies of books in the light of our knowledge of how books were produced? And the question is specifically asking you analysis analytical bibliography से ही associate होगा. Enumerative का मतलब होता है list down करना. Okay, descriptive is जब आप provide करते हो the details of the different books, their publication and everything. Historical bibliography is again is associated with the history of the work, history of the publication. Okay. Choose the correct statements regarding scope of linguistics from the following. To describe and trace the history of all observable languages, to determine the force that is permanently and universally at work in all languages, to study manifestations of civilized human speech only, to consider only correct speech and flowery language, to delimit and define itself. A, B, and E will be the answer. ठीक है. सो स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग. ये सारे क्वेश्चंस में आपको कोई प्रायर नॉलेज की नीड नहीं है. यहाँ पे आपको बेसिक लॉजिक लगाना है. यस, यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है. इनमें कोई प्रायर नॉलेज नहीं रिक्वायर्ड होती है. ओके, ये क्वेश्चन करके ब्रेक लेते हैं. सिंस द पब्लिकेशन ऑफ जॉनसन्स प्रीफेस टू शेक्सपियर इन 65, व्हिच ऑफ द यूनिटीज हैव बीन रिगार्डेड एज ऑप्शनल डिवाइसेस available as needed by playwrights in England to achieve special effects of dramatic concentration. Optional किसको बोला गया था? Unity of place and time को optional बोला गया था. उसके बाद चलो अब हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं. ठीक है, 5 minutes break guys. I'll quickly grab my coffee. You also grab something to eat. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा देती हूँ बस, या छोड़ो 5 minutes के बाद ही कंटिन्यू करेंगे. 5 का मतलब 5 नहीं है. मैं कॉफी लेकर आऊंगी जब तक कॉफी लेकर आऊंगी उतना ही टाइम है.
Okay, break over, guys, because there is no coffee available. So, no break. चलो, चलो, स्टार्ट कर रही हूँ मैं वापस से सेशन. Who has described his criticism as a byproduct of his private poetry workshop and as prolongation of the thinking that went into the formation of my own verse. Yes, Shikha, I will definitely, pakka, promise. After the exam, I'll definitely bring all those sessions which you people loved, but they are not there on YouTube anymore. Don't worry, I'll bring them all. Eliot is the answer. D. Eliot ने बोला था ये. Eliot की criticism में fall करती है ये line. Which group of the poets among the known as the Georgian poets? Didn't I tell you people ki it is important for you to remember who are the members of which particular school of poets, कौन से ग्रुप में फॉल करते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है. साक्षी कांट से अभी तो बोला था ना मैंने 9 बजे तक हम हैं यहाँ पे. अगर 9 से पहले कवर कर लिए हमने तो 9 से पहले. अभी तो 2 ही घंटे हुए हैं. अभी तो देर ही है अभी इसमें. ओके, बी इज द आंसर. Who is of the opinion that the concept of ideology is the most important conceptual category in cultural studies? The correct answer is, who is of the opinion that the concept of ideology is the most important conceptual category? It is Graham Turner, sorry. Which of the following is not a distinct discourse analytical research tradition as suggested by Margaret Wetherill, E.T. and others? ETLs and others. Discursive psychology, Bhaktian research, Sassurian research, and Foucauldian research. So, C will be the answer. Yes. Who has coined the phrase bricolage? Who has coined the phrase bricolage? Claude Lewis Strauss, obviously, ये हमने पढ़ा भी था, right? Okay. This given term, Zengzroman, is a term which signifies, it is a German term which signifies novel of education. Okay. So D will be the answer. Choose the correct statements amongst the following. Macaulay was a practical man of affairs, helping and rejoicing in the progress of his beloved country. That is true. He was a practical man of affairs. So A is definitely correct, guys. So we can eliminate C and D. B, C, D में हमारा पूरा. Okay. Ruskin was like a Hebrew prophet just in from the desert, and the burden of his message was, yes, was wow to them, they are at ease in Zion. Arnold was much like the cultivated Greek. His voice was soft, his speech sway, but he left the impression that he must be deficient in culture. Arnold was the one who always left the impression that you must be deficient in culture. And Newman was like the best French prose writer in expressing his thoughts with such naturalness and apparent ease that without thinking of style, we received exact impression which he meant to convey. So A, C, and D will be the correct answer. B is incorrect over here. Arrange the following steps of material collection according to hierarchy given by Delia and Owens in the Handbook to Literary Research. Yes. इस क्वेश्चन में एरर था तो ये इसे हम ड्रॉप कर देते हैं. Kipling's story, Mrs. Bathurst, is set in South Africa. Kipling's story, Mrs. Bathurst, is set in South Africa. Choose the correct definitions of language. Linguistics की definition आई है, language की definition आई है आपके एग्जाम में. Yes. It is D.
A, B, and D. Language uses symbols that are primarily vocal but may also be visual, and its subfields are phonetics, phonology, writing systems, orthography, and non-verbal communication. Language is used for communication, and its subfields are sentence processing, pragmatics, discourse analysis, and conversation analysis. A, B, and D is the correct answer. ठीक है, A, B, and D. Now again, ये वाले questions में भी you don't exactly require prior knowledge. You just need to use your common sense to answer these questions. Yes. Who prepared the first blueprint on English education in India in 1792? It was Charles Grant who prepared the blueprint. So we have already discussed this in our English in India session, guys. Who wrote to the Committee of Public Instruction on introducing English as official language of the government and that of education? Clive, Hastings, Bentinck, or Macaulay? Who wrote to the Committee of Public Instruction? It was Bentinck who wrote. And if you remember, Bentinck के पास ही मिनट्स गए थे मकौले के, एंड बेंटिक ने ही हमारा इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास किया था, okay, which was in the year 1835, guys. Who has coined the term ontotheology? It is Derrida who has coined the term ontotheology. Okay. Name the theory which assumes that culture is not separate from nature, and that there is no hierarchy of actants such that the human is more privileged. Actor network theory will be the answer, because obviously if you do elimination here, adaptation theory, cultural materialism, post-humanism, they have nothing to do with this, to do with the definition in the question. Read the following statements carefully and choose the correct ones. Easy question, super easy question, guys. A mixed metaphor conjoins two or more obviously diverse metaphoric vehicles. Now, let me give you a disclaimer. You will definitely find questions from literary terms and devices in your paper. हो सकता है एक क्वेश्चन हो सकता है दो क्वेश्चन हो या तीन क्वेश्चन हो, बट नहीं हो ऐसा नहीं होगा, ठीक है. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू नो ऑल द लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस विच आर कवर्ड, एज वेल एज जो भी मैंने आपको पढ़ाए हैं एंड जो आपके पास एडिशनल नोट्स होंगे, प्लीज मेक श्योर कि आपको पता है सारे. A mixed metaphor conjoins two or more obviously diverse metaphoric vehicles. A metonymy, a part of something, is used to signify the whole. That is synecdoche. Metonymy नहीं होता, synecdoche होता है part and whole वाला. So B हमारा गलत है, which leaves us with only option number A. मुझे बाकी पढ़ने की भी नीड नहीं पड़ी, मुझे रीड भी सॉरी गाइस सॉरी, मुझे रीड भी करने की नीड नहीं पड़ी, और अपने आप ही आंसर आ गया. ए, डी एंड ई विल बी द करेक्ट आंसर. एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है आपके कैनिंग या मेटोनिमी या फिर सिनेडोकी या मेटाफर यही रिपीट हो जाए आपके एग्जाम में. ओके, नेक्स्ट we have collocation, inflected, polarity, and generative. This is a question from language and linguistics. Okay, बताओ. लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स का क्वेश्चन है. आंसर collocation, inflected, polarity, and generative. So we have um, a term borrowed in the 60s from mathematics into linguistics by Chomsky. That is generative, guys. So D ka first ho jayega. Does that give us our answer? It does. It does. Easy question. Very easy question. Oh, okay. Another feeling. I have a feeling that Chomsky will be asked in your exam. Noam Chomsky. Just my gut feeling. Okay. We have collocation. Was there any question related to Chomsky in our Jan paper, guys? अभी हमने Jan वाले questions कर रहे थे, क्या Chomsky का कोई question हमें आया था? मुझे बताना, I can't recall exactly. Inflected होता है आपका okay, A का third हो जाएगा a habitual association between particular words. Inflected हो जाएगा a term in which a word takes various forms, and polarity हो जाएगा a term for the contrast between positive and negative. In between different polars. Okay, choose the correct chronological order of the given works on post-colonial criticism. Nation and narration. Nation and narration. Moment of silence, please, for another work that has been repeated. 1990 by Homi K. Bhabha. Repeat हुआ है.
ओके, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी स्टडीज, बाकी सारे वर्क्स देखो एक बारी। इनेटनेस वाला था, जनरेटिव बोरोड बाय चोम्स्की, ग्रामर इनेटनेस वाला, आई डोंट रिमेम्बर कोई रिपीट, आई हैव अ फीलिंग कि चोम्स्की पे कुछ तो था हमारे जैन वाले पेपर में भी। Okay. The correct answer will be option number D, guys. In Other Worlds by Spivak, 1987. Nation Narration by Bhava, 1990. Modernity at Large. This is a new work. Arjun Appadurai का work है ये. This is also new. This is also new. तो आपकी responsibility है इन्हें याद करना. I'll leave the screen for a few seconds. एक बार इन्हें देख लो अच्छे से. एक बार इन्हें देख लो. Okay. फिर I'll move on to the next question. चलो. इनका ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आप ये स्लाइड्स देख सकते हो बहुत जल्दी जल्दी अपने फोन में, अपनी गैलरी से देख लेना। सेशन के बाद भी एक बारी फिर नजर घुमा लेना इनके ऊपर से, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चंस के। Who has written the two pillars upon which a theory of criticism must rest are an account of value and an account of communication? Who has said this? The two pillars upon which a theory of criticism must rest are an account of value and an account of communication. Pound is obviously not going to be the answer. Richards is the one who has talked about this. ठीक है? Identify the set of poems written by W.B. Yeats. This is a very easy question. बताओ. The correct answer is obviously Second Troy, Lapis Lazuli, Easter 1917, When You Are Old, D option. Which of the following is not a kind of literary research? Which of the following is not a kind of literary research? Hmm. The correct answer will be experimental research. Absolutely. Experimental research is not a literary research form. Okay? Science में use होता है वो. Read the following statements carefully and find out the correct ones. Lamb was a lifelong friend of Coleridge and a defender of the poetic creed of Wordsworth. He was a friend of Coleridge, guys. This is true. The London crowd, with its pleasure and occupations, never attracted Charles Lamb. Lamb gave us the best pen portraits of Coleridge, Hazlitt, Landor, Hood, and many more of the interesting men and women of this age. He wrote essays of Elia, tales from Shakespeare, and the revolt of the Tartars. He was especially fond of old writers and was apparently unable to express his new thought without using their old, quaint expressions. A, C, and E are correct, and A. These are correct. ठीक है? चलो. According to Ferdinand de Saussure, what is the minimum number necessary to complete the speaking circuit? It is 4, guys. 4 is the minimum number. Yes. So 4 will be the answer. Next, match the following है ये. Match करो. Easy question है. Revolt of Tartars is a work by Thomas de Quincey का work है. Revolt of Tartars is a work by Thomas de Quincey. ठीक है, इन्हीं का वर्क है जो पीछे आपने देखा था, चार्ल्स लैम्ब के एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ था. डिक्विंसी का वर्क है. वेरी गुड कैच, ये भी रिपीट हो सकता है. ओके, सो ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन एलिजा, इन मैकबेथ, सी का फर्स्ट हो जाएगा, which gives us D as the correct answer. Okay, please guys look at these works properly. This can be repeated. So A का third है John Milton. We have Liberty of the Press, which is a political work written by him. B का fourth है Joseph Addison. We have on the knocking De Quincey and Mental Slavery of Modern Workmen, John Ruskin. Okay, match these works.
यस, इन्हें मैच करो। जॉन ग्रॉस, वेंडी मार्टिन, जॉर्ज सेन्सबरी एंड रिचर्ड ए लालम। द करेक्ट आंसर विल बी ए का सेकंड है द ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ एसेज। Wendy Martin is essays by contemporary, George Sainsbury this and this, analyzing prose. Look at these works once. एक बार देख लो इन्हें, फिर I'll move on to the next question. Okay, arrange the following stages of the first language acquisition schedule in its chronological order. The two-word stage, the telegraphic stage, the one-word stage, cooing, babbling. सबसे पहले cooing आएगा, फिर babbling. So D and E. So D will be the correct answer. Okay. Choose the correct statements. Miller's play The Crucible was first written in verse. The American Dream is a play by Albee about the absurd situation. Read the statements and tell me the answer quickly. अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस अपने नजर से घुमाने हैं गाइस, सो वी नीड टू speed up a little. A, B, and E will be the correct answer. A is correct, B is correct, and Miller's play The Price explores the extent to which we retrospectively invent our own history is also correct. Okay, feminism and gender studies पे question है. Feminism is concerned with the marginalization of women in patriarchal culture. Absolutely wrong. So A आपका गलत है. Okay. फेमिनिस्ट क्रिटिक्स एक्सप्लेन्स हाउ द सबऑर्डिनेट बी दोनों में ही आ रहा है तो पॉइंटलेस है रीड करना उसको. डी दोनों में है, सी और ई को पढ़ते हैं. मैरी वुllstonecraft डिफाइंस फोर मॉडल्स ऑफ सेक्सुअल डिफरेंस एंड सिमोन de Beauvoir prefers feminism to feminism. ऐसा कुछ भी नहीं है. सो सी विल बी द करेक्ट आंसर. सो बी सी डी विल बी द, रुको, ए बी डी, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. Feminism is concerned with the marginalization of women in patriarchal culture. Okay, okay. I thought it marginalizes. Okay, so A will be the correct answer, guys. A, B, and D हो जाएगा. A, B, and D. My bad, my bad. I read the statement wrong. Okay. Which of the following critics are associated with the Frankfurt School of German intellectuals? Frankfurt School was in Germany, and which all intellectuals were a part of it? Benjamin, Laura Mulvey, Travis Henderson, Max Horkheimer was the director. So obviously he was a part. तो आपका D eliminate हो जाएगा. The correct answer will be A, D, and E. Okay. Benjamin, Horkheimer, and Leo. A, D, and E. The term chronotype has been coined by, it has been coined by Mikhail Bakhtin. Okay. All right. Surprised by Sin, The Reader in Paradise Lost is a work by Stanley Fish. So A का second. And this leaves us with two options. Rest आप match करो. Five readers reading, ये भी मैंने आपको recent अपने session में पढ़ाया था. The reader that takes the poem with respect to readers. The correct answer will be second option. Yes. Second option, A का second, B का fourth, C का first and D का third. ये एक बार देख लो आप and then I'll show you the next question. Yes. Who amongst the following attempted to reconcile discrepancies between various classical authors such as Plato, Aristotle, as well as between philosophy and poetry? It was the Neoplatonists who were the ones who talked about it, who attempted to reconcile discrepancies. अब अगर आपको ये याद हो, नियोप्लेटोनिस्ट पे मैंने आपको recent session में एक question पूछा था about the founders of Neoplatonists. When I asked you about the founders, I also gave you information that Neoplatonists not only carried forward the ideas of Plato, but also they tried to synthesize it with Aristotelian ideas, Longinus's ideas, etc., etc. तो ये तब हमने Platonus was the founder, absolutely Platonus जो हमने पढ़ा था. तो ये बेसिक इन्फो वहां जो हमने पढ़ी वो यहाँ पे आपकी पूछी गई है. Okay, which of the following statements have been given by J.S. Mill in his The Subjection of Women? The husband was called the lord of the wife. She is a slave of any boy whose parents forces a ring upon her finger. A, C, and D are the correct answer, guys. A correct है, C correct है, and D correct है. The wife is the actual born servant of her husband. Okay. We have to match the characters with the novels. We have Connie and Millers.
दीज आर कैरेक्टर्स फ्रॉम लेडी चैटर्लीज लवर। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी कराया है। उर्सुला इज अ कैरेक्टर इन विमेन इन लव। ओके, सो वी हैव सी का सेकंड एंड उसी से, अच्छा ये दोनों हट जाएंगे। बताओ। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ए का फोर्थ हो जाएगा द रेनबो। उर्सुला इज ऑल्सो अ कैरेक्टर इन विमेन इन लव वैसे, बट सिंस हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक कैरेक्टर है विच इज मिरियम फ्रॉम विमेन इन लव, तो इसलिए हम उर्सुला को रेनबो से मैच कर देंगे, क्योंकि रेनबो टॉक्स अबाउट 3 जनरेशंस, 3 जनरेशंस के बारे में बात करता है, इसमें लास्ट जनरेशन उर्सुला वाली जनरेशन होती है जो कहानी विमेन इन लव में कंटिन्यू होती है। कॉनी ये है एंड ये आपका सन्स एंड लवर्स। ठीक है, सो डी का, सॉरी सॉरी गाइस, डी का थर्ड है। पॉल इज अ कैरेक्टर इन सन्स एंड लवर्स, दिस इज इन लेडी चैटर्लीज लवर। बी का फर्स्ट है गुडरिन एंड दिस इज रिन, उर्सला। Okay. Identify the poem in which the following line occurs. My babe so beautiful, it thrills my heart. My bad, guys, my bad. Okay. My babe so beautiful, it thrills my heart with tender gladness, thus to look at thee. A prayer for my daughter, Frost at Midnight, Lucy Gray. Frost at Midnight will be the correct answer. Whose work is this? Can you tell me? Frost at Midnight is a work by. Yes. Okay, following statements are given by Barbara Johnson about deconstruction. Directly हम answer देखते हैं. A, B and D will be the answer. Deconstruction is not synonymous with destruction. The deconstruction of a text does not proceed by random doubt. And if anything is destroyed in deconstructive reading, it is not the text, but the claim to unequivocal domination. 2004, guys. Okay. 2005 के आपके जैन एंड जून का पेपर डन हो चुका है। 4 के क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। पोर्टमांटा, फिलोलॉजी, फेटिक लैंग्वेज, फैंटम वर्ड। मैंने आपको फेटिक लैंग्वेज पे भी क्वेश्चन कराया था, फिलोलॉजी पे भी कराया था, फैंटम वर्ड पे भी कराया था। सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। सो पोर्टमांटुआ इज यूज्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग एन एटमॉस्फेयर। नहीं रुको, अ वर्ड combined, word formed by combining 2 or 3 words. So A का थर्ड हो जाएगा, B का फर्स्ट, C का सेकेंड एंड D का फोर्थ. Which of the following statements are true about Bhavabhutis Uttarmacharita? Oh, sorry, Uttarmacharita. Uttarmacharita. Yes, finally, 2025 is over, guys. Yes. June wasn't tough, right? Okay. A moment, I would want to take a moment to have a conversation. जून का पेपर में आप लोगों को क्या सब कुछ डिफिकल्ट लगा? लाइक कंप्लीट पेपर आपको लगा कि वो पेपर मतलब पास ही नहीं करा जा सकता, वैसा पेपर था वो? अभी हमने सारे क्वेश्चंस करे जून के पेपर के। फ्यू क्वेश्चंस यस वर डिफिकल्ट गाइस, बट अगर आप उनको हटा दोगे ना तो भी आप क्वालिफाई कर सकते थे। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं अगर वो सारे आप सही कर देते तो। चलो, okay, the correct answer will be option number fourth. A, C and D are the correct answer. So A हो जाएगा आपका, C हो जाएगा and D हो जाएगा। ठीक है, चलो। Arrange the following works by South Asian writers in the correct chronological order. Arrange करो। I would say it was easy. Easy तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, बट हाँ ट्रिकी था और लेंदी आप कह सकते हो बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट्स। हम्म Okay, the correct answer will be option number fourth, ADBEC। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं सारे वर्क्स के ईयर्स, आप एक बार देख लो। ठीक है, चलो।
Okay, Raymond Williams. Okay, in my recent session on cultural theory, I remember telling you people this one-dimensional man by Herbert Marcuse. इसे भूलना मत. Important है. Richard Hogarth का The Uses of Literacy. So D का fourth and B का third. And this gives us second option. A का second हो जाएगा Preface to Film and Jameson का Postmodernism or the Cultural Logic. Okay, ये important works हैं, इन्हें याद रखना. Who among the following was not associated with Bloomsbury Group? Wolf, Kinney, Strachey or Husserl? Obviously, the correct answer will be option number. One second. The correct answer will be option number 4, Edmund Husserl. Edmund Husserl was not a part of the Bloomsbury group. ठीक है, ये ब्लूम्सबेरी जैन के पेपर में भी आया है. Okay, another thing that you need to check over here and see a pattern. जैन के पेपर में, जो जैन में पेपर हुआ था in 2025, which was basically the December 2024 पेपर, उससे जस्ट पहले वाली साइकिल में आपको मिलेगा, जस्ट पहले वाली या उसी ईयर की साइकिल में ये क्वेश्चन आया ब्लूम्सबेरी, एंड इसमें भी ब्लूम्सबेरी का क्वेश्चन था, इसमें ही ब्लूम्सबेरी का क्वेश्चन है. सो रीसेंट साइकिल्स में ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं. Alexander Pope's famous quote, "A little knowledge is a dangerous thing," it has been taken from which of the following works? It has been taken from Essay on Criticism, first option. ठीक है? Yes. चलो. Okay. Which of the following citations of an article published in a journal is the correct format? Is in the correct format? The correct answer will be option number 4. एक बार इसको देख लो, इसका फॉर्मेट करेक्ट कैसे है. Box, Colin, Glennie, Public Reading and the Civil War Draft Lottery is in double quotations. American Periodicals is in italics. Volume का short form 26, number 2, 2016 and page number 49 to 66. Absolutely correct format. Which among the following novelists remarked that falsehood is so easy, truth so difficult? Examine your words well, and you will find that even when you have no motive to be false, it is a very hard thing to say the exact truth, even about your own immediate feelings. It was George Eliot who said the given line. Guys, look at this question. Is this easy? How could you have known Eliot की कोई एक saying? Eliot is not even a थ्योरिस्ट. इलियट की सेइंग अगर आपके एग्जाम में आई है, शोज के हर एक एग्जाम में अपने टफ क्वेश्चंस होते हैं, अपने शेयर ऑफ टफ क्वेश्चंस होते हैं, राइट? चलो. ओके. Which of the following are correct? Diegesis is a term used by Plato to mean statement and Aristotle to mean narration. Foucault's term biopolitics refers to the attempts of the government to rationalize the problems. Hypertext is a term that refers to second degree literature. Desiring machines is a concept by Gramsci. Dream work is a psychoanalytic term to describe the mechanism. Dream work के बारे में किसने बात करी है? फ्रॉइड ने बात करी है. ड्रीम वर्क, ड्रीम एनालिसिस, एवरीथिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में. BCE will be the correct answer. B is correct. C is correct. Hypertext and hypotext के बारे में किसने बात करी थी? Can you tell me? Hypertext and hypotext was by Gerard Genet. Gerard Genet. ठीक है. ये भी रिपीट हो सकता है, ये भी रिपीट हो सकता है. एंड E is also correct by Freud. Which of the following wrote fall under the category of LGBTQ? Which of the following works fall under the category of LGBTQ? बताओ. The correct answer. Hmm. Desiring Machine is by Guattari, Deleuze and Guattari. जिन्होंने टेरिटोरियलाइजेशन, डीटेरिटोरियलाइजेशन एंड रीटेरिटोरियलाइजेशन दिया था, उनका कॉन्सेप्ट है डिजायरिंग मशीन. ओके, ये भी याद रख लेना, ये भी रिपीट हो सकता है. ओके, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज BCD, गाइस. नेक्स्ट. Who among the following stated that true philosopher and the true poet are one and a beauty, which is truth, and a truth that which is beauty is the aim of both? Wow, that is quite a statement. The correct answer to this is Emerson was the one who gave this. Okay, Emerson is an American writer who is a transcendentalist.
Who among the following called Dryden as the father of English criticism and aimed that modern English prose began with Dryden's essay? It was Johnson who said that. So C will be the answer. C. What does an eponymous character mean? What does an eponymous character mean? An eponymous character gives his or her name to the title of the work. So B will be the answer. Easy question. Who among the following writers have played a significant role in the Australian Aboriginal movement? मैंने आपको बोला था अभी हम थर्ड साइकिल तक ही पहुंचे हैं एंड थर्ड साइकिल के अंदर दो बारी हमें ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल क्वेश्चन मिल चुका है. सो इट इज नोनुकल, वी हैव केविन गिलबर्ट, सो बी एंड ई ये हट जाएगा, ये हट जाएगा. C, David Malouf is not, so Jack Davis will be the answer. The correct answer will be B, C and E. ठीक है, चलो. Who among the following apply the term literary to the literary context? Stream of consciousness. Stream of consciousness term किसने यूज करी थी in the literary context? मे सिंक्लेयर ने यूज करी थी. कॉइन किसने करी थी? विलियम जेम्स ने करी थी. सबसे पहले लिटरेचर में नॉवल में किसने यूज करी थी? डोरोथी रिचर्डसन ने करी थी. पॉपुलराइज किसने करी थी? वर्जीनिया वुल्फ ने करी थी. ओके. Who among the following writers were associated to Harlem Renaissance? इसमें से कौन कौन हार्लेम रेनेसा से एसोसिएटेड है? ह्यूक्स आपने सुना होगा, बहुत फेमस नाम है ऑफ एसोसिएटेड विद हार्लेम. वी हैव एलन लॉक एंड हर्स्टन, ये तीनों. वी हैव कॉलिन आल्सो, सॉरी वी हैव कलिन आल्सो. कलिन इज आल्सो एसोसिएटेड. Which text among the following is the sequel to Louisa Mary Alcott's play Little Women? It is Jo's Boys. नहीं, रुको. I think there's a error to this question, guys. Good vibes तो नहीं है. ये वाला skip कर दो, ये वाला skip कर दो. Okay, which statement rightly define or describe utopia and dystopia? Yes. Which statement rightly define utopia or dystopia? Sir Thomas More's Utopia is an essay in 4 books. More was the first to apply utopia to literary genre. More's Utopia was originally written in English. Orwell's 1984 and Huxley's Brave New World are dystopian. More's Utopia was translated into French, German, and Spanish by Ralph Robinson. The correct answer is B and D. Okay? Yes. Oh my god, disgusting. Guys, please ignore it. Please ignore it. Please ignore. Someone needs to get a life here. Just a spammer. Just a jobless spammer. Ignore him. Yes. Just block this person. Move on. Okay. Arrange the following text in the correct chronological order of their publication. इजी क्वेश्चन गाइस, बिकॉज बेवुल सबसे पहले आएगा, सो दो ऑप्शंस ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे. ठीक है. Yes, the correct answer will be option number third, BD. Fairy Queen, we have Endymion, we have your Pilgrim's Progress, and then your sorry, Endymion आपका लास्ट में आएगा because it's a romantic literature work. So this will be the sequence. If you want to look at it, देख लो एक बारी. But ये easy question है, तो I don't think so इतनी टाइम देने की नीड है इस पे. हाँ, चलो. Sir Thomas Browne's longest work, Vulgar Errors, is about. So Thomas Browne's longest work, Vulgar Errors is about vulgar beliefs and practices of the time. Arrange the following children's book in the correct chronological order. Arrange these works in the correct chronological order, guys. And the correct answer will be first DCEBA. मैंने यहाँ पे years या add कर दिए हैं, एक बार आप देख लो. Okay, all right. Which of the following works are graphic narratives? Graphic narrative वाला question भी आपके 2 cycles में
कॉन्जिक्यूटिवली रिपीट हुआ है, ग्राफिक नैरेटिव वाला। बताओ। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड ई। Bhimayana, we have Munnu, and we have this side, that side. Who among the following invented Inkscape and Instress? It is G.M. Hopkins. Fourth, which of the following definition statements are correct? The term nation language was coined by Walcott. It was invented by Reimer to convey idea that evil is punished, virtue is rewarded. B is correct. And the question is asking is the correct statement. So, आपका fourth eliminate हो जाएगा. The term neo-colonialism was coined by Guigi wa Thiong'o. Nihilism was a term by Turgenev in his novel Fathers and Sons, and Caxton, in preface to Morte d'Arthur, listed the 9 heroes of late medieval literature. So B, D, and E are correct. ठीक है, ये टर्म याद रख लेना. Nihilism is coined by Turgenev in his work Fathers and Sons. Okay, all right. Who among the following English translators of the Bible was burned to death for his beliefs? However, he is remembered for his careful and important work on translation. The correct answer is option number second, William Tyndale. B. B will be the answer. While documenting, when is a block quotation used in prose? The correct answer is if the quotation runs in more than 4 lines. जब 4 लाइन से ज्यादा होता है तब आप ब्लॉक कोटेशन यूज करते हो. ठीक है, ब्लॉक कोटेशन इज बेसिकली जब आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो एंड वो डबल इंटेंशन के साथ आप उसको शिफ्ट करके कोट्स में उसे सेपरेटली लिखते हो, वो आपके डबल कोटेशंस में नहीं ऐड होएगा. ठीक है, चलो. Arrange the following detective novels of Christie in the correct chronological order of their publication. The correct answer to this question is option number fourth. मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है years. एक बारी इन्हें देख लो. एक बारी इन्हें देख लो. सबका अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा आपका एग्जाम कल. मत लो टेंशन. Which of the following parameters are emphasized in MLA 9th edition? Yes, the correct answer will be option number third, A, B and E. Avoid negatively judging others' experiences. ये 8th edition के बाद जब 9th edition आया था, ये add हुई थी चीजें. Use dictionary to check for offensive terms and make references to identify relevant sources. Who among the following is the author of the implied reader and the act of reading? The implied reader is given by Wolfgang Iser. ये बहुत बार हम कर चुके हैं. So, second will be the answer. Implied author is by Wayne C. Booth. Palindrome is a word or sentence which reads the same both ways, a sequence of clauses which have symmetrical structure. The correct answer is option number third, a word or sentence which reads the same both ways. Okay, so third option. ओके, यहाँ पे हमें मैच करना है कल्चर इंडस्ट्री, कल्चर मटेरियलिज्म. मैंने आपको रिसेंटली याद कराया है बिठा के ये, तो एम और डब्ल्यू वाला अगर आपको मेरा वो ट्रिक याद है, so this is the answer. So Sika first, and we got the answer, guys. It was this easy and this quick. Anxiety of influence, Bloom, dialogism, Bhaktin, culture industry, Adorno and Horkheimer. Okay, Vikram said from Heaven and Lake. From Heaven Lake, this is a travel log by him. So A का fourth हो जाएगा. And we got the answer. Easy peasy. ओके, भैया स्नाइपोल का आपको याद है, मैंने आपको बताया था. अच्छा, नाइफ इनका वर्क था. जोसेफ एंटम, मैंने आपको एक वर्क बताया था, उसी के आसपास नाइफ वर्क भी आया था. ये नाइफ वर्क भी अराउंड उनके मेमोइर सॉर्ट ऑफ ही था. उनके वो जो सारे एक्सपीरियंसेस थे वो फतवा के बाद उसी के बारे में था. झुम्पा लहरी है ये, थुम्पा लहरी नहीं है. आई एम सॉरी गाइस, झुम्पा लहरी. सो झुम्पा लहरी का वर्क हो जाएगा लोलिन. एंड सलमान, वी हैव नाइपॉल, द मास्क ऑफ अफ्रीका. ठीक है, ओके. अरेंज द फॉलोइंग फिलोसफर्स एंड थ्योरिस्ट इन करेक्ट chronological order.
दिस इज वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरिस्ट की क्रोनोलॉजी कम आती है आपके एग्जाम में, तो ये भी आ सकता है वापस से। हाँ, नाइफ मैंने रश्दी का ही तो बताया, यही तो मैंने बताया, नाइफ रश्दी का। ओह सॉरी, मैंने अपने ओके, मैच मैंने गलत कर दिया, बट मैंने बोला सही था। रश्दी का वर्क है नाइफ गाइस, जोसेफ एंटनी रश्दी का है, रश्दी के ऊपर फातवा जारी हुआ था सेटनिक वर्सेस वर्क की वजह से, वो कंट्रोवर्शियल वर्क उनका। ठीक है, द करेक्ट आंसर टू दिस इज ऑप्शन नंबर 1, BDAEC। चलो, which among the following is not a play written by Eugene O'Neill? Which among the following, my bad guys, मैंने बोला सही था, मार्क गलत कर दिया। Which among the following is not a play written by Neil? It is option number 3, The Plow and the Stars. The rest of the works are by Eugene O'Neill. Okay. The poem France and Ode is written by Wordsworth, Coleridge, Blake, or Southey. It is by Coleridge. B. Yes. चलो, okay. Next, Guigi wa Thiong'o, Aimé Césaire, Franz Fanon, and Chinua Achebe. You have to match the colonial writers with their text. The correct answer will be option number 2. A का हो जाएगा 3rd, ये प्लीज यहाँ पे याद कर लेना, ये important है. The language of languages. We have B का 4th, which is discourse on colonialism. We have Fanon toward the African Revolution, and Achebe there was a country. Okay, एक बार देख लो इनको, ये important works हैं. Okay, next question. Who among the following are the recipients of Nobel Prize in Literature? The correct answer is obviously first option तो correct होगा, and we have 2006 में उन्हें मिला था, पिंटर एंड हर्टा मुलर। मैंने आपको ये दोनों का नोबेल प्राइज वाला क्वेश्चन सेपरेटली भी अपने सेशन में कराया था। Arrange the following works in the correct chronological order of their publication. बताओ। The correct answer will be option number first, DAECB। एक बार ये देख लो, मैंने यहाँ पे वर्क्स मेंशन कर दिया है along with the years. आजादी बाय चमन नाहल मैंने बताया था, 4 क्वार्टेट्स उनकी कलेक्शन है, उसका पार्ट था। 75 में आया डिस्टेंट ड्रम, 75 टुमारो इज आर्स, के अब्बास 45, ट्वाइलाइट इन दिल्ली, अहमद अली 1940. The Isles of the King, dramatic lyrics, sonnets from the Portuguese, is by Elizabeth Barrett Browning, Sika first, and okay, मैच करो। The correct answer will be option number 3rd. A का 3rd हो जाएगा. By Tennyson, we have B का 4th. By Browning, this is Elizabeth Barrett Browning, and Poems and Ballads by A.C. Swinburne. Which statement among the following rightly defines an epithet? Epithet is basically your adjectival phrase जो आपके किसी भी noun को या किसी भी verb को basically describe कर रहा है, majorly noun को describe कर रहा है, that is epithet. Which among the following critics stated that the object of studying literary science is not literature but literariness? Literariness की बात किसने करी थी? It was your Roman Jacobson, जिन्होंने literariness के बारे में बात करी थी. ठीक है? So B will be the answer. Okay, according to Dhananjay, there are 5 elements of the plot parallel with the 5 stages of the action. From these respectively arise the 5 junctures. What is the correct sequence of these junctures? बताओ. Second, the correct answer is second. Absolutely right. Very good. Very good, guys. Yes, B will be the answer.
Which periodical was started by Joseph Addison and Steele? Tatler, Guardian, closing of the Spectator. It was obviously Guardian जो उन्होंने start किया था. Together, guys. So Guardian will be the answer. Arrange the following works by Ambedkar in their correct chronological order. Annihilation of Caste was a speech by him 1930s 36 है इसका year. इससे ज्यादा हिंट पे नहीं दूंगी. Yes. बताओ. Okay. The correct answer will be option number थर्ड CBDAE. मैंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आपको ईयर बता दिया था 1936. दिस वाज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय हिम. द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 23. फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम 39. मिस्टर गांधी एंड इमांसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स. बुद्धा एंड हिज धामा 57. What was the immediate motivation for Philip Sidney to write Apology for Poetry as a defense of poetry? It was third, the attack on poetry by Gusson. Okay. Who among the following define taste as that faculty of the soul which discerns the beauties of an author with pleasure and the imperfections with dislike? Who said this, guys? This was said by Joseph Addison. How many nights feature in Edmund Spenser's The Fairy Queen? कितने nights आते हैं? 12 nights are there. ठीक है? Who among the following published a series of essays titled The New Criticism? The New Criticism is a work by Ransom. J.C. Ransom. Very important piece of information. Always asked in your exam. ओके अब ये सारे प्राइजेस आपके कब स्टार्ट हुए थे? नोबेल प्राइज आपका 1901 में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मैंने एक वीडियो करी थी एक्चुअली नोबेल प्राइज पे. उसमें मैंने बताया था अबाउट व्हेन अल्फ्रेड नोबेल वाज द पर्सन जिनके नाम पे नोबेल प्राइज रखा गया था. एंड 1907 में लिटरेचर में सबसे पहले प्राइज मिला था रुडयार्ड किपलिंग को. ठीक है, सो सी का सेकंड हो जाएगा. एंड इसी से आंसर मिल गया. देखो सिर्फ एक चीज पता थी और उसी से आंसर मिल गया. ए का फोर्थ होगा 1968, बी का फर्स्ट होगा 1917 और मैं मैच कर देती हूँ. पोएट लॉरिएट हो जाएगा आपका 1668 एंड ये फर्स्ट. एंड ये ऑब्वियस था कि लॉरिएट बहुत पहले से मिलता है, पोएट लॉरिएट. ठीक है, जोसेफ सॉरी जॉन. ए विल बी द आंसर गाइस. ए. अरेंज द फॉलोइंग इंडियन राइटर्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. इन्हें क्रोनो में अरेंज करो. हम लोगों ने अच्छा सबसे पहले, चलो मैं नहीं बोल रही, आप ही आंसर करो. हाँ, unofficial first poet laureate was Ben Jonson. Official was what do we call it? John Ryden. अच्छा ये बीच में स्टक हो गई थी, मुझे नहीं पता पड़ा. The correct answer will be option number third, CEDAB. So औरबिंदो सबसे पहले आएंगे, नायडू, देन वेंकटरमानी, उसके बाद आएंगे नारायण एंड उसके बाद आते हैं राव. और नारायण से पहले आते हैं मुल्कराज आनंद. ठीक है, यस. Arrange the following novels in the correct order of the publication. Arrange the following novels in the correct order of their publication. The correct sequence will be EABDC. यहाँ पे मैंने ईयर भी ऐड कर दिया है, एक बार इन्हें देख लो. भवानी भट्टाचार्य के वर्क्स आप देख सकते हो काफी बार आ रहे हैं. पिछले अभी जो हमने पेपर सॉल्व करे उसमें भी भवानी भट्टाचार्य के वर्क्स थे. यस. And these are the most frequently repeated names, Narayan and Rao. नारायण, राव, औरबिंदो, दत्त, कमला दास और रविंद्रनाथ टैगोर. यही नाम बार बार रिपीट होते हैं. मनोहर मलगोंकर, नराज सिंह चौधरी, कमला मरकंडिया,
Okay, epigram, epigon, diegesis, and elysian. So, epigram is a short poem with a witty or thought. ठीक है, so और elysian, the correct answer will be option number fourth. A का third हो जाएगा, as I told you. B का first हो जाएगा. A derivative follower of a more distinguished writer. We have diegesis, which is a term used in modern narratology, and we have elysian, which is a slurring or suppression of a vowel sound. The poetic line, there is one great society alone on earth, the noble living and the noble dead, it appears in the work The Prelude. The Prelude by William Wordsworth, published in 1850 by his wife Mary Hutchinson. It is a posthumously published work. The first regular English tragedy, Gorboduc, contains 5 acts, while the first 3 acts were written by Thomas Norton. Identify the author who wrote the Thomas Norton and Thomas Sackville का वर्क था ये. Although this is a debatable question, guys. ये debatable है क्योंकि कुछ जगह पे लिखा जाता है कि सैकविल ने पहले प्रमोट करे थे और फिर नॉर्टन की प्रमोशन थी. तो डिबेटेबल है, बट ये याद रख लो, गॉर्बडॉग इज अ वर्क बाय थॉमस नॉर्टन एंड सैकविल. Okay, identify the historical plays not written by Shakespeare. So Henry the Third, Richard the Fifth जैसा उन्होंने कुछ नहीं लिखा है. तो एक तो E हो जाएगा. तो A और C में से आप बताओ. The correct answer will be option number A and option number E. Which among the following is not a novel written by Jean Rhys? Quartet, Good Morning Midnight, Voyage in the Dark, Golden Child. Golden Child is not a work by Jean Rhys. Jean Rhys is the writer of White Sargossa Sea, which is a prequel to Jane Eyre. Which of the following stories deal with the theme of partition? Which of the following deals with the theme of partition? ठंडा घोष, लाजवंती, ये सारे वर्क्स आपके आते हैं पार्टीशन में. ठीक है, सो जिला वतन, ठंडा घोष, लाजवंती. How the works from a language other than English are written in a research paper? Bold letters, they are written in italics. ठीक है, italics में लिखते हैं हम अगर किसी और लैंग्वेज में है तो. In his work, Postmodern Condition is a work by Lyotard, announced the eclipse of all grand narratives and sought to declare the death of what? The death of Hegelian spirit. Fourth, the death of Hegelian spirit. ठीक है? Yes. Fourth will be the answer. Which among the following statements are true about Panchtantra? Which among the following statements are true about Panchtantra? Panchtantra is third, आपका correct हो जाएगा, BDE. It is a manual for the instructions of the sons of a king. It is one of the oldest reductions of Panchtantra, this work, and Panchtantra is divided in 5 parts. Okay. We have writers and their text. आपको match करना है. Yes. ऑलराइट, द करेक्ट मैच विल बी ए का थर्ड हो जाएगा, माई प्लेस. ये एक बारी देख लो क्योंकि ये भी अगेन ऑब्सक्योर राइटर्स हैं, रिपीट हो सकते हैं. बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा, एंड एलेक्स राइट इज प्लेन्स ऑफ प्रॉमिस. जस्ट लुक एट देम वंस. जितना याद हो जाए गुड, अदरवाइज कोई बात नहीं, इट्स ओके. Who among the following was known as the Lady of Christ during his college days? It was Milton, जिनको बोला जाता था. Identify the plays that John Fletcher wrote in collaboration with Beaumont. Beaumont के साथ उन्होंने collaboration में लिखा था Cupid's Revenge and The Maid's Tragedy. ये दोनों works उन्होंने collaboration में लिखे हैं. ठीक है? Yes. चलो next पर आते हैं. Which among the following statements are true about the autobiography of an unknown Indian? This is a work by Naratsi Chaudhary, but is it an autobiographical work? It is an autobiographical work. It is an unabashed Anglophilia of the author made this work controversial. Yes, and it was published in 51. Yes. ठीक है? Yes. चलो.
Who among the following is the author of I Know Why the Caged Bird Sings? This is a very famous work by Maya Angelou. D will be the answer. Arrange the following works of Williams in their correct chronological order, guys. Yes. Okay, this will be the correct sequence. B C E D A. B सबसे पहले आएगा कल्चर एंड सोसाइटी. एक बारी देख लो इसको. टेक योर टाइम. लुक एट दिस. क्योंकि रेमन विलियम्स अभी भी आपने खुद से देखा कितनी बार विलियम्स का नाम आपके पेपर में रिपीट हुआ है. यस. चलो नेक्स्ट. ओके, मैच करना है हमें यहाँ पे. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकेंड. अमीश त्रिपाठी का वर्क है वॉर ऑफ लंका. सो बी का हो जाएगा फोर्थ. वी हैव ए का थर्ड, विच इज देवदत्त पटानिक. वी हैव अहाल्या's अवेकनिंग, सी का सेकेंड, कविता केन. एंड वी हैव डी का फर्स्ट, आनंद नीलकंठन. Which of the 19th century novel portrayed disabled characters in them? Hmm. Yes, 72. The correct answer will be A, D and E. A, D and E are the works जिसमें आपको disabled characters मिलेंगे. Which among the following are not genuine sources of sublime as cited by Longinus? The correct answer is A and D. Creation of imaginative feelings and nobility of spontaneity. ठीक है? Yes. Okay. Match these works, guys. Fanny Burney का work है Evelina. Easy. ठीक है. So A का हो जाएगा fourth. And My Son's Story is by Nadine Gordimer. And does that give us the answer? Yes, it does. Third will be the answer. Easy है क्योंकि हम लोग को अगर एक या दो वर्क्स ही पता है, we can match using that. एन ब्रॉन्टे का एग्नेस ग्रे है. यहाँ पे तो हमें तो चारों ही पता है इनफैक्ट. ठीक है. पर्ल बक हो जाएगा द गुड अर्थ. Okay, which statements are true about Chaucer's Canterbury Tales? The general prologue describes the meeting of 29 pilgrims in the Tabat Inn. Yes. The Canterbury Tales is written in prose and verse of various meters. Yes. And only 23 pilgrims tell stories. There are only 24 stories told altogether. Correct. Who among the following absorbed that artistic critic like the mystic is an antimonium always? This particular saying was by Walter Pater. Yes. Yes. So Walter Pater will be the correct answer. चलो next पर आते हैं. Which among the following is not a state of human disposition as posited by Jacques Lacan? इसमें से कौन सा नहीं है? It is obviously historical order, imaginary, symbolic and real. तीनों लाका ने हमें दिए थे. Correct. Okay. Who among the following did not belong to the angry young men movement? Angry young men movement से कौन belong नहीं करता था? Kingsley Amis was there, Osborne was there, Wilson was there. J.B. Priestley was not a part of the angry young men movement, which was there in the 1950s, 60s. Which of the following works are categorized under science fiction? बताओ. Fourth, the correct answer is first, A, C and E. Um, Murakami's The Wind Up Bird Chronicle, and we have Echo's Travels in Hyperreality. Umberto Eco is also the writer of Thomas Aquinas. This work by him, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था. And E.
Ishiguro's Never Let Me Go. These three are categorized as science fiction. According to MLA Handbook, the mechanics of prose refers to technical questions that writers must follow. These include what? These include your spelling, punctuation, grammar, and capitalization. Correct. सूरज ने correct कहा है. 29 pilgrims without Chaucer and the host. Yes. And 24 stories were there. Okay. Happiness is but the occasional episode in the general drama of pain. But be still when you have nothing to say. When genuine passion moves you, say what you've got to say and say it hot. Eternity is said not to be an extension of time, but an absence of time. Vices are sometimes only virtues carried to access. Match them, guys. Match them. Hmm. अभी टाइम है अंजलि, अभी तो सेशन एंड होने में टाइम है. एक आध थर्ड होगा थॉमस हार्डी के वर्क में आपको मिलेगा. आई थिंक दिस वाज द एंडिंग लाइन ऑफ व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट वर्क गाइस, जिसमें माइकल हेंचर्ड था. माइकल हेंचर्ड किस वर्क में था हार्डी के? मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज. करेक्ट. मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की एंडिंग लाइन है ये. ठीक है. बी का फर्स्ट हो जाएगा लॉरेंस. वी हैव सी का फोर्थ ग्रीन एंड वाइसेस. सॉरी, vices are sometimes only virtues carried to access by Dickens. What is the title of Mary Wollstonecraft's autobiographical novel? The correct answer will be option number second, Mary of Fiction. ठीक है. हाँ, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की लास्ट लाइन थी वो. I really like that line. Who among the following was not associated with the Lake School? Easy peasy. Third, William Blake. What was the name of the first ship to transport? It was Futter Rozak. Did I or did I not give this question to you? हम जब इंग्लिश इन इंडिया का सेशन कर रहे थे और तब मैंने बोला था कि ये बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, पूछा गया है इसलिए मैं बता रही हूँ. तो ये आपका 2024 में ही आया था. क्वाइट रीसेंट गाइस. The man of more, the country wife, the old bachelor, the provoked wife. हम्म. इसलिए मैं कह रही हूँ, देखो आप लोगों ने उस दिन एक सेशन में एक बार ही देखा और आपके दिमाग में रह गया फटल वाली चीज. आज जो अभी आप देखोगे, इफ नॉट ऑल द क्वेश्चंस, आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव कि आपको कुछ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की विजुअल मेमोरी रह जाएगी दिमाग में. तो इसलिए जस्ट बी देयर गाइस, जस्ट ट्राई टू सिट. मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है. आई एम गेटिंग टायर्ड, मेरे पैर दुख रहे हैं अब. बट वी आर गोइंग टू डू दिस. ओके, चलो जब तक हम लोग कर सकते हैं, जब तक हम अपने आप को खींच सकते हैं, लेट्स डू दिस. सो ए का फोर्थ हो जाएगा जॉर्ज एथर्जी. वी हैव बी का थर्ड which is your William Wycherley. Old Bachelor will be William Congreve and Provoked Wife is by John Vanbrugh. Okay. लाल सिंह दिल, उर्मिला पवार, ये भी मैंने आपको कराया था. लाल सिंह दिल विल बी पंजाब. सो ए का थर्ड एंड ये मैं करा चुकी हूँ क्वेश्चन. ठीक है, चलो. Who among the following friends of every man, the main protagonist of the best known morality play, Every Man, stays with him when he leaves the world to face death? Good deeds. Good deeds. This is an allegorical work. Good deeds. Okay. Theater of Absurd was by Estlin से associated था. Hmm. Okay. A will be the answer. Abbey Theater, Martin Estlin. ठीक है. Correct. Correct है guys. Okay. In this work, the dialogic imagination, Bhaktin develops the theory of polyphony, postulates the language is imaginary, postulates the language evolves dynamically, argues that language gets affected by the culture that produces it as it helps to reshape that culture,
develops theory of imaginative language? The correct answer will be A, ये, posterizer language evolves dynamically, and D. ठीक है? Okay, arrange the given playwrights in the order of their birth. Arrange करो. Hmm. B will be the answer. The correct answer will be fourth. सबसे पहले बी आएगा. इजिकल 24, आसिफ कुरोम्बॉय 28, गुरचरण दास 43, साइरस मिस्त्री 56 एंड महेश दत्तानी 58. Hypothesis made during or after the research work is over is known as. जो रिसर्च वर्क ओवर होने के बाद हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस. सॉरी, मेड ड्यूरिंग और आफ्टर द रिसर्च वर्क इज ओवर. The key principles of research design brought together. Hmm, बताओ. The key principles of research design brought together in material on measurement principles, sampling and case study, survey and experimentation it is termed as research methodology. Research methodology. First, who among the following American writers was the first Black American to become the US Poet Laureate and consultant in poetry at the Library of Congress? It was Rita Francis Dove. Rita Francis Dove. Okay. Third will be the answer. Arrange the following novels by Achebe in the order of their publication. ये अरेंज करो. मैं आंसर दिखा रही हूँ क्योंकि आई नीड टू गिव यू सम टाइम टू एक्चुअली लुक एट द ईयर्स. एक बार ये ईयर्स देखो. 58, 60, 64. यहाँ तक आपको थीम मिलती है पोस्ट प्री कलोनियलिज्म भी नहीं, कलोनियलिज्म की. यहाँ पे आपको पोस्ट कलोनियल अफ्रीका की सेटिंग मिलती है और इश्यूज भी वही मिलता है. Big Daddy is a fictional character in which work? The novel 1984 by Orwell. The correct answer is Cat on a Hot Tin Roof by Tennessee Williams. ठीक है? Okay. Match these guys. Soyinka, Gaudimer, Walcott and Coetzee. And they are Nobel Prize winners. किसको कब मिला था? आपको ये मैच करना है. Okay. So we already know that J.M. Coetzee is the one जिनको मिला था Nobel Prize in 2003 and he's the only one जिनको 2000 में मिला है इन सब में से. 1993 is the year for Derek Walcott, but I think 1993 was the year for Toni Morrison, isn't it guys? Derek Walcott का भी मैं चेक करती हूँ. मुझे जो याद है मॉरिसन को मिला था 1993 में. 1992 में मिला था. ठीक है, तो इसको 1992 कर दो. 2 कर दो इसको. और 1993 में मॉरिसन को मिला था. चलो. Chronologically arrange the following in order of their publication occurrence. हाँ, 91 में गॉडमर, 92 में वॉलकट एंड 93 में मॉरिसन. ओके, क्योंकि मॉरिसन का भी आपका रिपीट होता है एग्जाम में, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है, तो हमें याद रखना होगा. एंड नाउ दैट वी टुक अ फ्यू सेकेंड्स टू डिस्कस दिस, तो अब हमें याद रहेगा. ओके, द करेक्ट chronology will be option number third, ECDBA. Which text is considered to be the first book of poetry published by an aboriginal author? Nonukals We Are Going will be the correct answer, I suppose. Yes. Nonukals We Are Going. It's a very famous poem by Cat Walker. इस पे आपके और भी क्वेश्चंस बने हैं.
Arrange the works of Morrison in the order of chronology. बताओ. Hmm. Yes. The correct answer will be Beloved 1987. हम जानते हैं Beloved and Jazz आपके एक ट्रिलॉजी से बिलोंग करते हैं. The Bluest Eye सबसे पहले आएगा, The Song of Solomon, then Tar Baby, then Beloved, then Jazz. Bluest Eye इनका इनिशियल वर्क में आता है. Which one of the following novels by Foster is about homosexual love? It is Morris, fourth work. Fourth option, Morris. Things as They Are or The Adventure of Caleb Williams was written as a call to end. Hmm. Was written as a call to end what? To end the abuse of power by tyrannical government. Okay. Terms social fact and collective consciousness in the context of language were used by collective consciousness की बात हो रही है, collective unconscious की बात नहीं हो रही है. Collective unconscious is by Carl Jung. यहाँ पे C and E will be the answer. ठीक है. Durkheim and Saussure ने बात करी थी about social fact and collective consciousness. Okay, the term postmodernism was used in 1917 by German philosopher Panwitz to describe what? The correct answer will be option number A, nihilism of 20th century Western culture. Who wrote the book The History of European Languages? This particular work is by Alexander Muri. Okay, yes. Okay. On a muggy night in Mumbai, The Golden Gate. The Golden Gate is a novel in verse by Vikram Seth, B का fourth, and we got the answer, guys. We got the answer. A का second हो जाएगा, महेश दत्तानी, and के इनका थोड़ा सा काफी बाद में आता है ये प्ले इनका. And we have C का first, Raja Rao, and we have Love and Longing in Bombay by Vikram Chandra. ठीक है. D का third. Okay, the term abstract poem was given by Edith Sitwell. This is correct. So ये और ये तो हट जाएंगे. A, B, E और A, C, E में से आप बताओ. Yes. The correct answer will be option number A, B and E. Second option. ये और ये correct. Who among the following wrote the poetry is not a branch of authorship, it is a stuff of which one life is made. The rest is mere oblivion, a dead letter for all that is worth remembering in life. William Hazlitt gave this particular statement to us. So, third option will be correct. M.H. Abrams, The Mirror and the Lamp, romantic theory and the cultural tradition, and the critical tradition, um, describes what? Describes what? Just a minute, guys. आप आंसर करो. The correct answer will be option number third, A, B, and D. The metaphor of mirror is used to describe literature as a cool intellectual reflection of outward realities. Okay, match these. Okay,
हम्म Alright, the correct answer to this will be option number second. A का second हो जाएगा वेद प्रकाश मेहता. B का first हो जाएगा रोहिंटन मिस्त्री, क्योंकि फिरोज शाह बाग एज आई टोल्ड यू पारसी राइटर थे. ये पारसी लोगों के बारे में, पारसी कम्युनिटी के बारे में बात करते थे. मुंबई की सेटिंग आपको ज्यादातर मिलती है. C का फोर्थ है एंड D का थर्ड हो जाएगा गीता हरिहरन. यहाँ पे एक भी ऑप्शन में पता होता, रोहिंटन मिस्त्री भी पता होता तो भी क्वेश्चन हो जाता. The Latin epic Aeneid by Virgil, अच्छा यहाँ पे आंसर पहले ही आ गया. A, C and D will be the correct answer, guys. Incorporates various legends of Aeneas and makes him the founder of Roman greatness. Relates the story of the legendary founding of Lavinium and recounts the story of Aeneas' journey in the first six books of the epic. Friendship's Garland is a sequel to which one of the following works? Friendship Garland is a sequel to which of the following works? It is Culture and Anarchy by Arnold, जिसका sequel है Friendship's Garland. Yes. Sherlock Holmes, the greatest of all fictional detectives, made his first appearance in which of the following novels by Sir Arthur Conan Doyle? In which I think it's a study in Scarlet. Yes, it's a study in Scarlet, guys. जिसमें आर्थर कॉनन डोयल का जो कैरेक्टर है शर्लॉक होम्स, this detective makes his first appearance. Who among the following is not associated with lesbian and gay studies? इनमें से कौन नहीं associated? Dollimore was actually a figure associated. So second हो जाएगा C and D. ठीक है. Dollymore was associated. एक second. Yes. Sorry, guys. Okay. Yes, C and D will be the answer. Chronologically arrange the fictional writings of Margaret Atwood. करो arrange. Hmm. Arrange the fictional writings of Atwood. The correct answer will be A, D, B, E, C. Okay. चलो. Chronologically arrange the works in order of their publication. We have these works. इनको arrange करना है. हाँ हाँ, all good guys. Hmm. 4 D A B C E. The correct answer is E D B A C. McCable's The Prince सबसे पहले आएगा, फिर Thomas More's Utopia, then your Martin Luther King's work, and then Aristo's, and then your first book of Common Prayer. Okay, we have to match these. Creolization के question है, diglossia का है. Variety of language serving a specialized function in a multilingual community. Existence of common variety of language for people from different cultures. D का third हो जाएगा, obviously. And does that give the answer? Yes, it does. A का first, B का second. Reflections of Language by Chomsky, Language Instincts by Steven. Please ये याद रख लेना, ठीक है, ये याद रख लेना. Since I have a feeling कि Chomsky आ सकता है एग्जाम में, तो हो सकता है यही पॉइंट आ जाए, रिफ्लेक्शन ऑफ लैंग्वेज वाला. ओके, चलो. Who among the following wrote Plan of a Novel? किसका वर्क था Plan of a Novel? The particular work was by Austen. ऑस्टिन का वर्क था. थर्ड.
Kai Poche is the screen adaptation of which of the following novels by Chetan Bhagat? The correct answer will be option number first, The Three Mistakes of My Life. Yes, The Three Mistakes of My Life. Which of the following assertions is not true with respect to cultural intermediaries? Was introduced by Baudua, that is correct. First correct है. Mediate between the production of cultural events and its consumers, promotional materials do not constitute. Okay, so third statement is obviously not true within the with respect to cultural intermediaries. Okay, one second. Third होगा cultural intermediaries. Third ही होगा मेरे हिसाब से. Okay, the given statement limits of language defines limits of thought means what? थर्ड होगा गाइस उसका. वो ऑप्शन इग्नोर मारो फर्स्ट वाला. थर्ड विल बी द आंसर. यस. 124 limits of language defines limits of thought means what? It means the structure of language defines its meaning, and that which will be that which can be defined meaningfully can be thought. Okay, othering ecological imperialism, third space and colonial desire. Third space was given by होमी के भाभा. So D का fourth and ये और ये eliminate हो जाएगा. Othering किसने दिया था? A का second and this will be the answer. ठीक है. यहाँ पे दो आपके लिए एक्स्ट्रा इकोलॉजिकल इंपेरियलिज्म बस कॉइन बाय क्रॉस बाय. प्लीज ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है. एंड colonial desire is a term employed by Robert Young. Which of the following is not a Dalit narrative written by Perumal Murugan? बताओ. Oh, अच्छा रुको. Let me check. Let me check. Let me check. Podua. बट यहाँ तो स्पेलिंग अच्छा प्योरी की जगह प्योर्स. ओके गाइस, दिस विल बी इनकरेक्ट. ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा. बट आई स्टिल डोंट गेट इट व्हाई प्रमोशनल मटेरियल्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट कल्चरल इंटरमीडिएरीज विल बी रॉन्ग. चलो इस क्वेश्चन को स्किप मार देते हैं. वैसे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इट्स नॉट अ फैक्चुअल क्वेश्चन गाइस. करेक्ट आंसर टू दिस इज फर्स्ट. आई गॉट इट. वही अरुण प्रभा दास वाला उन लोगों ने वर्ड प्ले कर रखा है वहां पे. ठीक है. सो तिरुकुरल द बुक ऑफ डिजायर विल बी द करेक्ट आंसर. Who made the following statements in defense of Sant Rasa? The eight rasas are like eight gods, and the saint is like their highest center, Shiva. The correct answer is fourth option, Abhinav Gupta. ठीक है. दिस पर्टिकुलर सात रस के बारे, वो जो सातवां रस था वो पीस के बारे में जो उन्होंने बात करी थी, रसा एज अ रसा, was given by Abhinav Gupta, who said that language is a system of signs whose parts can and must be considered in their synchronic solidarity. This particular idea was talked about by Saussure. Okay, okay. ठीक है. Yes. First, Saussure. Who among the following were associated with Metaphysical Society founded in 1869 by Sir James Knowles? बताओ. The correct answer will be option number fourth, B, C, and E. Okay. Yes. Okay. Chalo. Next question. I'll sit down now, guys. My legs are hurting. चलो मैं शायद से आप लोगों को दिखूं ना. Am I visible? Am I visible? अरे वापस से नीचे हो गया. हम्म. चलो. ओके.
The correct answer to this is Twinkle Twinkle Little Star. Okay, the correct answer will be A ka second, B ka first, by Jane and Ann Taylor. This is completely new info for us, even for me, even for me. ठीक है? चलो, okay, next question पे आते हैं. Who said that an author has no claim to original thought but only to apt presentation of what was already being thought by others? Who said this? Hmm. The correct answer will be option number first. Alexander Pope was the one who said. Which one of the following statements about Booker Prize is not correct? Which statement about Booker Prize is not correct? Hmm. D. The correct answer will be option number second. Eligible writers shall belong to the UK and the Commonwealth countries. The statement is not correct. Plato viewed poetry as an imitation of reality, self-subsistent, subsistent entity distant from reality, manifestation तो बिल्कुल भी नहीं बोला था. Life as experience in reality. The correct answer will be A and C, as I told you. Imitation, एक तो imitation बोलते थे और something which is very far away from the reality. Which of the following is considered to be the first Indian novel in English? It is Bankim Chandra Chatterjee's Raja Ram Mohan's wife. Which of the following is considered to be okay? We have done this. The salient tendencies of Hellenistic philosophy are cynicism, Epicureanism, Stoicism, Surrealism, Expressionism. Hmm. First, A, B, and D. The correct answer is A, B, and C. Cynicism, Epicureanism, and Stoicism. क्योंकि Surrealism and Expressionism का Hellenistic philosophy से कोई लेना देना नहीं है. Which of the following assertions and assumptions are not true regarding cultures of space? Yes. Are not true regarding cultures of space. The correct answer is space is simply land or built up area and space has nothing to do with everyday activities of people. So ये दोनों assumptions true नहीं है, बाकी सारी true है. Critique of judgment, अच्छा यहाँ पे आपको match करना है. The phenomenology of spirit, group psychology and the analysis of ego and the role of the university in the new rich. The correct answer will be option number fourth. A का third हो जाएगा, which is Kant. We have B का fourth, which is Hegel. क्योंकि Hegel ने ही बात करी है. Phenomenology of spirit में main figure आपको Hegel ही मिलते हैं. Group psychology हो जाएगा आपका Freud and the analysis of the ego. क्योंकि ego word से हम associate कर लेंगे. And first हो जाएगा Hegel. A manuscript having an overlap with earlier papers by the same authors or by some of the present authors is termed as self-plagiarism. ठीक है? Hmm. Neoplatonism was founded by, guys, we did this. B and C, third will be the answer. Okay. Who among the following women writers wrote the first female Dalit autobiography? It was Kambale, Shantabai Krishnaji Kambale. Arrange the following partition-based uh, film in order of their release production. Wow, that is quite a question, guys. इसका सीधा आंसर देख लो. It's pointless to even remember this. Just look at the answer. ठीक है, एक बार आंसर देख लो बस. D, E, A, B, C will be the sequence. Okay. Room called Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, A Time to Dance, and Almond a Novel. ये lesser known names है सारे, तो मैं सीधा आपको आंसर दिखा रही हूँ. Lesser known names है, so just look at the answer.
A का थर्ड हो जाएगा, एंड वी हैव B का फोर्थ, वी हैव C का सेकेंड एंड D का फर्स्ट. The Birth of Tragedy from the Spirit of Music by Friedrich Nietzsche examines the origins and development of poetry, specifically Greek tragedy, argues that Socratic rationalism and optimism led to the death of Greek tragedy, examines the origin and music of dance in ancient Greece, argues that Greek tragedy arose of the fusion. ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया है शायद से, क्योंकि D करेक्ट है इसमें, and I remember reading this statement for you. A, B and D will be correct. Yes. चलो. Women in Love is a sequel to which? अभी हमने पीछे पढ़ा था. It was Rain fourth. Okay. हम उर्सुला और वो जो मैच कर रहे थे हम कैरेक्टर्स को, which again guys, which shows कि ये दोनों साइकिल्स जो हैं इसमें भी रिपीट हुआ ना टेक्निकली, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये वर्क्स उधर भी मेंशन थे. लॉरेंस दोनों में पूछा गया है, दोनों में पूछे गए राइटर है. Identify the name of the essayist who made the following assertion. If a man will begin with certainties, he shall end in doubts. But if he will be content to begin with doubts, he shall end in certainties. Yes. थोड़ी सी देर और, बस थोड़ी सी देर और. Okay. Bacon is the one who said this. Phonetics refers to what? Bacon refers to what? Sorry, Bacon gave you. Phonetics refers to what? Phonetics refers to the production of speech sounds and the transmission of speech sounds. Reception, pattern and word formation से phonetics का कोई लेना देना नहीं होता. उसमें फिर आपके syntax, morphology ये सारे fields आ जाते हैं. Who among the following are writers of wordless graphic narratives? Who all are writers of wordless graphic narratives? It is B and D, Orojit Sen and George Matthew Opupin. Three satirical stories by Thackeray portraying unhappy marriage and expostulation of one partner by the other are titled as. It is question number 50. What will be the correct answer? First, men's wives. Chalo. Arrange the following plays in order of their publication. Arrange the given works in the order of their publication. The correct answer will be DBAEC. आप एक बार देख लो, फिर I'll move on to the next question. Iceman Comet 39, Glass Menagerie by Tennessee Williams 44, Death of a Salesman 49 by what was the name, Arthur Miller, 12 Angry Men 54, and we have Who's Afraid of Virginia Woolf, Edward Albee 1962. John Dryden's of dramatic poesy, an essay is written in the form of a dialogue between Eugenius, Critus and Lycidas. नियंडर किसको represent कर रहा है? ड्राइडन को represent कर रहा है. ये हमने करा था. Arrange the following plays by Shakespeare in order of their publication. Arrange करो the plays by Shakespeare in the order of their publication. The correct order will be Taming of the Shrew, Romeo and Juliet, Much Ado About Nothing, Twelfth Night, and then your Winter's Tale. क्योंकि Winter's Tale and Tempest ये दोनों हमारे मार्कर्स की तरह हैं. ये हम लोग को आइडेंटिफाई करने में आसानी करते हैं क्रोनोलॉजी, क्योंकि टेम्पेस्ट एंड विंटर्स टेल दोनों ही आपके लास्ट फेज में आते हैं. हाँ. Okay, catastrophe, epitasis, protasis, and catastasis. ये चारों टर्म्स आपको मैच करनी है with the definition. T. All right, the correct answer will be option number third. Catastrophe हो जाएगा the final action that completes the unraveling of the plot. The catastrophic end जो हम use करते हैं term,
बी का हो जाएगा फोर्थ पार्ट ऑफ द प्ले दैट डेवलप्स द मेन एक्शन. सी का हो जाएगा फर्स्ट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द प्ले एंड वी हैव कैटास्टेसिस दैट इज द ड्रामेटिक कॉम्प्लिकेशन दैट इमीडिएटली प्रीसीड्स द क्लाइमेक्स. ये तीन टर्म्स शायद आपको आपको ना पता हो, ये याद कर लेना. फ्रॉम विच बुक ऑफ मिल्टन्स पोम पैराडाइज लॉस्ट द एपिग्राफ ऑफ मैरी शेलीज नॉवल, किस बुक से लिया गया था? बुक 10 से लिया गया था. सी, यह अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था कल परसों वाली क्लास में. Who wrote the poem in praise of menstruation? This particular work was written by Lucille Clifton. Fourth option. ठीक है? Yes. So fourth will be the answer. All right. We have certain events. आपको मैच करने हैं with the year. मैं सीधा आपको आंसर दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है. ह्यूज पॉसिबिलिटी आपको ये ना पता हो, तो एक बार इसका आंसर देख लो. ये ईयर देख लो क्योंकि ये एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में. फर्स्ट नेशनल सॉरी डे क्यों पूछ रहे हैं? आई हैव नो आइडिया गाइस, पर इट इज व्हाट इट इज. ओके. हेट्रोगोलोसिया होमोसोशियलिटी हमने रिसेंटली पढ़ा था अपने सेशन में. होमोसोशियलिटी होता है सेम सेक्स रिलेशनशिप विच आर नॉट नेसेसरीली सेक्सुअल. सो बी का थर्ड हो जाएगा एंड दैट गिव्स अस द आंसर. थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट. ए का सेकंड हो जाएगा डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन एपिक्स. सी का फोर्थ लॉन्ग नैरेटिव एपिक एंड मोरोलॉजी इज डेलिबरेट फुलिशनेस नॉनसेंस फॉर इफेक्ट. Absalom is a work by Absalom is a work by Faulkner first, William Faulkner. And Absalom ये बोरो उन्होंने किससे किया था ये मुझे बताना. Night of the Scorpion by Ezekiel, A का fourth and we got the answer, third option. Easy question है ये तो बहुत ही easy question है. B का third हो जाएगा Unique D'Souza, Unfinished Poem. Looking Glass is by Kamala Das and To a Friend Far Away is by Ramanujan. The property of research to replicate the same results. I चाय और चाय. हम्म. ओके ओके चलो ठीक है. द करेक्ट आंसर टू दिस इज बी एंड डी. डोंट वरी, मैंने रियलाइज कर लिया था स्टक हो गया है, मैंने आगे नहीं पढ़ाया. हाँ हाँ. आप लोगों ने सुन लिया मेरी चाय वाली बात. सर आए थे टू आस्क कि डू आई वांट टू हैव समथिंग एंड आई डेस्परेटली नीड चाय राइट नाउ. बी एंड डी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड सिटी स्टेट. ओके चलो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश नॉवेल्स रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड्स फॉर द ईयर 2023? आई एम ओके गाइस, आई जस्ट नीड चाय. रकीम इन रागा जानकी बाय नीलम. बस कुछ देर की बात है एंड आई नो दैट आई जस्ट फील दैट दिस सेशन विल genuinely help you a lot which is why I'm pushing my limits and हम बस जितने क्वेश्चंस और कर सकते हैं हम करेंगे. फिर उसके बाद आप अपना डिनर करना एंड आप रेस्ट करना. फर्स्ट रकीम इन रागा जानकी बाय. ओके दिस इज अ वेरी लेसर नोन इन्फो बट अगेन देख लो एक बारी. Who among the following were not associated with Kit Kat Club? And again मैंने आपको बोला था कि schools of poets से आपके यही पैटर्न का क्वेश्चन आता है, ये मेंबर्स वाला. हम्म. बताओ. The correct answer will be who were not associated. George Ethurgy and Johnson were not a part of your Kit Kat Club. Samuel Johnson was a part of the Literary Club. Literary Club उन्होंने and Joshua Reynolds ने ही found किया था. Which one of the following is not a screen adaptation of Shakespeare's Comedy of Errors? The correct answer will be option number 4. Love in a Wood is not an adaptation of Comedy of Errors. Correct. Okay, which one of the following plays mock the restoration drama of Dryden and Thomas Otway?
Which one of the following plays mock the restoration drama of Dryden and Otway? It is the rehearsal of George Villiers. Fourth option. पॉलीसिस्टम थ्योरी मैंने अभी रिसेंटली आपको अपनी क्लास में जो मैंने लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स पे ली थी उसमें मैंने पॉलीसिस्टम थ्योरी पे आपसे क्वेश्चन पूछा था. इट वाज बाय जोहार. ये मैंने आपको बताया था ए का थर्ड. एंड इसी से देखो आंसर आ गया. सिर्फ एक हमें पता था उससे भी हमें आंसर मिल जाएगा. ये एक बारी देख लो. ये एक बारी मैच द फॉलोइंग देख लो. दिस इज इम्पोर्टेंट गाइस. मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी था ये वाला. गेस. Correct. So, B will be the answer to this. Okay. Arrange the following Black American writers chronologically in the order of their birth. Birth order में आपको arrange करना है इन्हें. एक बार मैं आपको आंसर ही दिखा देती हूँ. The correct answer will be option number second. D, E, A, B, C. ठीक है. इसका आंसर देख के एक बारी आप देख ही लो. अगेन मैंने इसमें ईयर ऐड नहीं करे. वाई मैं बता देती हूँ. ईयर मुझे पॉइंटलेस लगता है बर्थ ईयर्स में क्योंकि सबका याद हो भी नहीं सकता है. इनको आप इन जनरल सीक्वेंस याद करने की कोशिश कर लो. पक्का पक्का आकांक्षा. सेशन के बाद आज शेयर घर जाने से पहले आपको पीडीएफ शेयर करके ही जाऊंगी. In the postmodern condition, Lyotard announced the eclipse of all grand narratives. The one whose death he above all thought to declare was. ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. ये क्वेश्चन दोनों साइकिल में रिपीट हुआ है. Hegelian spirit. First will be the answer. Correct. Okay, place the following works in ascending order of their publication year. Place the following works in ascending order of their publication year. गाइस ये खत्म होने वाले हैं. फिर उसके बाद हम 2023 स्टार्ट करने वाले हैं. 2024 इज ऑलमोस्ट ओवर. एक दो क्वेश्चन बचे हैं. ओके. द करेक्ट आंसर टू दिस इज ऑप्शन नंबर सेकंड. यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है इन्फो. एल्बर्ट कामू का वर्क है एग्जाइल एंड द किंगडम. ये इंपॉर्टेंट है. ड्रीम ऑन अ मंकी माउंटेन डेरेक वॉलकट. डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन पोल सोइंका. ब्रेस्ट गिवर देवी एंड डायमंड डस्ट अनीता देसाई. मिक्स ऑफ सो मेनी डिफरेंट थिंकर्स इन वन क्वेश्चन. Such, this is a difficult question in my opinion. Which among the following texts are not written by Mary Wollstonecraft? Which among the following is not written by Mary Wollstonecraft? The correct answer will be A and C. The Wrongs of Man and आपका Thoughts on the Education of Sons are not by Mary Wollstonecraft. मैच द गिवन वर्क्स. एबोरिजिनल टेक्स्ट है हमारे पास. ये है आपके ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल टेक्स्ट एंड ये है आपके ऑथर्स. ये आपको मैच करना है. ओके. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड. ए का हो जाएगा सेकंड विच इज जैक डेविस. या जैक डेविस हमने पीछे एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन राइटर्स के क्वेश्चन जो आए थे उसमें भी ये नाम बहुत बार देखा था. बी का हो जाएगा फर्स्ट एलेक्स राइट. वी हैव सी का फोर्थ सैली मुर्गन एंड अनीता हेस नॉट मीटिंग मिस्टर राइट. एंड आई थिंक हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है गेस इसका. सेकेंड लास्ट है. थोड़े से ही बचा है. Which research treats physical and social world as objects based on standardized data? बताओ. The correct answer is option number third, quantitative. Standardized data की तरह कौन treat करता है? Quantitative treat करता है research में. Which among the following said to be the first fiction magazine created by Hugo? Yes. The correct answer is option number fourth, amazing stories. This is again, I think, new set of information for you. Which among the following by Ibsen was described as an open seaver? कौन से प्ले को ओपन सीवर बोला था? ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल प्ले था क्योंकि इसके अंदर एक डिसीज की बात की गई थी विच इज घोस्ट. घोस्ट को बोला था ओपन सीवर. इप्सन के डॉल हाउस से एंड घोस्ट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बनता है. चलो, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ 2024 गाइस. लेट्स स्टार्ट विद 2023. इसको क्लोज करते हैं और हम खोलेंगे 2023.
Yes, so many people have left the session, but there you people are here. I'm proud of you for sitting for so long. चलो सिफिलिस डिसीज की बात करी थी एब्सोल्युटली राइट. चलो. हम्म. ओके चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. हम्म. आई नो भावना, सेल्फ स्टडी के लिए इस टाइम पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है सेल्फ स्टडी इस टाइम पे. एंड फिर यू डोंट नो वेयर टू स्टॉप. तो एटलीस्ट है यू आर जस्ट लिसनिंग टू समथिंग. तो दिस रियली हेल्प्स. चलो. ए का थर्ड हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी बाय स्ट्राउस. वी नो दैट, हम लोगों ने पढ़ा है एंथ्रोपोलॉजी. ही वाज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, स्ट्राउस वाज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट. ठीक है. पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी हो जाएगा एडवर्ड सोजा. वी हैव डायस्पोरा स्पेस व्हिच इज बाय एप्टार ब्रा एंड वी हैव डेजिन व्हिच इज बाय हेडगेर. ठीक है. ये याद कर लो प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में आने वाली इन्फो. थोड़ा सा हैंग हो रहा है ये. It's a heavy file. There are too many slides. Hmm. Okay, the poetics of prose, the implied reader. I get really excited when I see the word the implied reader by Wolfgang Iser. Sika first and Sika first. एक second. आप आंसर करो. So implied reader, does that give us the answer? I hope it does. Sika first. Okay. नहीं, it doesn't, but चलो one B आप लोग कह रहे हो. The correct answer is option number B. Very very good guys. Very very good. Proud of you, proud of you. अच्छा, to do row was also associated with which particular term? मुझे ये भी बताओ. एक टर्म मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन में PYQ में ही एक क्वेश्चन में बताई थी. To do row was associated with coining a particular term. फादर्स एंड सन्स एक वर्क में कॉइन किया था. मुझे बताओ. ओके. बर्टन रसल, टीएस इलियट, थॉमस स्टर्न्स इलियट बहुत कम ही कहीं पे लिखा हुआ मैं देखती हूँ. मैं यूजुअली टीएस इलियट से यूज टू मैं. ओके. वीके विमसेट एंड क्लियन ब्रूक्स. क्लियन ब्रूक्स का तो ऑब्वियसली हो जाएगा वेल ब्रॉट अर्न, सो डी का सेकंड. एंड ओके, सेक्रेड वुड हो जाएगा बाय इलियट एंड बी का फोर्थ. एंड ठीक है. गॉट इट. गॉट द आंसर गाइस. चलो. Okay, Walt Whitman, Whitman का Beat Beat Drums. Who hasn't heard about Beat Beat Drums? A का थर्ड हो जाएगा. It's a very rhythmic poem, very rhythmic poem. So A का थर्ड हो जाएगा and हमारे पास दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए. डेरिक वॉलकॉट वाज द वन जिन्होंने A Far Cry from Africa लिखा था. सी का फर्स्ट, जो कल्चरल हाइब्रिडिटी के बारे में बात करता है. कल्चरल डिसलोकेशन हाइब्रिडिटी. सी का सेकंड एंड वी गॉट द आंसर. यस, वी गॉट द आंसर. ठीक है. चलो. ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, यहाँ पे आपके पास शेक्सपियर के प्लेस हैं एंड शेक्सपियर के प्लेस की कुछ लाइंस हैं. ये आपको मैच करना है.
चलो, okay. So come may, time and the hour runs through the roughest day. When sorrows come, they come nor single spies, but in battalions. I am a man more sinned against the sinning. This line comes from the play King Lear. King Lear was a tragedy जिसमें हमारे जो king थे वो काफी ज्यादा regret कर रहे थे about the decisions that he made. So C का for certain second है and that leaves us with two options. First A and C. आप लोग कौन सा कह रहे हो? आप लोग C कह रहे हो. Very good, guys. Very, very good. Correct. Absolutely right answer. चलो. Okay. यहाँ पे भी हमारे पास कुछ lines है and हमारे पास works है. डॉल्स हाउस, आई टोल्ड यू पीपल कि डॉल हाउस रिपीट होता है. इप्सन का वर्क. डेथ ऑफ अ सेल्समैन भी कितनी बार, देखो अभी लास्ट ईयर की जो हमने साइकिल के क्वेश्चन देखे थे उसमें हमें ये दिखा था. लुक बैक इन एंगर हमें वहां पे दिखा था. ये तीनों वर्क्स हमने अभी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में देखे थे नाम. ओके, सो द करेक्ट आंसर देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें डॉल प्ले रूम की बात हो रही है, तो डी का तो फॉर सर्टेन सेकंड हो जाएगा एंड दैट गिव्स अस द आंसर डी. Okay, so D will be the correct answer. Perfect, very, very good. Arrange the works in chronological sequence. We have, all right. तो हमें इन्हें chronology में arrange करना है. The correct sequence will be 32154. मैंने यहाँ पे add भी कर दिया है. एक बारी इसको देख लो, नजर से घुमा लो. ओके क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्म में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. हम्म, चलो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप आप लोगों ने याद कर लिया है. ओके, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस in which the following theories appeared. स्ट्रक्चरलिज्म, साइको एनालिसिस, इको क्रिटिसिज्म. साइको एनालिसिस से भी पहले मार्क्सिज्म आता है, ठीक है, ये एक पॉइंट याद रखना. साइको एनालिसिस से पहले मार्क्सिज्म आता है. ओके, सो सबसे पहले तो साइको एनालिसिस हो जाएगा ना, तो ए एंड बी तो एलिमिनेट हो गया एंड आपका 2-5 हो जाएगा. न्यू क्रिटिसिज्म, साइको एनालिसिस. न्यू क्रिटिसिज्म से पहले प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आता है, फिर स्ट्रक्चरलिज्म आएगा, ओरिएंटलिज्म काफी बाद में है, इको क्रिटिसिज्म लास्ट में है. इजी क्वेश्चन, इजी पीजी. ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन अकॉर्डेंस विद द इयर्स ऑफ देयर बर्थ. बताओ. हम्म, बर्थ वाले पे रोना निकल जाता है. मेरा भी. Me too, guys. Me too. Not just you. I personally hate chronology questions. But okay. Fifth, John Donne. Second, but this one's easy. This one's easy because ये different eras के writers हैं. अगर same era के होते हैं तब problem आती है. Different eras के हैं. This is a easy question. Arrange the works in chronological sequence. Course in General Linguistics, Ferdinand de Saussure, 1916. Okay, the implied reader, guys. How many times have we seen this work? I have lost count. कितनी बार हम ये वर्क देख चुके हैं अपने इस सेशन के अंदर अंदर. सो सबसे पहले तो ये वाला वर्क आ जाएगा आपका. फिर आएगा Pleasure of the Text, which is by Barthes, very famous work, 73. Implied Reader by Iser, 74. Structuralist Poetics, Jonathan Culler, 75. And The Pursuit of Science by 1994 by Thomas Sibyok. Please remember this might be a new name for you. Okay? Yes. Given below are two statements and you need to assertion reason. Statement 1, statement 2 question है. Hmm. Constant Stanislavski collaborated with Chekhov. Thank you so much. अरे आपकी शायद इसमें the time मैम. I was planning 8-9 का 3 hours 4 होने वाला. हम्म, आपकी शायद. थैंक यू.
गाइस, सर ने मुझे चाय ऑर्डर करी है। जस्ट अ मिनट। आई नीड अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। आप ये पढ़ो, आंसर करो। ओके, चलो। Yes. So, the correct answer will be both first and second are true. They collaborated with Chekhov to stage dramas. Yes. The book My Life in Art was written by Stanislavski. Human bodies, like those of other living organisms, are only sexed from a particular narrow perspective. Most of the reproductions that we undertake in our lifetimes has nothing to do with sex. Yes. Hmm. The correct answer will be both the statements are true. Sure. Next question. Cooperative learning activities are those in which students must work together in order to complete a task or solve a problem. This is true. These techniques are used to identify a weak learner and to separate him or her from the rest of the members. नहीं. So A is correct, but R is not correct. ऐसा थोड़ी होगा कि cooperative learning practice के बाद आप उसी student को बाहर कर दो उस practice से. Hmm. Find the chronological order of publication of Dickens novels. दिस इज इम्पोर्टेंट गाइस, चार्ल्स डिकिंस की नॉवल का क्रोनोलॉजी इज इम्पोर्टेंट। ये एग्जाम में आ सकता है। ये मैंने ईयर मेंशन कर दिया है। पिकविक पेपर्स उनका सबसे इनिशियल वर्क था। ऑलिवर ट्विस्ट और डेनियल डोरोंडा, ब्लीक हाउस, ये सारे आपके लेटर ऑन आते हैं। सो 49, 52, 46 एंड दीज वर द टाइम्स, क्योंकि सीरियली पब्लिश होते थे इनके वर्क्स, इसलिए ये इस फॉर्म में है, क्योंकि सीरियलाइजेशन होती थी इस टाइम पे। ठीक है। Arrange the words in the chronological order of their publication. बताओ। हम्म The correct answer will be option number B. 41352. Very, very good. Majority का B ही है. Shoemaker's Holiday by Decker 1599. And again, ये थोड़े आपके different eras के हैं, तो ये question easy हो जाते हैं हमारे लिए. G.B. Shaw का work है John Bull's Other Island, जो आपका modern period में fall करेगा. Okay? Please look at the works. These are all important ones. Conscious Lovers, Double Dealer, A Woman Killed with Kindness. The book The Theatre of Revolt was written by Robert Brustein. The book The Theatre of Revolt is written in the context of French Revolution. Theatre of Revolt, ये particular work अभी previously हमने देखा था question में, ये नाम, if you remember. The correct answer is first is true but second is false. ठीक है, चलो. In second language learning, in the same classroom setting, some students progress rapidly through the initial stages of learning a new language while others struggle, making very slow progress. Some learners never achieve native like command of a second language. Um, okay, the correct answer will be option number A and R. दोनों correct हैं, but R A को explain नहीं करता completely. चलो. Okay, Munira, Nunu Ego, these are the characters. Ikimi Funa is a character from Things Fall Apart. The kid जिसको कौन को वो लास्ट में sacrifice करता है, मार देता है basically as a part of the ritual, which is okay. So C का first हो जाएगा and that gives नहीं, but दो options eliminate हो गए.
2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, इसी बात पे 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, रेस्ट आप बताओ। हम्म, ए विल बी द आंसर, एब्सोल्युटली राइट। ए का हो जाएगा सेकंड, पेटल्स ऑफ ब्लड। इकिमी फूना मैंने बता दिया, थिंग्स फॉल अपार्ट। नुनो ईगो वाज इन द चॉइस ऑफ मदरहुड एंड दिस इज जुलिया's पीपल। दिस इज बाय नदीन गॉर्डमर। द जॉयज ऑफ मदरहुड इज बाय अमाटा आइडो, यस और नो? आइडो का वर्क है, या फिर थियोंगो का वर्क है, या फिर एमचेता का वर्क है? बताओ किसका वर्क है इन तीनों में से, ए बी सी? whose work is The Joys of Motherhood. Adha's story is also a work by the same writer. Hmm. Negative Capability by Keats. SM Plastic by Coleridge. ये हमने पढ़ा है. Psychosomatic is also by Coleridge. Psychosomatic, ठीक है? इन्होंने फैंसी, सेकेंडरी इमेजिनेशन, प्राइमरी इमेजिनेशन, इन सब के बारे में बात करी है. स्वीटनेस एंड लाइट बाय आर्नल्ड एंड डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी बाय इलियट. एम एच रीता का वर्क है, करेक्ट. अरेंज द वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस. आपके पास वर्क्स हैं. अब मैंने आप लोगों को ये चीज दिखाई है, राजा राम मोहन रॉय, बंकिम चंद्र चैटर्जी का ये वर्क भी आपके क्वेश्चन में अभी आया रिसेंटली. कंथापुरा कितनी बार देख चुके हैं हम. अनटचेबल हमने देख लिया, डिस्टेंट ड्रम हमने देख लिया. ये वर्क्स रिपीट होने वाले वर्क्स हैं आपके. रिपीट होने वाले वर्क्स हैं. द करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन. फर्स्ट फोर्थ 1 4 3 2 5. एक बार ही देख लो इसको, याद कर लो प्लीज. बंकिम चंद्र चैटर्जी, अब इसका इजी तरीका मैं बता देती हूँ. बंकिम चंद्र चैटर्जी amongst all these novelists वो पहले born हुए थे, तो obviously the work will come first. If that is the first work written in English by an Indian novelist, obviously this work will be coming first apart from all the other writers. So we have Raja Ram Mohan Roy, sorry, Rajmohan's wife, Untouchable 35, Kanthapura 38, which there was a direct question on Kanthapura. Distant Drum 1960 and A Bend in the Ganges, Manohar Malgunkar 64. ठीक है. Question guys. Niratsi Chaudhary, An Autobiography of an Unknown Indian. What was the year of this particular work? Niratsi Chaudhary, An Autobiography of an Unknown Indian. Autobiographical work है उनका. इसका ईयर मुझे बताओगे आप अभी. 19 डैश. Which of the following works have been written by Thomas Carlyle? Hudibras is obviously not by him. It is by Samuel Butler. Have been written. ठीक है. तो A हो जाएगा और B हो जाएगा. 1951. Perfect. Absolutely right. Which of the following books are written by Julia Kristeva? Kristeva का works कौन से हैं? The Mad Woman in the Attic is not a work by Kristeva. So that is for certain. Okay. So fifth तो बिल्कुल नहीं है. ये हटा दो. बताओ. Human Bondage is by Somerset Maugham. Absolutely. So A will be the answer. All right. The correct answer is first and fourth, guys. Desire in Language and La Revolution de Language Poetry. This is the work by Christopher. To which of the following theories New Historicism is indebted? न्यू हिस्टोरिसिज्म का मार्क्सिज्म से कोई लेना देना नहीं है. एग्जिस्टेंशियलिज्म से कोई लेना देना नहीं है. इन तीनों से है, क्योंकि hermeneutics is about interpretation. So hermeneutics is obviously has some role to play in new historicism. So second, third is indebted ना. So second, third, अगर सारे ऑप्शन देखे तो second and third in my opinion.
बट सेकंड एंड थर्ड तो ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा है डी फॉर्मलिज्म, बट फॉर्मलिज्म से भी कोई लेना देना नहीं है। सो थर्ड एंड फिफ्थ नहीं है, तो मेरे हिसाब से फिर मार्क्सिज्म ले लेते हैं, मार्क्सिज्म एंड रीडर रिस्पॉन्स ले लेते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड गाइस। अगर हम लोगों को कोई एक ऑप्ट करना है तो मार्क्सिज्म एंड रीडर रिस्पॉन्स, क्योंकि फॉर्मलिज्म तो फिर कंटेक्स्ट लेता ही नहीं है बाहर का, फॉर्मलिज्म विल बी आउट ऑफ द ऑप्शन। Which of the following statements are true about cyberpunk? It is a kind of science fiction. It uses postmodernist techniques and post-humanist themes. Post-humanist themes usually वो वाली themes होती हैं जहाँ पे machines के बारे में, robots के बारे में, human and machine relationship के बारे में बात हो रही है. Events in this novel usually take place within the virtual reality. So first, second and third तीनों correct है. Okay? Okay. We have these works and आपको match करना है. 5 आपके पास नाम है, 5 आपके पास वर्क्स हैं, मैच देम। यस सी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे करेक्ट पेयर्स बताने हैं। सो सेकंड आप कह रहे हो करेक्ट है, थर्ड आप कह रहे हो करेक्ट है, एंड फोर्थ आप कह रहे हो करेक्ट है। पक्का? श्योर? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एज बट का पोजेशन वर्क तो करेक्ट हुआ ना, तो फिफ्थ तो पक्का पक्का करेक्ट है। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ होगा ना, ये करेक्ट हुए। मार्क्वेस का वर्क नहीं है द फीस्ट ऑफ द गोट। Which of the following books are written by Adiga? Adiga, एक तो ये हो गया, तो यही आंसर हो गया। सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, बिटवीन द असैसिनेशन, लास्ट मैन इन टावर एंड व्हाइट टाइगर। ठीक है, 3 वर्क्स अडीगा के सो फार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो यही 3 वर्क्स थे। यस, ओके, करेक्ट पेयर्स बताने हैं यहाँ पे। करेक्ट पेयर्स, विलियम एम्सन, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी इज करेक्ट। So second is correct. Second सब में ही है. First is correct. And understanding poetry. Brooks and Warren का work नहीं था. अच्छा, guys, do you remember? Do you remember? When we were talking about हम जब लिटरेरी थ्योरी कर रहे थे, अभी हमने recent session में अंडरस्टैंडिंग पोएट्री, अंडरस्टैंडिंग ड्रामा, अंडरस्टैंडिंग फिक्शन पढ़ा था. Do you remember? ये किसके सीक्वेंस हमने याद करे थे, किसके वर्क्स के सीक्वेंस याद करा था, बताओ मुझे। अगर आप मेरे वो सेशन अटेंड कर चुके हो तो आपको पता होगा। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। एलन टेट का गलत हो जाएगा, इन सर्च ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म। क्लिएंट ब्रूक्स के हम वर्क्स याद कर रहे थे तब। एब्सोल्युटली, वॉरेन ने कोलैब किया था अलोंग विद ब्रूक्स। वेल ब्रॉट अर्न, पीएफडी, वेल ब्रॉट अर्न। एब्सोल्युटली, yesterday it was correct. So understanding poetry, drama, fiction. ये आपके एग्जाम में पूछे गए तीनों वर्क्स थे, जिसमें पोइट्री मुझे लगा था उस टाइम पे कि शायद नहीं पूछा है, बट वो भी पूछा आपके एग्जाम में। Which among the following are true in the context of methods and methodologies in literary research? Both are identical in nature. Methods are concerned with one conducts a given piece of. Okay, second and third. Okay, second and fourth, in my opinion, will be correct. Yes, second and fourth will be correct. PFD हमने याद रखा था, PFD was the sequence. Correctly and Brooks. Okay, correct pair आपको बताना. Which of the among the following are correct? Which among the following are correctly matched? बताओ. पामुक ने कब हमारा नोबेल प्राइज जीता था? 2006. अभी हमने पीछे याद करा है, पीछे ही याद करा है अभी रिसेंटली. यस, चलो बताओ. ही वॉज फ्रॉम साउथ अफ्रीका. फर्स्ट इज करेक्ट गाइज. पहला करेक्ट है तो सी एंड डी एलिमिनेट हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ. ठीक है. फिलिप रॉथ एंड ग्राहम स्विफ्ट आपका इनकरेक्टली मैच्ड है.
करेक्टली मैच्ड पेयर आपको यहाँ पे बताने हैं. वी हैव लिटरेरी थ्योरी. लिटरेरी थ्योरी किसका है? टेरी इग्लेटन का है ना? टेरी इग्लेटन, ये अभी हमने कल परसों बहुत बार पढ़ा. एंड अगेन आई एम नॉट सरप्राइज टू सी द इम्प्लाइड रीडर अगेन. सो स्टैनली फिश का वर्क नहीं है. इम्प्लाइड रीडर इज अ वर्क बाय वुल्फगैंग आइसर, राइट? सो फिफ्थ इज इनकरेक्ट. तो ये हट जाएगा. और सेकंड इज इनकरेक्ट, तो ये भी हट जाएगा. फर्स्ट पे सारा डिस्कशन रुक जाता है, कल्चर एंड सोसाइटी पे. सो थर्ड एंड फोर्थ इज द आंसर. डी. वेरी गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू. Which among the following are written by Rola Barthes? This actually helps us to see the pattern of your paper. इससे हमें थोड़ा सा पैटर्न का आइडिया लग रहा है कि किस फ्रीक्वेंसी पे और किस हिसाब से इन्फो रिपीट हो रही है आपके एग्जाम में. कल्चर एंड सोसाइटी इज बाय विलियम्स. एब्सोल्युटली राइट अनामिका. ओके. विच अमंग द फॉलोइंग आर रिटन बाय रोला बार्ट्स? रोला बार्ट्स के वर्क्स कौन से हैं इसमें से? व्हाट इज एन ऑथर? व्हाट इज एन ऑथर आपके जून के पेपर में क्वेश्चन आया था. जब उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, मिशेल फूको ने बात करी थी व्हाट इज एन ऑथर में, जिसमें उन्होंने बोला था कि इट्स अ हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्ट वाली चीज. सो फिफ्थ तो उनका वर्क नहीं है. माइथोलॉजीज उनका वर्क है. प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट उनका वर्क है. ठीक है. सो सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि उन्होंने भी आपके बात करी है जेन्योलॉजी की जो स्टडी है. Yes. Which among the following is correct in the context of R.K. Narayan? His The Guide is an open-ended novel. ये तो सच बात है. गाइड में लास्ट में हमें नहीं पता राजू डाइड, राजू सर्वाइव्ड. वी डोंट नो व्हाट हैपेंड टू राजू. सो फर्स्ट इज ट्रू गाइस, वेरी मच ट्रू. एंड चारों ही ऑप्शंस में है, तो दैट डिडंट हेल्प एट ऑल. बुक प्राइज उन्हें नहीं मिला है, बिल्कुल भी नहीं मिला है. सो फोर्थ इज इनकरेक्ट. ठीक है. थर्ड भी तीनों में है, तो सेकेंड एंड फिफ्थ डिसाइडिंग फैक्टर है आपका. मालगुडी रियल लाइफ सिटी नहीं है कर्नाटका की. सो सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हो जाएगा. ठीक है. द मार्टिस कॉर्नर, दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय हिम. ये थोड़ा लेसर नोन वर्क है, तो यहां से आप इसको इमीडिएटली याद कर लो. ठीक है. चलो. ऑलराइट. थॉमस राइमर कॉइन्ड द टर्म पोएटिक जस्टिस टू इम्प्लाई व्हाट? टू इम्प्लाई द फॉलोइंग. रीड करो एक बारी. कौन सा कह रहे हो आप? सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. रुको, लेट मी चेक गाइस. मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर फ्रॉम एलीट. हाँ, सॉरी, ये इनकरेक्ट है. फर्स्ट एंड थर्ड होगा. फर्स्ट एंड थर्ड, माय बैड गाइस, माय बैड. फर्स्ट एंड थर्ड होगा, बिकॉज इन हिज वर्क्स मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर नॉट फ्रॉम एलीट. इट्स द ऑपोजिट ऑफ दैट. यस यस, सॉरी, माय बैड. ओके, बताओ. हम्म. Chalo. So the Thomas Rhymer coined the term poetic justice. The correct answer will be first and second. The distribution of earthly rewards and punishments. Yes. The virtue or vice of the various to the virtue. Okay. Literary work governed by decorum and morality. So first and second will be correct. According to the English Subject Center report, skills needed for postgraduate work in English include what? IT skills वो include नहीं करता, बाकी सब include करता है. So first, second, third and फोर्थ होना चाहिए था. रुको. पीयर मैनेजमेंट स्किल्स, सर्चिंग स्किल्स इन लाइब्रेरीज, एडिटोरियल होगा, बिब्लियोग्राफिक होगा. सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर सर्टेन है, एंड वो सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो विल गो विद डी गाइस. डी के साथ हमें जाना होगा, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पक्का पक्का सच है. Which of the following are possible ways of turning a topic into an argument? मेरे को थोड़ा इजी तो आता था पहले पेपर, नॉट गोना लाई, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके जून के पेपर से तो काफी इजी हैं. Which of the following are possible ways of turning a topic into an argument? The correct answer will be first, an argument for or against an existing critic in relation to the author.
सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, एन आर्ग्यूमेंट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ ओनली वेल नोन ऑथर इज इनकरेक्ट, क्योंकि बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट है. श्री और बिंदु. ओके, तो मैंने आपको ये उस दिन कराया था मैच, कमला दास द ओल्ड प्ले हाउस, बी का फर्स्ट, एंड इसी से आंसर मिल गया. टोरू दत्त का ये वर्क है द शीप ग्लीन इन फ्रेंच फील्ड्स, क्योंकि उन्होंने फ्रेंच में भी लिखा है. बियांग का उनका एक वर्क था जो उनकी नॉवल थी विच वाज रिटन इन फ्रेंच. पी लाल और बिंदु का वर्क हो जाएगा सावित्री, एंड पी लाल का हो जाएगा कैलकटा लॉन्ग पोम. When nature prompted and no law denied promiscuous use of concubine and bride, then Israel's monarch, after heaven's own heart, his vigorous warmth did variously impart to wives and slaves. From which poem are these lines taken? B. Macfleck, no, sure. The correct answer is Absalom and Achitophel, a poem. Correct. Absalom and Achitophel, this particular work is by Dryden. एंड आपका जो एप्सिलम एप्सिलम है वो टाइटल भी कहीं ना कहीं वी कैन से हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम हियर. Which of the following poems is written by Oliver Goldsmith? It is a deserted village. See, a deserted village. Sorry, a deserted city था ना, नहीं village ही था. Tribute, and again, a deserted village has a very similar idea to what जॉनसन के वर्क था एक लंदन करके. इन सब पोम्स में यही आइडिया था कि कैसे सिटीज को छोड़ छोड़ के लोग जा रहे थे अर्बन एरियाज में, एंड द रूरल एरियाज वर सो empty, and how people are gonna regret leaving these lands. So Tribute to Papa is a book of poems written by, it is by which writer? Mamta Kalia. This reminds me of Sylvia Plath, guys. ये पढ़ते ही Sylvia Plath की याद आई मुझे तो. Okay, which of the following poems is not? Next question is on Plath. What should I ask for next? Should I manifest आप सबका JRF qualify हो जाए? I think God is listening to me right now. So to Ariel will be the answer. D. Robert Burns was born in. Yes. Robert Burns was born in Scotland, England, Ireland, America. Robert Burns was Scottish. So A. Yes. Who among the following character personifies necessity in PB Shelley's Prometheus Unbound? कौन हमारा personify करता है necessity? It is Demogorgon. Demogorgon. Yes. B. B will be the answer. You people are so serious right now. बहुत serious हो गया है एकदम माहौल. Dr. Primrose is a character in. This particular character is in The Vicar of Wakefield. The Vicar of Wakefield is a work by, guys, मुझे बताओ, whose work is The Vicar of Wakefield? The Vicar of Wakefield is a work by. Okay, so this particular excerpt has been taken from which work? So the baby was carried in a small deal box under an ancient woman's shawl to the churchyard that night and buried by lantern light at the cost of a shilling and a pint of beer to the sexton in that shabby corner of God's allotment where he lets the nettle grows and where all unbaptized infants, etc., etc., etc. This particular work is this statement is from Tess of the Ubervilles, जहाँ पे टेस अपने बेबी को बरी करने जाती है. This was a very sad work, very very sad work by Thomas Hardy. Which of the following novels is written by Patrick White? Vicar of the Wakefield by Oliver Goldsmith. Oliver Goldsmith का work है, correct. Which of the following is written by Patrick White? Handmaid's Tale is by Atwood. Vivisector is the work. Solid Mandala किसका work है? ये भी मुझे बताओ. Solid Mandala किसका work है? Solid Mandala is a work by.
Which among the following is not written by Kamla Markandeya? इसमें से कौन सा वर्क मरकंडिया ने नहीं लिखा? It is A Time to Be Happy. A Time to Be Happy. Okay. Yes. Who among the following were revolting the masses as sources of literature? होगार्ट एंड विलियम्स ही तो थे जो रिवॉल्ट कर रहे थे, रिवॉल्टिंग द मासेस एज सोर्सेस ऑफ लिटरेचर. होगार्ट एंड विलियम्स वर द इनिशियल CCCS थिंकर्स. ओके, जिन्होंने मासेस के बारे में बात करी थी मेजरली. Who among the following theorist has written on narrative empathy? नैरेटिव एम्पैथी के बारे में लिखा है सुजैन किंग ने. ये भी बहुत फैक्चुअल इन्फो है, इसको याद कर लो यहीं हाथ के हाथ. Okay, the science that systematically studies the function of science is known as semantics, scriptoria, seismography, or semiology. It is semantics, semiology, guys. Semiology is the science जो study करती है the function of science. Okay. Okay. Who among the following first framed the theory of general hermeneutics? किसने सबसे पहले आपकी फ्रेम करी थी द थ्योरी ऑफ जर्नल hermeneutics? It was C. Correct. When a learner's second language learning system seems to freeze or get stuck at some more or less deviant stage, that phenomenon is known as जब एक नेगेटिव टर्म, आई रिमेम्बर गौरव, इफ ही स्टिल देयर इन द सेशन, he asked me that whether this term is a negative term. So फॉसिलेशन इज द आंसर टू दिस. फॉसिलेशन होता है जब आप मानो कि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, माय मॉम कैन नॉट प्रोनाउंस स, वो श बोलती हैं स को, तो एक फॉसिलेशन का एग्जांपल हुआ, एक ऐसा एरर जो आ गया है और वो फ्रीज हो गया वहीं पे. यस. Integrative motivation refers to language learning for immediate goals. It is language learning for personal growth. Okay. C. 1835, which of the following language was replaced by English? Persian was replaced. Persian को replace कर दिया गया था administration से with English. The Magna Carta of English education in colonial period refers to Wood's Dispatch, guys. Wood's Dispatch. डायरेक्टली हम करेक्ट आंसर पे ही जंप करेंगे. मकॉलेज मिनट को मैनिफेस्टो बोला जाता था और वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा बोला जाता था. ओके. यस. सो डी विल बी द आंसर. Which of the following plays of Shakespeare was translated into Bengali? बंगाली में किसको ट्रांसलेट किया था? गिरीश चंद्र घोष ने डायरेक्ट भी किया था. Macbeth was the play which was translated as well as directed by Girish Chandra Ghosh. Which of the following works of Browning are pure dramas? बताओ. Which of the following are pure dramas? The Last Ride Together is a dramatic. It's a narrative poem, so it's obviously not a drama. कौन सा है इसमें से? कौन से दो वर्क्स आपके ड्रामा है? इट इज योर फर्स्ट हो गया स्ट्रैफोर्ड एंड योर अब्लॉट इन द स्कचियन. प्लीज रिमेंबर वर्स ड्रामा लिखते थे ये, वर्स ड्रामा. ब्राउनिंग वाज नोन फॉर हिज वर्स ड्रामास. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा. एज आई टोल्ड यू, यहीं पे दिख गया आपको लाइव एग्जाम्पल. ये मैंने प्रैक्टिस भी कराया था ब्रिटिश लिटरेचर वाले सेशन में. हाँ. Who among the following poets have lived in Australia? They are obsessed with this, guys. They are obsessed with this. But यहाँ पे question आपसे aboriginal नहीं पूछ रहा है, lived in Australia पूछ रहा है. Cat Walker is Odgero Nonukal. ठीक है, just in case you get confused, that is Odgero Nonukal. Eliot used to live in America and then he got हाँ अमेरिका ही I guess. हाँ अमेरिका, एंड देन उनको ब्रिटेन की सिटीजनशिप मिल गई थी. सो फिफ्थ तो बिल्कुल नहीं है इसका आंसर. डी को आप एलिमिनेट कर दो. द करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट एंड थर्ड, गाइस. राइट एंड वॉकर, विच इज ऑडगेरू नोनुकल. ठीक है. Choose the following options. The correct combination of playwrights who contributed to the movement called kitchen sink drama. अगेन आई टोल्ड यू, आपके स्कूल ऑफ पोएट्स के क्वेश्चंस मेंबर्स पे ही आते हैं. ऑसबर्न, वेस्कर एंड आर्डन एंड डेली.
डिलेनी, सॉरी, यस, अमेरिका टू ब्रिटेन, हाँ। और उनकी जो ब्रिटेन की सिटीजनशिप थी उस पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। यीट्स आपके आयरिश राइटर थे, यीट्स आयरिश थे, और हम ब्रिटिश लिटरेचर में पढ़ते हैं वैसे उन्हें, ठीक है। Who wrote the popular instruction manual for fishermen titled The Complete Angler? It was Isaac Walton. A. Absolutely right. What did Arnold imply by the term Hebraism? Hebraism and Hellenism. इन दोनों की बात उन्होंने किस वर्क में करी थी? किस वर्क में उन्होंने बात करी है हेब्रेइज्म हेलेनिज्म की? कल्चर एंड ना की। हेब्रेइज्म होता है आपका मोरल एजुकेशन, ठीक है। सो मोरल एजुकेशन, हेलेनिज्म इसका ऑपोजिट हो जाता है, जहां पे आपके पास वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लिबर्टी है, दैट इज हेलेनिज्म। ओके, द जर्नल स्क्रूटनी वाज, और उनके अकॉर्डिंग विक्टोरियन सोसाइटी इज टू फोकस्ड ऑन हेब्रेइज्म ओवर हेलेनिज्म। The journal Scrutiny was founded in 1932 by, this particular journal was founded by F.R. Lewis. Very important point. Very important. Yes, B. Roland Barthes' image music text was published in which year? 68, 77, 79, 69. The correct answer is 1977. This is an important work, guys. ये आपके पीछे एक मैच द फॉलोइंग में भी आया हुआ वर्क है। To whom is the term thick description attributed? Clifford Geertz. Now this particular question proves कि आपके एग्जाम में रिपीट होता है। Now another point. So I remember जब जून का पेपर हुआ था, I told my students that John's story was not a completely new figure appeared in your paper out of nowhere. John's story आपके ऑप्शन में पहले आ चुका था एक बारी आपके 2023 के पेपर में, एंड यही नाम पे कंप्लीट क्वेश्चन बना जून के पेपर में 2025, which is why I always tell you people, even the options are important. हो सकता है नेक्स्ट साइकिल में जेम्स क्लिफोर्ड पे बन जाए पूरा क्वेश्चन, डेडिकेटेड क्वेश्चन। ओके, चलो, तो इसलिए जब आप अब नेक्स्ट साइकिल की तैयारी करोगे कल के लिए, तो आई होप फिंगर्स क्रॉस्ड ऐसा ना हो, प्लीज भगवान जी डोंट डू दैट, बट उसके आगे वाले साइकिल में बी एक्स्ट्रा कॉशियस गाइस। The subject matter of cultural studies as it emerged as a proto-discipline in the 1960s was predominantly exploration of high culture, popular culture. मेजरली वो लोग स्टडी कर रहे थे पॉपुलर कल्चर। सीसीसीएस का मेन आइडिया था कि पॉपुलर कल्चर इज अ स्पेस ऑफ रेजिस्टेंस, वो एक रेजिस्टेंस की स्पेस देता है हमें, जहाँ पे आप नेगोशिएट करते हो। According to Stuart Hall, the concept of dash played a seminal role in the cultural studies. The concept of what? Hegemony. अगर आपको याद हो मैंने इस पे क्वेश्चन कराया था, एक assertion reason था या statement based था, I don't remember. स्टुअर्ट हॉल ने ग्रामशी के हेजेमनी के कॉन्सेप्ट पे एम्फोसिस किया था। ये मैंने आपको कल्चरल थ्योरी वाले सेशन में पढ़ाया है, अगर आपको याद हो ये पॉइंट तो। In an essay on criticism, Pope said what? बताओ। The correct answer is option number. ओहो, ओके, फिक्स हो गया गाइस, फिक्स्ड फिक्स्ड फिक्स्ड, कम बैक। ओके, ततानी के वर्क्स इसमें से कौन से नहीं है? The correct answer is second and fourth. This is by Karnad, and a touch of brightness is by Pratap Sharma. Name the drama which fall within the category of theatre of absurd. Rhinoceros falls in that category. Fourth, तो ए आपका एलिमिनेट हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड बर्थडे पार्टी हैरल पिंटर का वर्क है, राइनोसेरस यूजीन आइनेस्को। एंड गेम किसका वर्क है मुझे बताओ? एंड गेम इज अ वर्क बाय
Hmm. Beckett, very good. Samuel Beckett. John Bunyan authored the following. Choose the correct answer. He authored Pilgrim's Progress. We all know about this work. Grace Abounding and The Holy War. Okay. Which of the following works has been authored by De Quincey? Hudibras by Samuel Butler. So वो आपका बाहर आ जाएगा. Confessions of an English Opium Eater. Very famous work by him. We have Autobiography and Suspiria de Profundis. तीनों आपके बहुत famous work है. Especially आपका first and fifth work. Correct. Who among the following, after watching the performance of William Shakespeare's play Midnight's Dream, observed that it is the most insipid, ridiculous play that I ever saw in my life? That's a very harsh statement. Samuel Pepys said that, the very famous diarist, guys. John Evelyn and Pepys, ये दोनों important है आपके. इनके डायरी का year क्या था? 1660 to 1669. ठीक है, ये याद रखना. This was also the year of the Great War of, the Great Fire of London and the Great Plague. Name the playwright who wrote the play Epicone or the Silent Woman. Congreve, Kyd, Johnson or Farquhar. Ben Jonson was the one जिन्होंने ये play लिखा था. हाँ हाँ हाँ. एवलिन की डायरी का भी आप मुझे ड्यूरेशन बता सकते हो? एवलिन की डायरी काफी लंबे टाइम तक चली थी. एवलिन ने काफी अपनी लाइफ के बारे में उसमें लिखा है, along with many other social events, but पेप्स की डायरी की ड्यूरेशन कंपैरेटिवली शॉर्ट है. ओके. Abhijan and Shakuntalam makes the use of the following four languages. The correct answer is Sanskrit, Shaurasini, Maharashtri or Magdi. I'm sorry guys, sorry for my pronunciation. Choose the following options. The correct combo of the plays which made significant use of expressionistic techniques. Kiss Kisne? The Hairy Ape is obviously going to be the answer. Emperor Jones, Rapid Transit and the Adding Machine. Yes. Am I not all? Oh.
माउस देना। दूसरे से कौन सा लाए थे? मिक्स हो गए सर। ये वाला जिसकी लाइट जल ऐसे नहीं लाते, इसको ये भी आता है। Okay, am I audible now, guys? इस वाले से लाए। All clear. Cool. Okay, chalo. All right. Ben Johnson, Wycherley, Congreve. We have to tell the correct pair over here. So, Afra Ben, बताओ. School for Scandal किसका वर्क था? शेरिडन का ही वर्क था, करेक्ट? हम्म किसका वर्क था? फिफ्थ का ए. ये तो करेक्ट लग रहा है. So, the correct answer will be second, fourth, and fifth. Ben Jonson Walpole, which is also called the Fox. William Congreve, the country wife नहीं. Afra Ben, the Dutch lover, and School for Scandal. The theological treatise Ecclesiastical Polity was written by which amongst the following writers? It is by Richard Hooker. ठीक है? D will be the answer. Yes. What does the abbreviated term CCCS stand for in the context? Center for Contemporary Cultural Studies. C. ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में. Samuel Pepys' claim to fame rests on his diary. So C is the answer. It gets progressively easier as we move back in the cycles. Which of the following are plays written by Pinter? तो पिंटर के वर्क्स में आपको मिलेगा रूम इज अ वर्क बाय हिम विच इज एन अर्ली वर्क बाय हिम. सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, फैमिली वॉइसेस, रूम एंड नो मैन्स लैंड. ओके, चलो नेक्स्ट. चूज द प्लेस रिटन बाय लॉर्ड बायरन. लॉर्ड बायरन के प्लेस के नाम यहाँ पे पूछे गए हैं हमसे. The correct answer will be option number D. First, Sardanapalus, very famous work by him, Cain, and you're the two for Scary, an historical tragedy. Identify the work which has not been authored by the famous cultural critic Williams. And I told you कि Williams के works पूछे ही जाते हैं. So, Making of the English Working Class, which is by E.P. Thompson, work नहीं है Williams का. ठीक है, विलियम्स एज यू कैन सी हर साइकिल में आए हैं. Apart from Bertolt Brecht, who have influenced epic theater? Erwin Piscator and C. Max. Who among the following coined the phrase soft capitalism? किसने coin किया है soft capitalism? अगेन ये एक नई इन्फो है. ये हो सकता है आपको पहले से ना पता हो. निजिल या नाइगिल थ्रिफ्ट will be the answer. C. ठीक है, सी. ये हो सकता है आपको ना पता हो, यहां से याद कर लेना. कैलकटा क्रोमोसोम इज अ साइंस फिक्शन वर्क बाय अमिताभ घोष. बी विल बी द आंसर. ओके, अरेंज द फॉलोइंग टेक्स्ट क्रोनोलॉजिकली. अरेंज द फॉलोइंग टेक्स्ट क्रोनोलॉजिकली. क्या होगा इसका आंसर बताओ. द करेक्ट आंसर इज ACEDB. एक बारी इसको देख लो, फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाऊंगी. नीड यू पीपल टू रिमेम्बर दिस, क्योंकि अगेन यही एक सर्टेन सेट ऑफ वर्क्स हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक एंशिएंट ड्रामेटिस्ट से रिपीट होता है आपके एग्जाम में. ओके, सो सी विल बी द आंसर. चलो, एंड ये भी याद कर लो कि किसका कौन सा वर्क है. भरत का वर्क है नाट्यशास्त्र. शिमेंद्र का वर्क है I'll not say the name. बमा का वर्क है काव्य अलंकार. कुंटक का वर्क है वक्रोटी जीवितम. एंड आनंदवर्धन का वर्क है ध्वन्यलोक. Being a white man, in short, was a very concrete manner of being in the world, a way of taking hold of reality, language, and thought. What does the theorist signify by the term white man? The white man is a form of colonial authority over here. So D will be the answer. ठीक है.
डी हो जाएगा यहाँ पे, ये तो इजी क्वेश्चन था। Which among the following poems has not been composed by Shelley? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछती हूँ। White Man's Burden is a work by. White Man's Burden का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? When We Two Parted by Lord Byron is a work by Lord Byron. This is a work by Lord Byron, not by Shelley. Correct, D. Very good, very good. ओके, न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। द न्यू मूवमेंट इन लिटरेचर पॉपुलराइज क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। इसके लीडिंग फिगर्स थे टेट, वॉरेन, ब्लैकमोर एंड किनेथ बर्क। क्रिटिकल अप्रोच इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द स्टडी ऑफ नॉवेल्स एंड प्लेज। ऐसा नहीं है कि ओके, न्यू क्रिटिसिज्म हैज everything to do with poetry but not novels and plays. So C is definitely incorrect, which leaves us with only D option. A, B and D. Okay? चलो. So next question. Easy elimination हमारा लग गया. Correct. What aptly defines minor literature according to Deleuze? What aptly defines? The correct answer is deterritorialization. Why? बिकॉज जून के पेपर में आया टेरिटोरियलाइजेशन। जून के पेपर में क्या आया? टेरिटोरियलाइजेशन। तभी मैंने आपको बताया था डी टेरिटोरियलाइजेशन, रीटेरिटोरियलाइजेशन, रिजोम, टेरिटोरियलाइजेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स डेल्यूज एंड आपके ग्युटारी के हैं, अलोंग विद डिजायरिंग मशीन्स। डिजायरिंग मशीन्स ये आज ही हमने पीवाईक्यू से याद किया है। ओके, चलो। इंडिकेट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्क्स। क्रोनोलॉजी में अगर आप देखो तो बेओवुल्फ पहले भी आया था और अब फिर से एक और क्रोनोलॉजी क्वेश्चन जिसमें हमें बेओवुल्फ दिख रहा है। सो बेओवुल्फ तो सबसे पहले ही आएगा आपका, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी समा थियोलॉजिका कैन आल्सो कम फर्स्ट। बताओ। The correct answer is ACBET. So we have Beowulf, we have this, we have Divine Commedia, then we have your Canterbury Tales and उसके बाद आएगा Le Morte de Arthur. ठीक है? Yes. So B will be the answer. Which of the following statements are valid for post-colonial theory and literature? Abrogation, resistance and assertion form the basis of post-colonial thought. रीड करो इन्हें और मुझे आंसर बताओ। B. The correct answer is ACNE. Abrogation, resistance, and assertion form the basis of post-colonial thought. This is correct. C. Weep Not Child is the first novel in English by an East African writer. And E. Homi ke Baba, Said and Spivak are important post-colonial thinkers. Chalo. Antonio Gramsci's Prison Notebooks primarily deals with what? Philosophy, culture, literature and the role of intellectuals. Love, romance के बारे में वो बात नहीं करते थे. Hyperbole, metonymy, synecdoche and periphrases. Periphrases होता है जब आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो in a roundabout manner, right? So D का second. Metonymy, referring to something by the name of something else that is closely associated with it. So B ka first, synecdoche will be C ka third, C का third, C का third तो किसी में भी नहीं दिख रहा। हाँ, ये रहा, this one guys, ये होगा। A का fourth हो जाएगा intentional exaggeration, metonymy first, and ये हो जाएगा second। ठीक है, चलो। Given below are two statements. Non-fictional narrative follow the Robert-proof fence by Doris Pillington is based on the real-life experience of three Aboriginal girls who fled from Moore River native settlement. The names of the three girls are Molly, Daisy, and Mari. First is correct, second is incorrect. Anna is deeply okay. Anna Karenina. Anna Karenina is a work by. You need to tell me the author of Anna Karenina and the other work by this writer.
एना करेनिना. लियो टॉल्स्टॉय इज द राइटर. लियो टॉल्स्टॉय के मैंने आप लोगों को 2 वर्क्स बोले थे, याद रखना. एक एना करेनिना एंड एक वॉर एंड पीस. एंड ये दोनों वर्क आपके हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, ये दोनों याद रखना. चलो, सो एना एंड व्रॉन्स्की का अफेयर चल रहा होता है. सो एना इज डीपली कमिटेड टू द फैमिली एंड चिल्ड्रन. She was. Anna's choices were more an outcome of passion and instinct. They were, yes. Anna accepted the exile to which she was condemned. Anna's passionate spirit. B and E ho jayega. She became a victim of rampant patriarchal forces. Chalo. All happy families are alike. Every unhappy family is unhappy in its own way. This is the ending line of Anna Karenina, guys. This is the closing line. सॉरी, दिस इज द ओपनिंग लाइन. हाँ, दिस इज द ओपनिंग लाइन. ठीक है, ओपनिंग लाइन है ये, और ये काफी फेमस लाइन है. Which among the following statements are true? Miscegenation is a sexual relationship or marriage between the people of the same sex. Creole, how many times have we seen the word Creole? Creole is a language that has evolved from a pidgin but serves as a native language of a speech community. It does not serve as a native language. So, question आपसे पूछ रहा है true. Mulatto is black and white ancestry. D is correct and B is correct. Creole, native language of a speech community. Native language तो नहीं बनता मेरे हिसाब से. What do you think? B should be correct. Do you think B should be correct? But let's look at the rest of the statements. Australian indigenous population is termed as Red Indians. Indian tribal people are popularly termed as Aboriginals. No, it's not. It's not as. ठीक है, तो if we have to go with one, let's go with B and D. चलो. What among the following is not true about Anna Karenina? सेम पेपर में 3 क्वेश्चंस Anna Karenina पे. हाँ, ठीक है. The novel was published in 1872. The question is asking you not true. The correct answer will be first statement because 18. Okay, what was the actual year then? What was the actual year if not 1872, guys? बताओ. Tell me. You know there is a movie adaptation of this work also. 1878, absolutely. 1878. There's a movie 2012 में आई थी. 2012 was also the year of the movie Life of Pi. Life of Pi by Jan Martel. Jan Martel, and this movie was directed by Ang Lee. The essay discourse in the novel discusses that the novel is constituted by a multiplicity of divergent, contending social voices. भागतिन का work है discourse of the novel. Question के starting में ही हमें पता पड़ गया answer. Which of the following is true about Said's Orientalism? It was published in 1978. हमने इतनी बार देख लिया है that we can't forget it now. So A is definitely incorrect and that leaves us with only D statement, guys. Only D option, sorry. ठीक है, क्योंकि हम लोग को बहुत बारी हम पढ़ चुके हैं अब. Yes. Which of the following qualities of heroic treatment was not needed in the plays of the university wits? Okay. Lives of common figures was not needed in the plays. Heroic treatment of the lives of common figures. Splendid descriptions were there. Speeches were there. Violent incidents were there. Who among the following declared 1920 that there is no longer any intellectual life in England? I think it was Ezra Pound. Yeah, Ezra Pound. C. Hmm. Who among the following describe drama in the following words? A true play is three-dimensional. It is literature that works and talks before our eyes. The correct answer is Marjorie Bolton. ये बहुत ही once in many cycle appearing question होता है.
जो आपका फिर से कहीं ना कहीं घूम फिर के आ सकता है, जिसे याद कर लो यहीं से, ठीक है। Which of the following is true about Arthur Miller's play? Arthur Miller, After the Fall, is a semi-autobiographical play. The incident of Weichi deals with Nazi prosecution of the Jews. The prize anticipates economic crash. A आपका ट्रू है, B आपका ट्रू है, ओके। रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट सी डी ई आपकी इनकरेक्ट है। एंड ये अगर आपने नोटिस किया होगा, प्राइस पहले भी आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। प्राइस पे, क्रूशिबल पे पहले भी सवाल आया है, क्रूशिबल एंड प्राइस, ठीक है, ओके। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्रूशिबल वाज द वर्क जिसमें सैलम विच ट्रायल का रेफरेंस है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्रूशिबल इज द वर्क, ओके। We have to match the characters with the works. Okay, things fall apart. We have, इसमें से एक ही अफ्रीकन नेम लग रहा है, विच इज डी। सो डी का थर्ड अगर हम कर दें, डू वी गेट द आंसर? यस, वी डू गेट द आंसर। इसमें से सिर्फ एक ही नाम है जो लग रहा है अफ्रीकन, विच इज डी गाइस। सो ए का सेकंड हो जाएगा, विच इज वाइट सरगोसा सी। We have B का first, Wuthering Heights. We have Estella from Great Expectations and Kuofi from Things Fall Apart. Which among the following statements are true about Emily Bronte's Wuthering Heights? Which amongst the following, अच्छा आपका क्रिस्टोफाइन से हो गया था, ठीक है। वाइफ थी वो कोनकोवी की, यस। अच्छा, which among the following statements are true about Bronte's Wuthering Heights? The novel was published in 47. Bronte published this novel under the pseudonym Ellis Bell. Lockwood and Catherine Linton are the main narrators of the story. No, they are not. Catherine Linton was not the narrator. So A, B and D will be the answer. क्योंकि ये false है आपका. Wuthering Heights was the third novel. नहीं, Wuthering Heights was the only novel by Bronte. तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स काफी आसान थी आइडेंटिफाई करना, है ना। Okay. According to Freud, civilization is to some extent the cumulative product of our psychology. Choose the correct option. Sigmund Freud, civilization. अच्छा, उनका एक वर्क था civilization, जिसमें उन्होंने बात करी है about this. The purpose of human life is the pursuit of happiness. No. Freud बात ही नहीं करते थे इन सब चीजों के बारे में कि human pursuit of happiness. It's too positive for Freud. Man is wholly good. No. Abolition of private property will remove ill will. No. Acha, C, D and E will be the correct answer. Which among the following are the titles of the periodicals? बताओ. Metamorphosis is not a periodical by Kafka. It's a novel by him. So novella. So D आपका incorrect है, तो ये हट जाएगा. बाकी आप बताओ. Yes, Nandini. I'm coming to the Noida 62 center. Noida sector 62. Sector 62 नोएडा वाले सेंटर पे I'll be coming tomorrow. मैं वहां होंगी. आपका कौन सा सेंटर है? अगर आपका यही है तो प्लीज मुझे एग्जाम के बाद जरूर मिलना. ओके, चलो. सो यू आर सेइंग ABCE. ठीक है, एब्सोल्युटली राइट गाइस, क्योंकि बाकी सारे ही आपके पीरियोडिकल्स के नाम है. बट आपका मेन फोकस होना चाहिए टू रिमेम्बर, ओके. फ्रेंड एंड वॉचमैन, कॉलरिज का एक और हमारा पीरियोडिकल था वॉचमैन, ठीक है, ये भी याद रखना. चलो नेक्स्ट. सॉरी. गार्जियन वाज बाय एडिसन एंड स्टील. गार्जियन पीरियोडिकल एडिसन एंड स्टील के पीरियोडिकल का भी नाम था. स्पेक्टेटर के बाद उन्होंने उसको 1712 के बाद उन्होंने उसको स्टार्ट किया था. Choose the correct answer from the options given over here. Nation and narration, guys. Again, 1990. होमी के भबा. सो B का हो जाएगा सेकंड एंड A का हो जाएगा फोर्थ.
फ्रांस फैनन का मैंने आपको एक और वर्क बोला था याद रखने के लिए, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क। कैन यू टेल मी द ईयर ऑफ ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क? ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, इसका ईयर मुझे बताओ। ठीक है, कल्चरल एंड इंपीरियलिज्म, सईद एंड इमेजिन कम्युनिटीज बाय एंडरसन। चलो, which two cities are referred in Dickens? लंदन एंड पेरिस, लंदन एंड पेरिस, इजी पीजी। ओके, आपने क्या ईयर लिखा है? 1964, 52, 52। ओके, 52, 1952। 52 is the answer. Very good, very good. चलो, next question. Which among the following writers remark that I know of no more encouraging fact than the unquestionable ability of man to elevate his life by a conscious endeavor? The correct answer is Thoreau. अगर यूजुअली आपको मिलेगा थॉरियू एंड एमर्सन, इन दोनों की ही यूजुअली स्टेटमेंट्स आती हैं अगर अमेरिकन लिटरेचर से कोई स्टेटमेंट आ रही है। तो ये मैं थोड़ा सा, सिंस आप लोग लाइव देख रहे हो पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस, तो आपने नोटिस किया होगा इससे पहले एक एमर्सन की स्टेटमेंट आई थी ट्रूथ ऑफ लाइफ के ऊपर, एंड एक अब आई है एमर्सन की, Thoreau ki. What is not true about D.H. Lawrence's Sons and Lovers is a semi-autobiographical novel that is true, completely true. It is a psychological study of the familial love relationships of a working class. ये भी सच है क्योंकि उनका खुद का working class background था, अगर आपको याद होगा. Yes. The film adaptation was by Jack Cardiff. The storyline traces three generations of the Brangwyn family. It's story of Paul Morrell, whose love for his beloved overshadows the affectionate bond. E is correct. So इस particular question में D और E आपके not true हैं. Oh, his love for his beloved. नहीं, his love for his mother overshadows his love for his beloved. Sorry guys, ये इसका exact opposite novel में हो रहा होता है. इस particular work में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी आपको दिखेगा. इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बाय कार्ल यून. ठीक है, तो डी और ई इसका आंसर हो जाएगा. तो इससे हमें एक नया फैक्ट पता पड़ा. जैक कार्डिफ वाला पॉइंट याद रखना. इसकी मूवी अडेप्टेशन वाज डायरेक्टेड बाय जैक कार्डिफ. द पोर्ट मांटुआ इज, ये हम लोग कर चुके हैं. पोर्ट मांटुआ हम पढ़ चुके हैं, हमने एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में किया था. यस यस. हाँ. How many major forms of drama have been described by Bharat in his manual of dramaturgy? It is 10. Identify the poet of the following poems: Skylark, Badger, Gypsy, Camp, and First Love. The particular works are written by John Clare. John Clare का एक ही क्वेश्चन मुझे दिखा था, एक या दो क्वेश्चंस आए हैं आज तक. दिस इज वन ऑफ देम. हाँ, चलो. Which among the following statement is not true about NEP 2020? NEP 2020 के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है यहाँ पे? The policy recommends that English language should be the only medium is absolutely false. ठीक है? Yes. Who among the following is not associated with cultural imperialism? इसमें से कौन नहीं associated with cultural imperialism? It is obviously Stanley Fish, who is not associated. ठीक है? Arrange the chronological sequence in which the following works were published. Interpretive communities was given by Stanley Fish. ये एक point याद रखना. Interpretive communities was given by Stanley Fish. And आपका जो work था, can't recall the name of the work, guys. Sinful reading something. I can't exactly recall. ओके चलो. सो अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ये वर्क्स आपको दिखेंगे. इट्स अ मिक्स ऑफ डिफरेंट राइटर्स. वी हैव कल्चर इन नाकी व्हिच इज फ्रॉम द विक्टोरियन पीरियड बाय आर्नल्ड 1869. कितनी बार हम ये वर्क देख चुके हैं अपने सेशन में? कितनी बार? एब्सोल्युटली. सो कल्चर एंड एनार्की इज योर इंपॉर्टेंट वर्क. बहुत बार रिपीट हुआ है. कल्चर एंड सोसाइटी बहुत बार रिपीट हुआ है रेमंड विलियम्स का, which is 1958. इलियट का वर्क नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर 48.
टू हेल विद कल्चर, हर्बर्ट रीड। ये 2 वर्क्स आपको शायद नए दिखे हों, ये प्लीज अभी के अभी याद कर लो। इनको एक बार देख लो, इनको एक बार देख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Name the author writer who is not associated with British cultural studies. I. Richards will be the answer. ऐसे ही सवाल एग्जाम में बन जाए। Who is a psyche in John Keats' Ode to Psyche? Mortal woman and immortal woman, Cupid or Venus, an immortal woman. ठीक है? अच्छा। Which of the following was the immediate predecessor of the drama? It was immediate predecessor कौन था? Of drama. It was interludes. Interludes आपका एक ब्रिज की तरह है between your morality, miracle and mystery plays and your secular drama. उन दोनों के बीच के एक ब्रिज था interlude, which was for entertainment purpose, guys. In absurd theater, the characters often use disjointed, repetitive, cliched speech to bring about the comic action, suggest the working of the subconscious, suggest that meaninglessness is also about a meaning, defy the self-professed modern notion of dignity and wisdom. Obviously, A and D will be the correct answer. The term simulacra in postmodern discourse is about. The term simulacra. अभी सरप्राइजिंगली बॉडलियार का हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं दिखा था. इफ यू हैव नोटिस्ड, बॉडलियार का ये पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने. सो ए एंड बी विल बी द आंसर. Absence of vivid representation of reality and artificially produced reality dubbed as authentic. I'm a sick man. I'm a spiteful man. This is from Dostoevsky's Notes from Underground. Very famous work, very famous line. The character of this work is the underground man. We don't know his name. Yes, correct. Hello. Which among the following is not a character from Austen's novel Persuasion? Walter Elliot, Lady Russell, Miss Crawford, Frederick Wentworth. C will be the answer. आप लोगों ने क्या BBC adaptation देखी है इसकी? Yes, BBC adaptation देखी है of this particular work Persuasion. और इसकी इनफैक्ट मूवी भी है, वो भी बहुत अच्छी है. Thank you for appreciating. Which of the following statements, concepts are relevant for understanding postmodernism? बताओ. Has been instrumental in postmodern theory. Said is associated with colonialism, post-colonialism. Baudelaire is a seminal postmodernist text, Simulacra and Simulation. Frederick Jameson argues that parody has been replaced by pastiche. नहीं, parody has been replaced by, हाँ, D और E करेक्ट है. और क्वेश्चन आपसे रेलेवेंट ही पूछ रहा है ना, हाँ, तो BDE हो जाएगा आपका. यस. Okay. A simple heart, an outpost of progress, 6 feet out of the country, a horse and 2 goats. बताओ. A horse and 2 goats is a work by R.K. Narayan. So D का थर्ड हो जाएगा. ठीक है. And we got the answer just by that, guys. A का सेकेंड है गुस्ताव फ्लॉबर्ट, सिंपल हार्ट. प्लीज ये याद कर लो क्योंकि ये आते हैं आपके रिपीट होने वाले वर्क्स होते हैं यूजुअली. We have an outpost of progress, which is by Conrad. 6 feet of the country, Godimer, and a horse and 2 goats by Narayan. Okay. Tess of the Uberwills, a pure woman, Frankenstein, modern Prometheus. ये भी हमारा रिपीट हुआ है. The Castle of Otranto, a gothic story, and Vanity Fair, a novel without a hero. Okay, easy. And ये Tess of the Uberwills by Thomas Hardy. It's a very sad work. Edgar Allan Poe is often called as the originator. I'll let you know about that. Mahendra, I'll let you know about that. ठीक है. नीचे एक इंक्वायरी कॉल नंबर है, आप उसको सेव कर लो अपने फोन में. आप उधर भी बात कर सकते हो, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ठीक है. Yes. So a narrative which can be read at one sitting from half an hour to 2 hours
is how he defined the prose tale. Did not Shakespeare hate and despise Iago and Edmund? Identify the book in which this question has been mentioned. किस वर्क में क्वेश्चन मेंशन है? एस्पेक्ट्स ऑफ पोइट्री बाय जॉन कैंपबेल. यस, चलो. Identify the correct options in the theorization of nation by Bhabha. Nation arises from similarities among people. Okay, the correct answer will be B, C, D. एक तो nationalist representation is defined by ambivalence. Ambivalence की बात भी होमी के भभा ने करी थी. Nationalist representation engages with two contradictory modes of representation, and national discourses are split by disruptive double narrative movement. Okay, चलो. Which of the following is true about Tennessee Williams, a streetcar named Desire? मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था जब मैंने यूरोपियन लिटरेचर, अमेरिकन, ये सारे एक कंबाइंड सेशन लिया था. स्ट्रीटकार नेम डिजायर इज सेट इन न्यू ऑर्लिन्स. ठीक है. Stella is a character there. Laura and Stella are cousins. Tom Wingfield is not the narrator of the story. It ends with Blanche's defeat and departure. The protagonist is a Mississippi landowner. A and C are correct over here. Laura and Stella, I think they are real sisters, not just cousins. They are real sisters. Okay? Chalo. Given below are assertion reason. Toni Morrison and Rich have contributed to a distinctive style. Feminism, Rich observes, is the field where subjectivity and politics have come together. ये particular statement मैंने दी थी और पूछा था कि ये बात किसने करी है अपने सेशन में. अगर आपने क्लासेस देखी हैं, so A and R both are correct, as I told you, दोनों correct है. बट ये स्टेटमेंट आपके रीजन जो है ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. सो बी विल बी द आंसर. बट प्लीज रिमेंबर दिस गाइज, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था. ठीक है, बाय रिच, एड्रिन रिच. All writers in Chaucer have come from the middle class, have had good, at least expensive education. Where has Virginia Woolf explained it? In the work The Leaning Tower. In the work The Leaning Tower, C. Which of the following is not true about Raymond Williams' views on culture? Culture is ordinary, culture is a way of life is true. The masses do not participate in the creation of cultural values. So C will be the answer. At a given point in time, society dominant residual emergence. So C will be the answer. क्योंकि ये एक लौती बात है जो विलियम्स ने नहीं करी है. Transcendental Club was a group of American intellectuals for philosophical discussions. Which text among them is a short treatise on transcendentalism? It is Emerson's work Nature. ठीक है, Ralph Waldo Emerson's work Nature. Correct. Arrange the following works in chronological order. Yes. Okay, the correct answer is this. एक बारी इन्हें देख लो. India Wounded Civilization. नायपोल की एक इंडियन ट्रिलॉजी थी, उसके अंदर का ये वर्क है वुंडेड सिविलाइजेशन. 1977 Nizam Ezekiel got really offended and he wrote Naipaul's India and Mine. Midnight Children, Rushdie, 1981. We have seen this work multiple times. Desirable Daughters by Mukherjee, 2002. This is also a part of a trilogy. इसमें एक द मिस इंडिया एंड ट्री ब्राइड, ये दो और वर्क्स थे. ट्री ब्राइड एंड मिस इंडिया. ठीक है, ये दो और वर्क्स हैं ऑफ दिस ट्रिलॉजी. इंडिया कॉलिंग एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ अ नेशंस रीमेकिंग, आनंद गिरिधर दास. ये एक नया वर्क है मेरे हिसाब से, ये एक नया वर्क है आप लोगों के लिए. ये दो वर्क्स को याद कर लो यहीं से. ठीक है, ओके श्रुति, ओके, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग. ओके, चलो. Which of the following novels of Hardy was first published in an abridged form as Heart's Insurgent?
The correct answer will be Jude the Obscure. Jude the Obscure is his last work, guys. एक बात याद रखना, हार्डी के अगर chronology question आया, जैसे Tempest हमेशा लास्ट में जाता है, Winter's Tale हमारा लास्ट में जाता है, वैसे Jude the Obscure लास्ट में जाता है. Okay. Identify the correct option in Julia Kristova's definition of Cora. Cora. B. Liminal space, space of the marginalized, non-expressive, totally created by the bodily drives. Cora has no fixed identity and it precedes. ओके 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 ओके, मैं अभी सर को ही इन्फॉर्म कर रही थी. ठीक है. सो सी डी ई विल बी द आंसर टू दिस गाइस, क्योंकि कोरा क्या था, क्रिस्टोवा का, अगर आपको याद होगा, क्रिस्टोवा ने सिमियोटिक एंड सिंबॉलिक ऑर्डर की बात करी थी एंड उन्होंने ये किससे बोरो किया था, सिंबॉलिक ऑर्डर वाली बात. शी बोरोड इट फ्रॉम लाका गाइस. ठीक है, लाका ने बात करी थी अबाउट इमेजिनरी, रियल एंड सिंबॉलिक. ठीक है, यस. चलो, सो कोरा इज दैट स्पेस. Rolla Barthes, in his introduction to the structural analysis of narratives, proposed. ओके, यहाँ पे हमारा काम क्या है, पहला पॉइंट हमें ये याद कर लेना है, ये याद कर लो प्लीज. 1966 इंट्रोडक्शन टू द yes, introduction to the structural analysis of narratives, proposed 3 levels of narrative structure. Which among the following are the narrative structures proposed by him? इसमें से कौन से उन्होंने propose करे थे? A. Functions, actions and narration. Grammar and coherence were not given by him. Okay, याद कर लिया ना प्लीज, ये नाम याद कर लो प्लीज. एंड ये याद कर लो कि नैरेटिव स्ट्रक्चर्स के लेवल्स उन्होंने इस वर्क में दिए थे. बी. Perfect. Arrange the following works in chronological order. Donna Haraway is a name associated with your post-humanism. ठीक है, post-humanism, and she was the writer behind Cyborg Manifesto. ठीक है, Manifesto. Please ये याद कर लो. This is important. Okay. All right. So the correct answer to this is BAEDC. BAEDC will be the sequence. An introduction by Kamala Das is a short story. Nahi, it's a poem of resistance and protest. C. C will be the answer. Chalo, perfect. Waiting for the Mahatma is by Narayan. So Many Hungers, Bhavani Bhattacharya. At this point in time, ये तो हमारे टिप्स पे ही आ गया है. Distant Drum, मनोहर मलगोमकर. Like if any of these works will come in our exam, instant answer आएगा, instant answer with full confidence. So हमें यहाँ पे टाइम ही नहीं लगेगा. चलो, identify the correct order of the publications given below. Nation narration, guys. Nation narration. Wretched of the earth. Okay. Alright, the correct answer will be, मैंने यहाँ पे add कर दिए हैं year, एक बार इन्हें देख लो. 1961 is the year for this and black skin white mask का आपने मुझे दिया था 1963, है ना? Yes. चलो आंसर बताओ. Thank you so much. आंसर बताओ. अच्छा, आंसर तो मैंने बता ही दिया है. अच्छा, एक बार ये देख लो, फिर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेशंस एंड नेशनलिज्म, वेरी सिमिलर टाइटल्स, दोनों के बहुत सिमिलर टाइटल्स हैं. अर्नेस्ट ग्लीनर 1983 एंड होमी के भवा नेशन नरेशन 1990. द टर्म गाइनोक्रिटिसिज्म रेफर्स टू. Gynocriticism refers to production and analysis of writings by women on women या फिर production of writings on women by men. Men से तो कोई लेना देना ही नहीं है. So D will be the answer. Who was the one who gave gynocriticism? Can you tell me? Who was the one who gave us gynocriticism? Structure of Feeling by Williams. All right. ठीक है. Discourse by Foucault. Heteroglossia Bhakhtin and Ambiguity Empson.
Hmm. Elaine Showalter. Perfect, guys. Literature of their own. Prose romances preceded the emergence of novel as a popular literary genre. Which text among the following fall under the category of prose romance? The correct answer will be Orinoco and the Fair Jilt. Okay, these are prose romances. Correct. In Antonio Gramsci's definition of intellectual, what is the correct option? Okay, Gramsci gave us organic intellectual and traditional intellectual. ये दो उन्होंने हमें प्रोवाइड करे थे कॉन्सेप्ट. एवरी सोशल ग्रुप ज्वाइनिंग, सीधा आंसर देख के करेक्ट आंसर्स लिख लेते हैं. एवरी सोशल ग्रुप ज्वाइनिंग द वर्ड ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट्स ऑर्गेनिकली अ strata of intellectuals. Intellectuals give homogeneity and awareness of a social group. This is correct. This is correct. C does not make any sense. Very negative a statement. D is organically bound to be bourgeois. Very negative. Something which Gramsci wouldn't talk about. And E will be the correct answer. Okay. We have these writers and their works. आपको match करना है. Probably unknown names for you. तो मैं यहाँ पे सीधा आंसर दिखा देती हूँ. ये फोर्थ हो जाएगा, बी का थर्ड है, सी का फर्स्ट एंड ये सेकंड. ठीक है, एक बार देख लो इनको, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊंगी. हम्म. करेक्ट. चलो. ओके. Which among the following writers are popular for partition narratives? Which among the following writers are popular for partition narratives? इसमें से कौन कौन पार्टीशन नैरेटिव्स के लिए फेमस है? एक तो आपकी कृष्णा सोपती, सुपर फेमस. सरोस एंड राही, बिकॉज भारती मुखर्जी इज एसोसिएटेड विद diasporic themes. Shashi Deshpande was known for her feminist writings. She specifically said that I'm not a feminist. Culture, but her works have female characters and it contains feminist themes. Culture is one of the two or three most complicated words in the English language. This is mainly because of several different thought related, though have emerged at a particular moment throughout its long history. I think both are correct. Huh. Okay. Discourses are cultural and social practices rooted in psychic and physical. Hmm. Comparatively easy. तो मैंने आप लोगों को डिफिकल्ट वाले करा दिए ना अपने सेशन में. दिस वॉज बाउंड टू लुक इजी गाइस. एंड एज वी गो, जैसे जैसे हम पीछे जा रहे हैं ना अपने साइकिल्स में, वैसे वैसे क्वेश्चंस इजी होते जा रहे हैं. Discourses are cultural and social practices rooted in, but the whole point of this session is to revise information. Please remember, the whole purpose of this session is to revise, because I showed you people कि बहुत सारी चीजें repeat हो रही हैं आपके papers में. तो यहाँ से easy, difficult को छोड़ो. Keep that aside. Keep the level of the questions aside. Make sure that you just know the information. Okay? Yes. चलो. Next, Room of One Zones is a feminist essay about women's education, exclusion, and writing by Woolf. In other words, is a collection of essays written by Said on contemporary ideas such as psychoanalysis के बारे में वो बात ही नहीं करते थे. So, Satan one is true, but second is false. Who among the following is the earliest available Indian dramatist? Bhavabhuti, Kalidas, Bhasa, or Rajshekhar? It is obviously C. Bhasa. ठीक है. Arrange the works in chronological order by Richard Hogarth. Richard Hogarth के वर्क्स है. ये आपको chronology में अरेंज करना है. मैं पहले ही दिखा देती हूँ आपको आंसर, क्योंकि आपको याद करना है यहाँ पे मेजरली. ठीक है, याद करो. Imagined Life is by Hogarth and Imagined Communities is by Anderson. ठीक है. Imagined Communities is by Benedict Anderson. Okay. All right. Very, very good. D. D will be the answer.
हाँ, एक बारी देख लो द यूजेस ऑफ लिटरेसी। अभी तक हम 3 से 4 बार ये नाम देख चुके हैं अपने क्वेश्चंस में, राइट? सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हायर एजुकेशन डिमांड एंड रिस्पॉन्स 70, लोकल हैबिटेशन 88, सॉर्ट ऑफ क्लाउनिंग 90 एंड एन इमेजिन लाइफ 91. Which among the following are not mentioned as the aspects of the novel by Foster? According to him, imagination and your harmony are not mentioned as aspects of your novel. ठीक है? Which of the following is true about Samuel Beckett's Waiting for Godot? Which of the following are true about Samuel Beckett's Waiting for Godot? Hmm. It illustrates when okay, easy है, D और E होगा इसका आंसर. Static representation without structure or development, and its incoherent dialogue suggests despair of a society. Which among the following is not written by a sports person? What sort of a question is this? The correct answer is A Country Called Childhood, a memoir. Yes. क्रोनो वाले में क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रही है. देखो, जो भी सेशन में हमने देखा है ना, आप सिर्फ उसको भी नजर से घुमा लोगे, बहुत है तेजस्वी. बाकी भगवान पे छोड़ दो. लीव इट ऑन गॉड. देखी जाएगी कल की कल. स्टॉप वरिंग. जो आता है उस पे ज्यादा ध्यान दो. ओके, जो आता है उस पे ज्यादा ध्यान दो. चूज द करेक्ट ऑप्शंस इन द न्यू हिस्टोरिस्ट रीडिंग ऑफ दलित राइटिंग. ओके, द करेक्ट आंसर विल बी ए. अच्छा, ये हमने करा था, ये हमने अपने इंडियन वाले सेशन में करा था. Which of the following characteristics of She Stoops to Conquer is not correct? It is endowed with ingenious and lively plot. It does not cast excellent characters. B, very subjective question. हाँ, correct. चलो. Which work of Bacon explains the new logic or inductive method of reasoning? किस particular work में उन्होंने inductive method of reasoning दिया था? It was Novum Organum. ठीक है? हाँ. Which one of these is not a literary journal or a magazine? Egoist Criterion, the English Review, the 101 Dalmatians, obviously. Name the poet who has composed the following. These are works by Blake, guys. The Little Boy Lost, The Little Boy Found. These are all from Songs of Experience and Songs of Innocence. 2022, guys. 2022 is here. 2022 के क्वेश्चंस और करेंगे, देन वील एंड द सेशन. ठीक है, स्टॉप वरिंग. इन ऑल आप लोग फिर कितने साइकिल्स कवर कर चुके होगे? 8 साइकिल्स. ठीक है, 8 साइकिल्स आपकी कवर हो गई. बस ये और कर लो. ठीक है, ये और कंप्लीट कर लो. 8 साइकिल्स के पीवाईक्यूज आपने आज के सेशन में कर लिए हैं. सोचो, 8 साइकिल्स में कुछ तो रिपीट हो जाएगा, कुछ तो. 3-4 क्वेश्चन भी आ गए इसमें से, कितना भला हो जाएगा हमारा. Although, looking at the pattern, more than 3-4 questions have been repeated, right? Chalo. Okay. So identify the one that has not been paired correctly. Poetry and Repression, Strangers to Ourselves. Madness and Civilization. Whose work is this? Madness and Civilization. किसका वर्क है ये? किसने बात करी है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन? किसका वर्क है? वेरी फेमस वर्क, गाइस. बताओ, जल्दी बताओ. Which of the following articles, and also please remember the rest of the works. Criticism in Wilderness by Jeffrey Hartman, Poetry and Repression by Bloom and Christopher, Stranger to Ourselves. It is by Madness and Civilization is by Foucault. भागते नहीं, Foucault. Foucault ने बात करी थी, ठीक है? Michel Foucault. Which of the following articles of Indian Constitution made the provision for the use of English alongside Hindi? It was Article 343. मैंने ये पढ़ाया है English in India session में. Corporate author कौन होता है? A writer who belongs to the corporate company. C will be the correct answer to this. थ्योरिस्ट, कौन से थ्योरिस्ट ने हमें मेटोनमी एंड मेटाफर का डिस्टिंक्शन दिया था? इट वाज जैकोब्सन.
पैराडिग्मेटिक सिंटैग्मेटिक भी एक्सिस के बारे में वहीं पे हमने पढ़ा था. Tennyson, in the following lines, reflects what? Yet I doubt not through the ages one increasing purpose runs, and the thoughts of men are widened with the process of the suns. He's reflecting upon evolutionary faith. Hmm. B. Okay. B ho. Sydney's Arcadia was influenced by which amongst the following? Metaphysical poetry तो exist ही नहीं करती थी तब. Spanish romance of Montemor. ठीक है? चलो. Which of the following is not true about lyrical ballet? Which of the following is not true about lyrical ballet? It is a manifesto that is true. It turns English poetry away from the social and intellectual sophistication of the 17th and 18th century out of the confines of reason, unspoiled beauties of nature. C will be the correct. It is particular about the form and structure of a poem. अच्छा, not true पूछा है ना? Not true. This is not true, obviously. चलो, D. J.H. Miller, one of the leading exponents of deconstruction, makes a deconstructionist reading of which of the following poems of Shelley. Acha, I'll give you some movement of silence, guys. Why? Because J.H. Miller, आपको याद होगा जून के पेपर में एक क्वेश्चन था बारबरा जॉनसन का. बारबरा जॉनसन का एक क्वेश्चन था. बारबरा जॉनसन के क्वेश्चन में डीकंस्ट्रक्शन के ऊपर हमें स्टेटमेंट्स दी थी जिसमें जेएच मिलर की स्टेटमेंट भी थी. जो इनकरेक्ट वाली थी ना वो जेएच मिलर की स्टेटमेंट्स थी. सो अगेन जो नाम आपके पेपर में आ गया है उसी के अराउंड क्वेश्चन बन रहा है. यस. ओके, सो द करेक्ट आंसर टू दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ. ए होगा. ए. ओके. द डिजर्टेड विलेज बाय गोल्डस्मिथ. द डिजर्टेड विलेज ये भी आपके बार बार आया. यस. ओके. द डिजर्टेड विलेज गाइस हो गया हो गया हो गया हो गया. फिक्स्ड. ओके. Besides being ये हो गया. Next question. Who among the following in the article Fleshy School of Poetry attacked the pre-Raphaelites? It was Robert Buchanan जिसने अटैक किया था. ठीक है. Pre-Raphaelites कब आपका एस्टैब्लिश हुआ था? 1848 में. जर्म कब आया? 1850 में. जर्म was a journal of the PRB. Okay? Yes. थोड़ा सा बचा है. Stick around, okay? Stick around. Who among the following critics appropriates the following statement by Marx? They cannot represent themselves, they must be represented. It was Chandra Talpade Mohanty who said this. ठीक है? Who resonated with what Marx said. Under the Net is written by. Under the Net is written by John Fowles, Iris Mudrow. Iris Mudrow is the writer of Under the Net. Yes. बस खत्म हो गया. 2022 तक खत्म कर लो. देखो एटलीस्ट यू वुड हैव द सेंस ऑफ कंप्लीटिंग 8 साइकिल्स था. चलो. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर. हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा था. पिंटर का ईयर अगर आप मुझे बता पाओ तो बहुत अच्छा हो जाएगा. W.H. Auden was not a recipient of Nobel Prize. हैरल पिंटर का मैंने ईयर आपको बताया था. मुझे बता पाओ तो आई विल बी हैप्पी. हाँ. हम्म. चलो. फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स. सीक्वेंस आपको बताना है. द करेक्ट सीक्वेंस विल बी अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, वुंडेड सिविलाइजेशन, अ मिलियन म्यूटनीज एंड नाउ. ठीक है. एंड ये वो वाले वर्क्स हैं जो मैं बता रही थी आपको. इंडियन ट्रिलॉजी बाय नायपॉल. और ये सारे वर्क्स नायपॉल के ही थे. The ancient and modern quarrel in Western literary criticism appears during. The ancient modern quarrel appears during the 16th century CE. Yes. Okay. In which year Miles Coverdale translated the Old Testament of the Bible? The year was 1535 when it was translated. Yes, C.
Who is the author of a literature of their own? Elaine Showalter is the writer. And what is the year, guys, if you can tell me? क्योंकि बहुत बारी हम ये वर्क देख चुके हैं अब, लिटरेचर ऑफ देयर ओन. What was the year of this work? Who said there can be, and there ought to be the difference between the language of prose and metrical composition? It was Coleridge. There can be and there ought to be the difference. I think it was Coleridge who said that there is a difference. चलो ये वाला क्वेश्चन वो कर दो, इग्नोर कर दो, because I feel that it was Coleridge who gave the distinction. Wordsworth, on the other hand, said there is no distinction. But at the same time, language आप क्या यूज कर रहे हो उससे आप प्रोज और पोइट्री को डिफरेंट बनाते हो. ठीक है. लैंग्वेज एंड मीटर, क्या मीटर यूज कर रहे हो. स्टुअर्ट हॉल बिलोंग्स टू Dash School of Cultural Studies. He belongs to the Birmingham School of Cultural Studies. When was Haruki Murakami's Men Without Women published? It was 2014. ठीक है? Yes, 2014. Which of the following critics is associated with the term contrapunctual reading? It was Edward Said. कौन से work study करे थे उन्होंने? Mansfield Park by Austen and Moby Dick by Melville. Okay. Which among the following is an incomplete poem by Shelley? Which among the following is an incomplete poem by Shelley? The correct answer is option number 1, The Triumph of Life. Yes, absolutely right. The book Women Beware Women was published in the year 1657. Women Beware Women is a work by. Yes, 1657. कि किसका वर्क है Women Beware Women? बताओ. A man can be destroyed but not defeated. The following line works, which of the following works glorifies this as its predominant theme? The correct answer is The Old Man and the Sea. The Old Man and the Sea is a work by Ernest Hemingway. Very important work. Middleton का work है Women Beware Women. Who among the following attached himself to the Earl of Nottingham's theatrical company? It was Christopher Marlowe जिन्होंने अपने आप को attach किया था to this particular company. The heroic couplet is a pair of 12-syllable lines that rhyme, 10-syllable lines that rhyme, 8-syllable lines that do not rhyme. It is 10 syllables that rhyme. जिसमें आपके पास एक couplet होता है, 2 lines which are there. ठीक है? Yes. Which of the following is not a part of Amitabh Ghosh's Ibis trilogy? The Calcutta Chromosome is not a part of this trilogy. Okay. Who among the following has authored the Revenger's Tragedy? The correct answer is Cyril Tournier, who is the writer of the Revenger's Tragedy. ठीक है? Who is the author of the poem House of Fame? House of Fame is written by Chaucer. Very, 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 very famous work. जून के पेपर में भी जो आई गेस क्वेश्चन आया था जिसमें चौसर के वर्क्स के नाम थे, लेजेंड ऑफ गुड वुमन, हाउस ऑफ फेम भी था मेरे हिसाब से उसमें मेंशन्ड, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, हाउस ऑफ फेम, लेजेंड ऑफ गुड वुमन. Who is the author of the essay Three Women's Text and a Critique of Imperialism? The correct answer is Spivak, 1985. ठीक है? Yes. Canadian Multiculturalism Act was passed this year. It was 1988. 1888 was the year of IPA. ठीक है? International Phonetic Association. Please ये याद रखना, starting में ही पढ़ा था हमने ये. Goitra Bahadur wrote an autobiographical novel titled The Coolie Woman. The Coolie Woman. ठीक है? Yes. Tolka Poem is a book of grammar and poetics written in the Dash language. It is, I suppose, Tamil. हाँ, Tamil language. ठीक है? Subramani's Fantasy Eaters is a collection of short stories. अब यहाँ पे आप खुद चीज देखो, ये 2022 के जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ये 2022 के जो ये आपको कॉन्टिन्यूस जो सवाल अभी दिखे, क्या ये आपके सिलेबस से लगे?
क्या ये हमारे सिलेबस से लग रहा है? ये भी तो हमारे कन्वेंशनल क्वेश्चंस नहीं है, बट ये आए हैं। अगर 2022 की साइकिल में हम बैठे होते, हमें ये बताते हमें डिफिकल्ट लगता। सो गाइस, इट्स अ पैटर्न, इट्स नॉट लाइक यू एक स्पेसिफिक साइकिल, वो कोई एक साइकिल तो थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है, विच अगेन मे बी ये वाली इजी आ जाए, दिसंबर वाली, राइट? सो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि शायद से ये ठीक आ जाए। होप सो। हमें आता हो, बस हमें आता हो, इजी डिफिकल्ट छोड़ो, हमें आता हो। The Writer and the World by V.S. Naipaul is a collection of essays by him. ये भी मैंने पढ़ाया है, The Writer and the World, ये भी मैंने पढ़ाया है, ये वर्क भी मैंने कराया है सेशंस में. It is significant that the productive capacities of this third space have a colonial or post-colonial provenance. Who has said the above lines have been written by भभा, because third space की बात तो भभा ने ही करी है. Yes, चलो. Find the correct explanation of the term aporia. Aporia by Derrida. It denotes a speaker's or character's deliberation or on an irresolvable question. It is an address to something inanimate. It refers to a form of denial of existence. It is denotes a speaker or character's deliberation on an irresolvable question. Which writer does not belong to the angry young men movement? It is Lurkin. नहीं, Seamus Heaney, who does not belong. क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना, एंग्री यंग मैन से कौन नहीं बिलोंग करता? हाँ, Heaney. लर्किन भी नहीं करते वैसे तो एंग्री यंग मैन से। ये तो क्वेश्चन ही आपका गलत लग रहा है मुझे। दोनों ही नहीं करते हैं क्योंकि मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, मूवमेंट पोएट्स हैं। Should poets bicycle pump the human heart or squash it flat? Man's love is of man's life, a thing apart. Girls aren't like that. The above lines are written by Kingsley Amis. Kingsley Amis, who is associated with your kitchen sink drama. Yes. Which of the collections of poems are not written by Mina Alexander? इसमें से कौन से अलेक्जेंडर के वर्क्स नहीं है? रॉस सिल्क इज अ वर्क बाय हर, सो ये भी हट जाता. एंड बी एंड ई, ठीक है, बी एंड ई आर नॉट वर्क्स बाय हर. विच ऑफ दीज आर नॉट फॉर्म्स ऑफ फ्लैश फिक्शन? विच आर नॉट फॉर्म्स ऑफ फ्लैश फिक्शन? बताओ. फ्लैश फिक्शन होता क्या है? एक फिक्शन होता है विच इज वेरी शॉर्ट, contains only few words, you can say. It's a very short form of fiction. That is flash fiction. Okay. So, that will be C and D. Novelette and your short story will be are not exactly the forms of flash fiction. Okay. Because only few words are there. Identify the poems termed as pastoral elegies. Identify the poems termed as pastoral elegies. Lycidas, Adonis, ये सारे pastoral है आपके. So A, C and D, Thyrsis. ओके. इन मेमोरियम AHH किसका वर्क है? ये मुझे बता सकते हो. इन मेमोरियम AHH आर्थर हैलम के लिए लिखा था. In memoriam AHH. It's also an elegy, but it's not a pastoral elegy. Whose work is in memoriam AHH? इन मेमोरियम AHH किसका वर्क है? ओके. करेक्ट कॉम्बो आपको बताना है. द करेक्ट आंसर विल बी A, B and C. ठीक है. ये क्रोकोडाइल मेरे हिसाब से हमारे एनसीईआरटी में प्रिस्क्राइब्ड वाली है. टेनिसन का वर्क है. करेक्ट. आइडेंटिफाई द करेक्ट ones among the following. Kolatkar uses colloquial speech in his poems. Boatwright by talks about a ride in the is composed by Chitre in Ethiopia is a poem in Africa by Kolatkar. So A, B and D are correct, guys. Okay, we have हमें करेक्ट कॉम्बो बताना है यहाँ पे भी. A is incorrect, B is incorrect. ये तीनों आपके करेक्ट हैं. ठीक है. सो C, D, E
C will be the correct answer. Okay. Ferric. Ferric and spondy do unstressed और ये टू स्ट्रेस्ड. बताओ. ये आपका प्रोसिडी का क्वेश्चन है मेजरली. द करेक्ट आंसर विल बी बी सी डी ई. ये आपके करेक्ट कॉम्बोज हैं क्योंकि स्पॉन्डी इज टू स्ट्रेस्ड नॉट थ्री. टू. ओके. सो बी सी डी ई आर करेक्ट. ओके. हाँ. बस थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा बचा है. Which of the following observations are true about Roland Barthes' contributions to literary theory? He rejected the model B, C, D, E. देखो आंसर्स देख लेते हैं. अच्छा ऐसा करते हैं, अब आपको आंसर नहीं करो, आप बस आंसर देख लो, ठीक है, कि क्या आंसर है. नजर से घुमा लो, बिकॉज आई रियली वांट कि एटलीस्ट 8 साइकिल्स हमारी कंप्लीट हो जाए, ताकि हमें तसल्ली रहे कि हम देख के आए हैं ये सारे रिसेंट वाले क्वेश्चंस. ठीक है. चलो. Which among the following is true about the Tractarian movement? ये कौन सा मूवमेंट है हमारा? ऑक्सफोर्ड मूवमेंट. याद हो आपको विक्टोरियन में जो हमने देखा था. आंसर भी मत करो. डोंट इफ यू डोंट वांट टू आंसर इट्स फाइन गाइस. जस्ट लुक एट द आंसर्स. ठीक है. एक बार आंसर्स नजर से घुमा लो बस. दैट्स ऑल. ठीक है. मानो कि यू आर जस्ट स्किमिंग. सो बी सी डी विल बी द आंसर. ये है आपका ऑक्सफोर्ड मूवमेंट विक्टोरियन में जो था. इसमें न्यूमैन आपको मिलेंगे, केबल आपको ये फिगर्स मिलेंगे. ट्रैक्ट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. आपके नेशनल अपोस्टेसी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. सो बी सी ई विल बी बी सी डी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके. यहाँ पे पूछा है एलेन शोवाल्टर ने जो हमें 3 फेजेस दिए थे वो थे फेमिनिन, फेमिनिस्ट, फीमेल. किस सीक्वेंस में थे? इसी सीक्वेंस में थे. फेमिनिन, फेमिनिस्ट, फीमेल. ठीक है. चलो. न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनएलपी. द करेक्ट आंसर विल बी, एक तो न्यूरो इन एलएलपी मींस आवर बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय आवर सेंसरी एक्सपीरियंसेस. एनएलपी आपके रिचर्ड बैंडलर एंड ग्राइंडर ने ये है डेवलप करे थे. एंड इट कवर्स इनविजिबल थॉट्स एंड विजिबल फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस. ओके. कंज्यूमरिज्म की थीम आपको किन किन वर्क्स में यहाँ पे मिलेगी? सेंट जॉन ऑफ स्टॉकयार्ड्स एंड डेथ ऑफ अ सेल्समैन. डेथ ऑफ अ सेल्समैन बाय आर्थर मिलर is a very famous American drama, जो अमेरिकन ट्रेजेडी आप कह सकते हो. मॉडर्न मैन. ओके. जॉनर ऑफ साइंस फिक्शन स्पेक्युलेटिव फिक्शन से बिलोंग करता है. ए, डी और ई. वंदना सिंह का वर्क और आपके प्रिया एंड गौतम भाटिया, ये दोनों वर्क्स इससे हम फेमिलियर है. सेटनिक वर्सेस इज मोर ऑफ अ philosophical, allegorical I would say, but not exactly science fiction. ठीक है. क्योंकि रिलीजन का आपको मिलेगा उसमें आइडिया. क्रिटिक ऑफ मोहम्मद. हाँ. किम्बर्ली क्रिंशॉस टर्म इंटरसेक्शनैलिटी इज वाइडली यूज्ड फॉर. किम्बर्ली का ये जो टर्म था ये आपका रेशियल जस्टिस के लिए, क्योंकि ये हम पढ़ते हैं ब्लैक फेमिनिज्म में. किम्बर्ली क्रिंशॉ का इंटरसेक्शनैलिटी वाला टर्म. कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये टर्म किसने दिया था. चूज द राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एटवुड्स नॉवेल्स, ये मैंने ऐड कर दिया है. 76, 85, 96, 2000 एंड 2019. ठीक है. चलो एक बार देख लो, इस पे एक बार नजर मार लो, ये इंपॉर्टेंट है. हम्म. Guigi Thiong'o's article Literature in Schools talked about what all things. उनका मानना था कि एक तो इंग्लिश को आप पढ़ा रहे हो, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट, क्योंकि आप अपने लोगों को अपनी हिस्ट्री नहीं याद रखने दे रहे हो. देयर इज टू मच फोकस ऑन इंग्लिश ऑन द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में. दिस आर्टिकल डिस्कसेस द रेलेवेंस एंड एडुकेसी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. It reflects negatively upon the literature taught to the Kenyan students, and it argues that cultural imperialism distorts people's vision of history. जो मैंने आपको बोला कि जो आप सिखा रहे हो आप डिस्टॉर्ट कर रहे हो अपनी हिस्ट्री को. ग्राफिक नैरेटिव्स डिपिक्ट पॉलिटिकल क्राइसिस, इसमें से कौन सी ग्राफिक नैरेटिव्स? बी, सी एंड डी. ठीक है. यस. चलो ऑलमोस्ट देयर गाइस, ऑलमोस्ट देयर.
All right. Identify the novels that were published in the 1980s and the 1990s. The correct answer is A, B and C. ये आपके works थे जो publish हुए थे in the 80s and 90s. What does Aristotle mean by the phrase language with pleasurable accessories? The correct answer is a language full of rhythm and a language spear-added with a song. Okay. According to Barthes, which one of the following quotes are common to all narratives? Which of the following? Symbolic quote के बारे में I guess उन्होंने हाँ बात करी थी. Synthetic quote उन्होंने नहीं दिया था. Synthetic quote उन्होंने नहीं दिया था. रोला बार्थ ने. Which among the following are true about Pinter? Pinter was influenced by Beckett, the theater of absurd. बी करेक्ट है. स्टेनली इज अ कैरेक्टर इन द बर्थडे पार्टी. उसको टॉय ड्रम गिफ्ट में मिलता है, मेग उसको देती है. एंड बिट्रेयल इज अ स्टोरी ऑफ अ मैरिड कपल. ठीक है. Which of the following are Plato's main objections against poetry? The poet is an imitator. ये तो correct होगा ही obviously. The poet by fueling passions and emotions weakens the reasoning absolutely, and the poet has no knowledge of the world. क्योंकि जो वो लिख रहा है वो far fetched from, thrice removed from reality है. Identify the correct pairs over here. The correct pairs are A, C and D. ठीक है. Yes. Who among the following were poet laureates of England? The poet laureates of England were Alfred Austin and Robert Bridges. Okay. All right. लेकिन आपको मैच करना है यहाँ पे. मैं यहाँ पे आंसर दिखा देती हूँ सीधा. ए का हो जाएगा थर्ड, द शायर्स. वी हैव बी का फोर्थ, नॉर्थशिप. सी का सेकंड, हंगर हरी ऑन डाउन एंड अगेंस्ट रोमांटिसिज्म बाय जॉन वेन. ओके, नेक्स्ट. आयरनी, मेटाफर, एंटाइथेसिस, सिमिली. इजी क्वेश्चन है तो ये हम स्किप कर देते हैं. चलो. हैमलेट, मैकबेथ, जूलियस सीजर एंड ओथेलो. अब आपको याद होगा जो ट्रेजेडीज है हमारी वो इस सीक्वेंस में आती है, HOKM, राइट. अब इसमें हमें पता है कि HOKM में जूलियस सीजर उससे पहले आया था, तो ये सेकंड हो जाएगा. H हो जाएगा ये KOM. इजी, इजी क्वेश्चन. ओके. ओ हेनरी, ब्यूटी, हार्ड टू फॉरगेट. यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है ऑल द एक्चुअल मैचिंग्स. एक बार मैं मैच भी कर देती हूँ. ए का हो जाएगा फोर्थ, हार्ड टू फॉरगेट. रुडयार्ड किपलिंग का वर्क है आपका द लास्ट सूटे. ऑस्कर वाइल्ड का मेरे हिसाब से है एट वरोना, एंड ये है ब्यूटी. ठीक है. According to Auden, the importance of being earnest is the purest example in literature of a verbal opera. Possess profound insight into the range of the arts. Both are true, guys. The teaching on non-native literature to the students of ELT is arid. The negative responses in ELT classroom can create an interesting classroom situation. Okay. 19th century, Gilman Perkins asserted economic independence over voting rights, and reason भी true है, as power seekers was not socially acceptable in 19th century America. इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है द येलो वॉलपेपर, वो याद रखना. रोला बार्थ डिस्क्राइब्स टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ टेक्स्ट, रीडरली, राइटरली, ये हमने पढ़ रखा है, राइट. लैंग्वेज इज द विंडो थ्रू विच वन सीज द वर्ल्ड, ये आपकी सेकंड जा नहीं रही है, एक्सप्लेन नहीं कर रही है, बट करेक्ट दोनों है. ओके. यू हैव टू मैच द वर्क्स ओवर हेयर. यहाँ पे मैं आपको फिर से आंसर दिखा देती हूँ. ठीक है, एक बार इसको देख लो. यस, फिर हम मूव करते हैं. ओके. मैल्कम, ब्रैडबरी, किंग्सली एमिस. आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का थर्ड है, द हिस्ट्री मैन. बी का फोर्थ है विच इज चेंजिंग प्लेसेस. किंग्सली एमिस का हो गया लकी जिम, एंड ये लकी जिम है आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क इन योर किचन सिंक ड्रामा, गाइस. किचन सिंक ड्रामा में डोमेस्टिक आपको रियलिज्म दिखता है जिसमें इंपॉर्टेंट. प्रॉब्लम्स ऑफ दोस्तों, सरप्राइज्ड बाय सिन, स्टेनली फिश. सरप्राइज्ड बाय सिन आपका जून के पेपर में आया था, सो सी का फर्स्ट हो जाएगा, एंड ये रिमूव हो जाएंगे. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड. ए का सेकंड है, ठीक है, टोटोरोफ, ये भी आपका रिपीट हुआ है. प्रॉब्लम्स ऑफ दोस्तोवस्कीज पोएटिक्स इज बाय भागतिन. दिस इज बाय फिश एंड दिस इज बाय मारी हेट. द वे women write.
ओके, टू द लाइट हाउस, सन्स एंड लवर्स, वेस्टलैंड, वेस्टलैंड आपका 22 में आया, सो डी का फोर्थ हो जाएगा एंड इसी से आपको आंसर मिल गया। ए का सेकंड हो जाएगा 27, वी हैव बी का फर्स्ट एंड फिनिगन्स वेक एंड द वेस्टलैंड। फिनिगन्स वेक इज बाय जेम्स जॉयस, टू द लाइट हाउस बाय Virginia Woolf. This is by D.H. Lawrence. This is by James Joyce. This is by T.S. Eliot. Okay? Correct. Okay. Rites of Passage, Islands Mask, The Arrivals. Islands Mask आपके ट्रिलॉजी के पार्ट है, सो ए का थर्ड हो जाएगा। ये ब्रैथवाइट के वर्क्स हैं एंड आपके एग्जाम में पूछे गए वर्क्स हैं, ये मैंने पढ़ा भी रखा है। ए का थर्ड और बी का सेकंड, सी का फोर्थ एंड ये अराइव इन 73। ठीक है, क्योंकि ये तीन ट्रिलॉजी के पार्ट हैं। Okay, the Marxist represents Marxism as a scientific account of social change, and the Marxist ideologies believe that culture is a mirror of social life and the artist is an engineer of human soul, educating the working class. Reason तो obviously false है. Insofar as we are taught how to read, what we engage are not text but paradigms. We operate meaning from a text according to what we need or desire. Okay, gender and nation, Greek homosexuality, द ओके, ये कुछ नए वर्क्स हैं, ये देख लो एक बारी, ये नए वर्क्स हैं, ये नए वर्क्स हैं एकदम। सो ए का हो जाएगा फोर्थ, ठीक है, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट एंड डी का द सोल्स ऑफ ब्लैक फोक इज बाय डुबियस। ये एक लौता वर्क था जिससे मैं फेमिलियर थी ऑनेस्टली इस क्वेश्चन में, बट आई गेस डी के थर्ड से ही आंसर आ जाएगा। Jacques Lacan was radically critical of the existing psychoanalytic theory. Lacan was expelled from IPA in 1959. That is true, guys, but it wasn't because उन्होंने radically critical थे वो, उनके कुछ ऑर्थोडॉक्स आइडियाज थे जिस वजह से उनको निकाला गया था। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट, एंड आईपीए एस्टैब्लिश किसने करा था? फ्रॉइड ने करा था। आईपीए एस्टैब्लिश किसने करा? वाज द फाउंडर ऑफ आईपीए, इट वाज फ्रॉइड। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेमिनिस्ट टेक्स्ट? इनका सीक्वेंस आपको बताना है। रूम ऑफ वंस ओन, आई होप यू आर फेमिलियर, 1929 विल ऑब्वियसली कम फर्स्ट। थिंकिंग अबाउट वुमेन बाय एलमिन, ये भी आपका एग्जाम में आया है जून वाले पेपर में। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इन क्वेश्चंस को देख लो, क्योंकि आपके पेपर में रिपीट हो रहे हैं ये सवाल घुमा फिरा के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। सेक्सुअल पॉलिटिक्स बाय मिलेट 70, द फीमेल इमेजिनेशन, ये भी आपके इसी सेशन में रिपीट हुआ वर्क है। एंड अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बाय वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, आई थिंक इट्स बाय बारबरा जॉनसन। मैं चेक कर लूं। इट्स बाय बारबरा जॉनसन गाइस, 1987, 1987। ठीक है, हाँ। Comparative literature is a study of different cultures, nations, and genres, and it explores the inherent relationship. First is true. In the study of literature and culture, the importance of methodology is secondary. Nahi. Methodology is very important. Defactualization is very close to the concept of post-truth. Post-truth relies on absolute lies. First true है, second false है. ये एक point आप याद रख लेना. Okay. यहाँ पे आपके पास है स्टेटमेंट्स एंड आपको मैच करना है विद द पीपल। सो ए का हो जाएगा फेसेस अलोंग द बार्कलिंग टू देयर एवरेज डे इज बाय ऑर्डन। बी इज सेकंड, इलियट, द ऑफुल डेयरिंग ऑफ अ मोमेंट सरेंडर, बेन डबल लाइक ओल्ड बेगर्स अंडर, और विल्फ्रेड ओन एंड बाय इलियट, सॉरी गिन्सबर्ग, गिन्सबर्ग। ठीक है, हाँ हाँ करेक्ट। चलो, in Kannada literature, Vachana movement addressed your progressive values. Yes, progressive values. Who defined hamartia as tragic flaw? किसने डिफाइन किया था? एरिस्टोटल ने किया था।
Following statement is given by which of the following critics? I was indignant. I demanded an explanation. Nothing happened. I burst apart. This is by Franz Fanon, guys. Inane gaudiness is a phrase given by Coleridge. B. ठीक है? रुको, let me. हाँ, it's by Wordsworth in lyrical ballet. It's by Wordsworth in lyrical ballet. My bad, guys. My bad. It's by Wordsworth in his work lyrical ballet. ठीक है? A होगा ये. Uh, Gayutra Bahadur is a D. Hermann Hesse Siddhartha was originally written in German. Brijvi Lal's Rama Banishment deals with the history of Fiji of a time period of 150 years. ये सारे बहुत ही random factual questions हैं. Choose the novel which uses magical realism. It's Midnight Children and 100 Years of Solitude, B, C, and D. Which of the following novels of Irwin Welsh? It is A, B, and D. So, Acid House, Transporting, and Filth. Identify the correct ones among the following. यहाँ पे आपको correct identify करना है. B, dramatic monologue पे ऊपर statements है. C, the poetry of experience by outlines the discussion on monologue. And linguistic paradigmatics make the narcissistic speaker. देखो इसमें ना elimination use करना. Elimination से easily ये वाला question हो जाएगा. Which of these is related exclusively with Derrida? Oh, sorry, Lacan. Real, symbolic, and imaginary. Id and ego are by Freud. Post-colonial critics who use the ideas of Lacan, Foucault, and Derrida while critiquing Eurocentrism. It was A, B, C, D, except for César, who's associated with negritude movement. बाकी सब ने use करा है. Who among the following are correctly matched, correctly paired? It is A, B, and D. ठीक है? ओके. यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है द करेक्ट पेयर्स. मैंने आपको इसलिए बोला था कि ये इस पे क्रोनो क्वेश्चन आया था, उसको अच्छे से याद कर लो. बी, सी, ई आपका करेक्टली मैच्ड है, बाकी आपके इनकरेक्टली मैच्ड है. Which of the following statements are true in the context of Henry Fielding's Tom Jones? Yes. Okay. The correct answer will be A. Tom Jones is a moral, comic and moralistic work. Tom is caught poaching in neighbor's game preserve, and the history of Tom Jones is the complete title of this work. Which of the following statements hold true with respect to Pope's essay on criticism? इसमें बी आपका करेक्ट होगा. सीरीज ऑफ जनरलाइजेशन अबाउट गुड टेस्ट, चैलेंजेस ऑफ इम्पार्शियल जस्ट क्रिटिसिज्म एंड ट्रेट्स ऑफ द गुड क्रिटिक. ये क्वेश्चन आपका एसे ऑन क्रिटिसिज्म का जून वाले पेपर में भी आया है. जून वाला था या पता नहीं कौन सा पेपर था. फॉल्ट ऑफ क्रिटिसिज्म जो आपकी स्टेटमेंट्स थी. कार्निवल टर्म या कार्निवलेस्क्यू कहाँ से आता है? भागतिन ने टर्म दी है ये, और आपका सी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. ओके. पोस्ट कलोनियल क्रिटिसिज्म पे क्वेश्चन है. यहाँ पे ए, बी, डी और ई करेक्ट है. इट एक्ट्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, सो ऑब्वियसली गोज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ पोस्ट कलोनियलिज्म. Which of these books are written by Chaudhary, Niraj C. Chaudhary? The autobiography of an unknown Indian is obviously the answer. तो ये और ये तो any which way eliminate हो जाते. The Continent of Circe is a very famous work by him, and Principal Upanishads is also by him. Sorry, Passage to England is also by him. A Passage to India is by E.M. Forster. ठीक है. Passage to India is by E.M. Forster. Passage to England is by Niraj C. Chaudhary. फिनोमिनोलॉजी के ऊपर ये कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको करेक्ट वाली बतानी है, विच इज ए, बी, सी एंड ई. हेडगेज अप्रोच इज नॉट एट ऑल एसेंशियलिस्ट गाइस. ठीक है, इट्स नॉट एट ऑल एसेंशियलिस्ट. ओके. ओडगेरो नोनुकल इन हर पोम्स वी आर गोइंग, इन हर पोम वी आर गोइंग, उन्होंने बात करी है स्पेसिफिकली लॉस ऑफ द बोरा ग्राउंड. बोरा ग्राउंड वॉज देयर सेक्रेड लैंड. sacred land. It also represents losing their rituals, क्योंकि उनकी जमीन से उनके rituals, उनके culture associated था. The loss of your aboriginal identity and the loss of the primitive culture, जो मैंने आपको बताया. ये बोरा वाला जो theme है, metaphor है, ये याद रखना. What are the points of convergence between Derrida and Barthes? A, B, D और E आपका correct होगा. Both construe that language has retrospective power will be
इनकरेक्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू जेनेट विच आर द फॉलोइंग। अब जेरार्ड जेनेट के बारे में मैंने आपको बताया था। क्या क्वेश्चन हमने करा था जेरार्ड जेनेट का? पैराटेक्स्ट पढ़ा था, एनालेप्सिस प्रोलेप्सिस पढ़ा था, ये एक क्वेश्चन आ जाता है। एक और मैंने आपको बताया था, ABCD आपका है। होमो डाइजेटिक इन्होंने जो है सॉरी इंटर डाइजेटिक इन्होंने नहीं दिया। यस, चलो। Okay, which of the following are true about reader response criticism? A, B, and C are correct. It treats the text as self-sufficient. No, it appreciates the text that are historical. ऐसा कुछ भी नहीं होता reader response में. Okay, which of the following is applicable to new criticism? It is A, B, C. ये हमने अभी पढ़ा ना? हाँ. Okay, representative text of gynocriticism are Suzanne, ACD होगा आपका इसका आंसर। मेयर स्पैक्स का हमने द फीमेल इमेजिनेशन आपके जून के पेपर में आया है। अभी मैंने आपको एक और बारी दिखाया था। सैंड्रा गिलबर्ट एंड योर एलन मोर्स लिटरेरी वुमन विल बी द आंसर। यस यस यस। ओके, एथनोग्राफिक रिसर्च मेथड के ऊपर ये क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज ABCD। ये फैक्ट्स आपको रीड करने होंगे। इट फोकसेस मोर ऑन ऑब्जेक्टिव डेटा देन सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस ऑफ द मटेरियल, ऑब्वियसली गोज अगेंस्ट द होल आइडिया ऑफ रिसर्च। Okay, the concept of eugenics was used by Eugene O'Neill as well as your GB Shaw. Which of the following are correct? ये थोड़ा सा लेसर नोन आपको नाम मिल रहे हैं, A, C और E, क्योंकि ये सारे लेसर नोन है ना। द आइडिया इज गाइस कि सिर्फ इसमें आपके लेसर नोन नहीं आए हैं, जून के पेपर में उससे पहले भी पूछे जाते थे। ये स्टेटमेंट किसकी है? ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ाई भी है आपको। द स्टेटमेंट इज गिवन बाय अ नियो क्लासिकल क्रिटिक, इट इज सैमुअल जॉनसन। ओके, Hudibras of Butler reflects on the revolt against Puritanism. Emblems by Francis Quarles is a commentary on the volume of biblical allusions. Who among the following is the author of Steel Glass? George Gascoigne. Who among the following is a short story Booker Prize winner Gitanjali Shri Belpatra? Women of Palestine and India deal. Okay, this is not an important question. ये स्टेटमेंट किसने दी थी? Could fulfillment ever be felt as deeply as loss was by Desai? Which of the following works has Santiago, Old Man and the Sea? Text coins the slogan Vande Mataram. Anandmat by Anandmat किसका वर्क है? किसका वर्क है आनंदमत? इट इज बाय नॉट एबल टू रिकॉल गाइस। किसका वर्क है आनंदमत? मुझे बताओ। Among the following is associated with intentional fallacy, Wimsatt. He is also associated with effective fallacy. ठीक है। Following set in the backdrop of the religious persecution in Mexico, Power and Glory. Who among the following term coined the term the movement? ये भी मैंने अभी आपको कल परसों ही पढ़ाया, J.D. Scott. Dave Vidham Swami's Tufan is an adaptation of Shakespeare's play Tempest. Uttarmacharita by Bhavabhuti is based on Valmiki's Ramayana. ये आपका है क्वेश्चन जहाँ पे आपको मैच करना है। राज लक्ष्मी देवी का नाम आप पहली बार नहीं देख रहे हो। ए का हो जाएगा फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी कमला मरकंडिया नेक्टर इन अ सीव एंड द हिंदू वाइफ। ठीक है, ये पहले भी आया था, ये पहले भी आया था। बंकिम चंद्र चैटर्जी का वर्क है आनंदमन। करेक्ट। दिस इज अच्छा, यहाँ पे रिप वैन विंकल है आपका। रिप वैन विंकल इज बाय अर्विंग। ये हमारे एनसीईआरटी में भी प्रिस्क्राइब्ड वर्क है, ये याद रखो। ठीक है। ओके, ब्रिकोलेज ये हमने पढ़ा था, ये भी आपके पीवाईक्यू में आज के ही सेशन में हमने देखा था। हेडगेयर से एसोसिएट होगा, ये स्ट्राउस से होगा। पैराप्रेक्सिस की बात फ्रॉइड ने करी है। पॉलिफनी इज बाय भागटिन। पैराप्रेक्सिस क्या होते हैं? पैराप्रेक्सिस होते हैं आपके, ये मैं बता दूं, फ्रॉइडियन स्लिप्स भी कहते हैं हम इन्हें। ठीक है, फ्रॉइडियन स्लिप्स भी कहते हैं हम इन्हें। रिप्रेशन की बात भी इन्होंने ही करी है। ओके, ये आपका लेसर नोन नेम्स हैं, एक बारी आप देख लो। हैमलेट, अच्छा ये स्टेटमेंट्स कहाँ कहाँ से ली गई हैं?
ए का हो जाएगा थर्ड बाय मैकबेथ, बी इज बाय हैमलेट, टाइम आउट ऑफ जॉइंट, बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज बाय हेनरी द फोर्थ, माई किंगडम फॉर अ हॉर्स इज बाय रिचर्ड द थर्ड। भारती मुखर्जी, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपसे। भारती मुखर्जी नॉवल डिस्प्ले, मैंने आपको बताया था डायस्पोरिक थीम्स है इनके वर्क्स में, करेक्ट। रोहिंटन मिस्त्री पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये भी मैंने बताया, आज के ही सेशन में बताया। एंड सुजाता भट्ट रिकॉल्स होम एज अ नॉस्टैल्जिक मेमोरी, ओके। ये तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हो गए। When did T.V. Macaulay present his minutes on education? It was 1835, 2nd February. ये भी मैंने अभी recent session में कराया था. Sir David Lindsay's satire of the three states is both political and religious. Derek Walcott in the poem The Sea is Tree makes a parallel between evolution of Christianity and slavery. Who first translated? It was Wilkins, जिन्होंने भगवद गीता को translate किया था. डायरी राइटिंग से पेप्स यहाँ पे एसोसिएटेड हैं। ए बी एंड डी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है करेक्टली मैच्ड पेयर्स, तो ए बी एंड डी आर करेक्ट। ये भी अगेन लेसर नोन नेम्स है, ब्रैडबरी एंड गोल्डिंग को छोड़कर, ठीक है। ये आपका इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मैच करने हैं कैरेक्टर्स। तो डॉल कॉमन हो जाएगा, एल्केमिस्ट मैलवोलियो आपका ट्वेल्थ नाइट, मॉर्टिमर आपका एडवर्ड द सेकंड, बसोला डचेस ऑफ माल्फी, ठीक है। ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शंस। कार्गोस, हो गया मैम अभी। गाइस एम आई विजिबल, एम आई ऑडिबल? माइक ऑन है? हाँ, okay, okay, I am. All right. Chalo, I'll end the session here. I'll end the session here. So this was all. I'll be sharing the PDF with you. Don't worry. मैं अभी बिना बिना ऑफिस से निकले शेयर करे बिना नहीं निकलूंगी. I'll share the file, then I'll leave the office. And before I end the session, I just want to say one thing. A, you people were here till the very end. I'm proud of you. B, you people will be doing amazing tomorrow, so stop worrying about it. Have your dinner and please give some rest to your to to all your senses. आप लोग भी बहुत देर से यहाँ बैठे हो, बहुत देर से पढ़ रहे हो, आपने पूरी 8 साइकिल्स मेरे साथ रिवाइज कर ली हैं। ट्रस्ट मी गाइस, इसमें से कुछ तो याद रह जाएगा ना, और इसमें से कुछ तो एग्जाम में आ ही जाएगा, और वो हमारी डेफिनेटली हेल्प कर जाएगा। सो टेंशन मत लेना, प्लीज बिना टेंशन के सोना, टेक प्रॉपर स्लीप बिफोर योर एग्जाम। प्लीज स्लीप डिप्राइव होके मत जाना, अभी अपने नोट्स को मत खोलना। जितना हम पढ़ सकते थे हमने पढ़ लिया है, अब इसके बाद कुछ मत देखो, फ्रेश माइंड से कल जाना, ब्रेकफास्ट करके जाना, क्योंकि थोड़ी एनर्जी होनी चाहिए। यू शुडंट गेट स्लीपी इन योर एग्जामिनेशन, डोंट ईट टू मच बट एटलीस्ट हैव समथिंग, कुछ खा के जाना, ठीक है। And those who people are traveling right now, I hope you people will have a safe journey. You'll reach to your center on time, and please don't worry. आपने जो भी मेहनत करी है आपको उसके रिटर्न्स मिलेंगे, किसी की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, किसी ना किसी तरीके में आपको आपकी मेहनत का फल मिलता है। So stop worrying, and I am right here for you people, and I'll meet some of you tomorrow at the center after the exam. एंड मेरे लिए भी टेस्ट है, ओके। आपसे आपके जितना मैं भी बहुत कंसर्न्ड हूँ इसके लिए, क्योंकि मेरे लिए भी टेस्ट है। तो चलो, ओके। सो दिस वाज ऑल, एंड थैंक यू सो मच। आई विल सी यू पीपल टुमारो। एंड फॉर द पीपल हु वर आस्किंग अबाउट माय जून बैच, ये नीचे दिए गए बैनर में एक नंबर है, वहां कॉल कर लेना, इंक्वायर कर लेना, वहां पे आपको सारी इन्फो मिल जाएगी। रेस्ट इस सेशन की पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, अगर आपको देखनी हो, ठीक है। क्योंकि टेलीग्राम पे सब लोग नहीं जुड़े हुए मेरे हिसाब से, कुछ लोग होंगे जो आज नए आए होंगे सेशन में। सो वेट, आई टेल यू। ओके, सो ये रहा हमारा सेशन, इस पे आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन पे। इसमें आपको मिल जाएगा, ये रहा आपका
फ्री पीडीएफ ज्वाइन नाउ दक्षता मैम टेलीग्राम, इस पे क्लिक करोगे ना, यू विल बी डायरेक्टेड टू माय टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी इस सेशन की, दो पूरी 8 साइकिल्स के सारे क्वेश्चंस अलोंग विद डिटेल्ड सोल्यूशन। एंड ये स्पेशल ऑफर क्लिक है, यहाँ पे क्लिक करोगे आपको मेरा बैच मिल जाएगा, जून वाला जो मेरा बैच है, कमिंग बैच। एंड इसको अवेल करने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा, DAKSHITA, which is my name, and this particular code will help you get the maximum possible discount which you can possibly get. Okay, तो ये कोड यूज करना मत भूलना to buy my batch if you're planning to buy it. रेस्ट आई होप आप लोगों को जरूरत ही ना पड़े नेक्स्ट बैच की, एंड आप इसी साइकिल में क्वालिफाई करके मुझे बताने आओ कि मैम मेरा एग्जाम तो बहुत ही क्रेजी गया। ठीक है, चलो, सो दिस वाज ऑल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट, आई विल सी यू पीपल टुमारो। कल मुझे जरूर बताना एग्जाम कैसा गया, कल एनालिसिस में मिलते हैं, और एनालिसिस कहाँ होगा वो भी मैं दिखा देती हूँ। एनालिसिस का सेशन लगा हुआ है हमारे चैनल पे, एक बारी मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये हम गए लाइव पे, कल एनालिसिस है हमारा। ओके, ये एनालिसिस वाला सेशन में आई वुड नीड यू पीपल, और ये स्पेशली उनके लिए भी है जो आगे की साइकिल प्लान कर रहे हैं अपने लिए, क्योंकि एनालिसिस से आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि क्या एग्जैक्टली पेपर में आया और आपको किस हिसाब से आगे बढ़ना है अपने एग्जाम के लिए। रुको, थोड़ा सा नीचे है, ये रहा। ठीक है, ये 1:30 पे स्केड्यूल्ड है ये सेशन, इसमें हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे इस पेपर की जो कल हमारा होगा in the morning shift. Chalo, thank you so much, guys. I will see you people tomorrow. Chalo, all the best, all the best, all the best, all the best. Okay, I am praying for you. Okay, चलो मैं एंड करती हूँ सेशन।